viewers and welcome to the day 2 of this prestigious cricket tournament. BG Trophy 2026 proudly organized by the first match of the day 2 of this prestigious cricket tournament now going to play between the Indian cricket team versus Shakthinagara and because of that I request all the players from these two teams
Right, the first match of the day two of this prestigious cricket tournament is now going to start between NFC Thokur versus Swastik Shakthinagara, and NFC Thokur, after won the toss, they elected to field first, and because of that, the openers are now comes out to the middle. So good morning viewers, and welcome to the prestigious cricket tournament VV Trophy 2026, which is proudly organized by Veera Venkatesh cricketers in the sweet memory of Sri Padmanabha Shane. And the first match of the second day of this prestigious cricket tournament is now going to start. The openers comes out to the middle, Neetu and Manju, and the bowler starts the fresh proceedings from that side, and the first ball of the day is now coming up. It's already 9:35 in the morning. Huh. And umpire has signaled to start off the match, and first ball of the match. In fact, it's the first ball of the day is now coming up. The bowler bowls पहली गेंद. इस बार धीमी गेंद थी इस वक्त. गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, लेकिन गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए बल्लेबाज नीतू, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. गुरुराज जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके, बेहतर गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत वो कर चुके हैं. अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद एक बार फिर से चूके, गेंद को उछालने का प्रयास किया था और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में. दो बेहतर गेंद गुरुराज इस ओवर में फेंक चुके हैं. सुबह के 9:36 बज चुके. ऑलरेडी 9:36 इन द मॉर्निंग, और पहला मैच इस वक्त शुरू हो चुका है आज का. और गेंदबाज गुरुराज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया. इस बार गेंद जस्ट ओवर द फील्डर्स हेड एट मिड ऑन. जो फील्डर इस वक्त गेंद तक पहुंचना चाहता, लेकिन गेंद अपने ऊपर की ओर छलांग लगाने के बावजूद गेंद को लपक नहीं पाया. गेंद उनके पहुंच से बाहर रहा. जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, वाइड स्लॉन्ग ऑन पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ गुरुराज की गेंद पर 2 रन नीतू ले चुके. उनका खाता खुल चुका, रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है. इस पिच दिस टाइम इज लॉफ्टेड दैट वन. दिस हैज गॉन मेनी माइल्स ऑन द रोड, एंड अ फैंटास्टिक स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ नीतू. और निश्चित रूप से ये जो स्ट्रोक था काबिल तारीफ, और बल्लेबाज के पास काफी वक्त था गेंद को उछालने का. वाइड स्लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ जो नीतू ने इस वक्त झड़ा है, स्कोर बनकर पहुंच चुका 8 रनों पर 8 on the board. ये to lose any wicket in the over number first in progress. इस बार गेंद को उछालना चाहता, धीमी गेंद एक बार फिर से गेंदबाज गुरुराज द्वारा, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. और एक बार फिर से नीतू सामना करते हुए गुरुराज की गेंदों का. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त. खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद. जस्ट अ सिंगल गॉट. इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट. थ्रो पहुंच चुका है, और दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं. स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है. अब 9 रनों पर 9 ऑन द बोर्ड. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, नीतू कीप्स द स्ट्राइक. और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्वस्तिक शक्तिनगर इस वक्त 9 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के. 9 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर. द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दैट साइड, एंड और नीतू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जो कि 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत. और इस बीच गेंदबाज आदर्श ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार नीतू के लिए. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद बेहतर गेंद थी. अंतिम क्षण में गेंद को ज़्यादा उछाल लेती हुई गेंद को उछालने के प्रयास में चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 9 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर. आदर्श फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार नीतू के लिए.
इस बार रन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, अपील जरूर, मंजुनाथ के लिए खतरा पैदा हो सकता था अगर ठीक तरह से गेंद को गैदर करते विकेट कीपर रहा, लेकिन विकेट उखाड़े थे विकेट कीपर ने गेंद से नहीं बल्कि अपने हाथ से, और इस बीच बल्लेबाज मंजुनाथ बाल बाल बचते हुए इस गेंद पर, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। पहली बार मंजुनाथ इस मैच में सामना करने के लिए तैयार रहा। आदर्श इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार मंजुनाथ के लिए। यह गेंद उछाला लंगन पर 6 रनों के लिए, गेंद एक बार फिर से रास्ते पर जा गिरी है। ऑफ द टॉस गेंद को उछाला था मंजुनाथ, और क्षमता मंजुनाथ की ऐसी है कि एक बार अपना सही रिदम लय प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी भारी पड़ने की क्षमता वो रखते हैं, और यहाँ पर गेंद को खड़े खड़े ही उछाल दिया लंबन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर, 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज गेंद के लिए तलाश इस वक्त जारी है, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद को तलाशने के बाद इस वक्त लौटाया जा रहा है गेंदबाज के हाथों में। स्कोर 16 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर, लगभग 33 से 34 डिग्री सेल्सियस मंगलोर का तापमान आज का दाखिल हो चुका है। कल रात को वर्षा होने की बदौलत इस वक्त आज गर्मी की तीव्रता कुछ ज़्यादा मैदान पर, और इस बीच ऑन साइड पर गेंद को मोड़ गेंद जाते हुए मिड विकेट पर, जब तक गेंद को अपर फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन एडेड टू द टोटल, and with that single run the scoreboard moving up to 17 without loss in the over number 2 in progress। और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एक बेहतर प्रगति करता हुआ स्वस्तिक शक्तिनगर। दूसरा ओवर उनकी पारी के इस वक्त प्रगति पर, और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। आदर्श गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद टॉप एज, दिस टाइम दिस कुड बी अ चांस एट मिड ऑफ एरिया एंड द फील्डर टुक द कैच सक्सेसफुली। द मैन डिसमिस्ड इज नीतू। गेंद को उछालना चाहता है, इनफील्ड क्लियर करना चाहता है, लेकिन इस बार टॉप एज पर गेंद टकराई, और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे आखिरकार एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका, तो पहला विकेट गिर चुका है। नीतू छोटी मगर बेहतर पारी खेलने के बाद 10 रनों की पेविलियन वापस लौटते हुए, और पहला विकेट गिर चुका है 17 रनों के ऊपर स्वस्तिक शक्तिनगर का। It's 17 for 1। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और आदर्श गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद को नोट करके दर्पण प्रॉपरली गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 18 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। 2 ओवर के समाप्ति 18 रन बन चुके हैं स्वस्तिक का शक्तिनगर 1 विकेट के नुकसान पर, और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर प्रगति करता हुआ। हालांकि पिछले ओवर की 5वीं गेंद पर बल्लेबाज नीतू का विकेट जरूर गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ 18 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो तीसरा ओवर इस वक्त उनकी पारी में शुरू होता हुआ। 3rd ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए जबकि सामना करने के लिए तैयार शैलेश है, जो कि पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर अपना खाता खोल चुके हैं। 1 रन के साथ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तीसरा ओवर राउंड की पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज
गुरुराज अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। शैलेश जो कि सामना करते हुए ओवर की पहली गेंद। Reverse shot, fantastically struck, finds the gap as well. A long chase for the fielder, but I think he won't get that one. And it's gone over the fence for about a fantastically reverse swept by the batsman शैलेश। और इस बार गैप बिल्कुल सही तरीके से चुनते हुए गली फील्डर की बाईं ओर से गेंद को निकालने में सफल और काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में असफल। फील्डर और गेंद आसानी के साथ डिप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 on the board. Reverse shot गेंद को खेलना चाह, not corrected that one properly from the middle of the bat. In fact, he's got a single in the face of by, no contact between the bat and the ball. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। It's 23 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress और गेंदबाज गुरुराज अगली गेंद लेकर तैयार। Ball him, just getting his inside edge and onto the stumps at the last moment. Manjunath the man departs. लगभग जमीन के सहारे गेंद आए थे, गेंद को उछालना चाहता चूंकि शायद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद सीधे लेग स्टंप को उखाड़ कर ले गई गेंद और ये विकेट यहां पर गिर चुका है। मंजुनाथ dismissed for 7 of 3 deliveries he scored including 1 6 and a second wicket loss for Shakthinagara. The score is 22 for the loss of 1 wicket, 23 for the loss of 2 wickets. मसूद द न्यू बैट्समैन कम्स आउट टू द मिडल और गेंदबाज इस वक्त तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, बेहतर गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। बेहतर गेंद थी गेंदबाज गुरुराज की और स्कोर इस वक्त हो चुका है 23 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और अगली गेंद ये गेंद स्वीप कर दिया इस वक्त। गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा, 1 रन एडेड टू द टोटल and with a single run the scoreboard moving up to 24 on the board for losing 2 wickets in the over number 3 in progress. Ugly गेंद गुरुराज, this time driven that one down to a mid wicket, finds the gap as well. It might be considered of just inside the fence और बल्लेबाज 2 रन पर पूर्ण करने में सफल। स्ट्रोक इस वक्त खेला था मिड विकेट पर और थोड़ा सा दौड़ जरूर लगानी पड़ी इस वक्त फील्डर को, लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल। 2 रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 26 for 2, 3 overs completed. गुरु इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और चौथा ओवर इस बार गेंद को उछाला और लंगोन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। मसूद के बल्ले से ये छक्का लग चुका है और इस वक्त इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतर प्रगति करता हुआ और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त मसूद के बल्ले से लगता हुआ लंगोन सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए और गुरु इस बीच तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर और देखना है कि छक्का प्रदान करने के बाद किस तरह कमबैक करते हैं गेंदबाज गुरु अपने आने वाले गेंदों में। दाहिने हाथों पर द विकेट लेग स्पिन गेंद, इस बार गेंद को खेला कवर पॉइंट की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद लेकर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। ऑफ कटर, दिस टाइम he lofted that one, 2 square out for a maximum. One more 6 added into the account of the batsman. This is a fantastic strike, just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over long on deep mid wicket fence for a maximum. बेहतर स्ट्रोक लगता हुआ शैलेश के बल्ले से और स्कोर छलांग लगाकर इस वक्त पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 for the loss of 2 wickets in the over number 4 in progress.
और अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर से उछालना चाहा लेकिन इस बार गेंद निकल चुकी है फाइन। थर्ड मैन की दिशा में गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे के लिए दौड़ पर रनों का खतरा, लेकिन यहाँ पर थ्रो रिसीव करने में असफल। विकेट कीपर और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, काफी जोखिम भरा दूसरा रन था, लेकिन विकेट कीपर ठीक तरह से थ्रो को गैदर नहीं कर पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। Couple of runs added to the total 41 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Leg spin गेंदबाजी, गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, स्वीप करना चाहता चूंकि, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 41 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 4 overs completed and after 4 overs still I must say स्वस्तिक Shakthinagara looking in a good situation. It's 41 for 2 after completion of 4 overs. ज्ञानेश गेंदबाजी शुरू करते हुए 5वां ओवर प्रारंभ होता हुआ और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त मसूद, और ओवर की पहली गेंद लेकर ज्ञानेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची और 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का, और 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे वाइड के रूप में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर इन 2 रनों के साथ पहुंच चुका है 43 रनों पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को। ज्ञानेश फुल टॉस, जस्ट कॉन्फर्म, बिग वन नॉट सक्सीडेड, लो फुल टॉस डिलीवरी, और इस बीच गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूंकि बाई के रूप में 1 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। एक बेहतरीन साझेदारी इस वक्त जमती हुई शैलेश और मसूद के बीच, और स्कोर इस वक्त है 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ज्ञानेश दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार, धीमी गेंद, धीमी लेग कटर गेंद थी इस वक्त, गेंद को ऑन साइड पर उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 44 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगली गेंद लेकर गेंदबाज रिवर्स शॉट, फैंटास्टिकली स्ट्रक एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल। This is a magnificently struck with a reverse shot by the batsman मसूद, और गैप इस वक्त बिल्कुल सही चुनते हुए डीप कवर पॉइंट और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन के दरमियान गेंद को निकालने में सफल चौके के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर। 5वां ओवर उनकी पारी का प्रगति पर, और गेंदबाज ज्ञानेश अगली गेंद लेकर तैयार, धीमी गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त, लेकिन फील्डर मौजूद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, and with that single run the scoreboard moving up to 49 for the loss of both openers in the over number 5 in progress. एक बेहतर प्रगति करता हुआ स्वस्तिक का शक्तिनगर, और इस बीच ज्ञानेश अपने ओवर के 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, just caught for my team, not succeeded, single they got, and with that single the 50 comes up. 50 comes up for Swastik Shakthinagara in the over number 5 in progress. 4.5 overs of their innings is now completed, और गेंदबाज इस वक्त अपने ओवर के अंतिम गेंद लेकर तैयार। ज्ञानेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार लेग स्टंप पर आते विकेट डॉट गेंद, ओवर के समाप्ति 5 overs completed. After completion of 5 overs, still I must say Swastik Shakthinagara looking in a good situation. It's 50 for the loss of 2 wickets. Now just last over remaining in the innings, and just talking about the next match, Victory 11 Mugrodi will take over NFC Pakka Ladka in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to pick a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕ್ಟರಿ 11 ಮುಗ್ರೋಡಿ ಹಾಗೂ NFC ಪಕ್ಕ ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो
तो गेंदबाज आदर्श अपना दूसरा ओवर शुरू करते हुए सामना करते हुए शैलेश अंतिम ओवर शुरू होता हुआ स्वस्तिक शक्तिनगर की पारी में पहली गेंद फर्स्ट बॉल और साथ ही ऑफ स्टंप विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, बल्ले का बाहरी किनारा टकराया था और गेंद घुमाव लेती हुई स्पिन होती हुई विकेट कीपर को बीट कर गए शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर। जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 51 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 51 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स और गेंदबाज आदर्श गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए love that this time I think it could be taken or not, just we have to wait and see, and he dropped that one at the last moment. That was an easiest chance which was gone in vain. अंतिम क्षण में गेंद को लपक ही लिए थे कि गेंद अंतिम क्षण में उनके हाथों से छिटकते हुए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और जीवदान के साथ 2 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज 53 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 53 for the loss of 2 wicket. Fantastic third wicket partnership is now building up here between Shailesh and Masood. Or Adarsh lofted, not corrected that one properly, straight into the hands of cover point fielder. And that is the end of a fine innings from the batsman. Masood is now back into pavilion after being scoring 15 runs into his credit, including 1, 6 and 4. Has scored 15 runs and good innings came to an end from him. Third wicket gone for Swastik Shakthinagara. Now they are 53 for 3. Masood departs. Mitesh is the number 5 batsman. He now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करते हुए आदर्श की गेंदों का और आदर्श गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 3 गेंदें बाकी अब स्वस्तिक शक्तिनगर की पारी में और आदर्श इस वक्त फील्डिंग का मुआयना करते हैं। विकेट कीपर फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और बल्लेबाज मितेश लेफ्टी बल्लेबाज बाएं हाथ के बैटर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के गेंदबाज आदर्श की गेंदों का। आदर्श ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बार रन आउट होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर मितेश आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है। 53 for 4 मितेश डिपार्ट्स। 2 balls remaining in the overall calculation in their innings. So 2 balls left and the bowler brought continuing the bowling procedure. आदर्श नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है योगेश और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और सही गेंद घोषित। गेंद कुछ ज़्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और गेंद स्कोर इस वक्त हो चुका है 53 रनों पर। बेहतरीन ओवर साबित हो चुका है आदर्श का जिसमें सिर्फ 3 रन अब तक वो इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं पहले 5 गेंदों में। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज आदर्श तैयार। ये गेंद चूके फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम आदर्श। जस्ट 3 runs he conceded in the last over and also a fantastic spell came student from him and others bowled very well and the innings is up for Swastik Shaktinagar. They are stipulated 6 overs completed. They managed to score 53 runs for losing 5 wickets after the completion of 6 overs and now the target for NFC Tokur is 54. They have to score. Welcome back made by the bowlers of NFC Tokur in the last 2 overs. Because of that, they restricted the batsmen of Swastik Shaktinagar for 53 runs. 54 the target for them in 6 overs. They have to score with a required run rate of 9 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not. और एनएफसी तोकूर की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज पहली बार मेरे काबिल दोस्त श्रीमान जेपी जयप्रकाश के साथ अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ अंग्रेजी में एनएफसी तोकूर की पारी की शुरुआत
begitu thank you धन्यवाद Thank you, Mr. Gopi. The start of the second innings. Start of the second innings, and a wicket has fallen of the very first delivery of Vinith. He's managed to get the wicket of Guru with a golden duck. The very first delivery he has faced from Vinith. The leg stump has gone for a walk. Magnificent delivery there. The wicket number one falls. They are chasing a huge total here. 54 to get of 36 deliveries. Right from the beginning, they have to get a run rate of around 9 runs per over. In the process, they have lost an important wicket of Guru. And the next batsman is the jersey number 14, Arvind, who has made his walk out to the middle to join Manju. They have to get some partnership going on. Can't afford to lose many wickets inside the power play. They have to make use of the power play restrictions. Get at least around 20 to 25 in the first 2 overs. This time goes for a wild swing. Chance of a run out. The throw was not good enough to get that man. It's a bye signal by the umpire. So first runs on the board in the form of extra. Manju on strike. Third time in the over. This time reverse swap down the corner, but equivalently well fielded. A little bit of misfield allows the batsman to take that single. The ball was struck straight into the hands of the fielder there, but unfortunately Mitesh couldn't hold on to that one. Results in a single. This time down the leg side. Have to wait for the signal. It's a wide call by the umpires. First extras in the form of wide in the innings of NFC Tokur. Comes and balls. So this time up easily played. Chance of a catch. Yes, that's the second wicket down in the very first over. It's Arvind who is back into the pavilion without troubling the scorers. You can see that he tried to go over the top of the cover fielder, unfortunately getting the leading edge of the bat. Ball straight into the hands of the fielder there, taking that opportunity to take the catch and dismissing Arvind back to the pavilion.
So the second wicket falls very quickly for NFC Tokur at the score of 3 on the board. The new batsman who is making his walk out to the middle is jersey number 1, Adarsh. Will take strike and he'll be facing Vinith, who is looking dangerous with the ball in his hand. Balls driven back, straight back to the bowler. I think is caught and bowled. Yes, he was just waiting for the confirmation from the umpire. And umpire raises his finger and sends Adarsh also back to the pavilion. So very good reflex catch there from Vinith. It's not easy for the bowler to take that catch, which is firmly struck, which comes in his direction. And on that occasion, Adarsh, Vinith taking that catch neatly of Adarsh. The third wicket falls at the score of 3 on the board. This is not the start what the captain of NFC Tokur would want his side to have. Rashid. Desperately needs some partnership here to at least get closer to that victory margin. A good delivery, beautifully bowled this time. A pacey delivery outside, just outside the off stump, completely beating the batsman. That's the completion of the over number 1. After the completion of the first over, the score is on 3 for the loss of 3 wickets. All the batsmen are out for a duck. You can see the first wicket fall was of Guru, who faced just 1 delivery. The second one was of Arvind, who faced 2 deliveries, and the third one was of Adarsh, who faced just a single delivery. The bowler to bowl is Mitesh. Good delivery, cleaned him up. What a delivery that one! So Mitesh has struck with the first delivery of his over. And that is Guru who is, Manju who is making his walk back to the pavilion. They are having a shaky start here. 4 wickets down at the score of just 3 on the board. Everything going in favor of Swastik Shakthinagara here. Lost 4 wickets in quick successions. And Guru Raj would have thought that this man will be walking out to the middle so early, with just 1.1 over been completed so far. The score on the board is just 3. This time, Apisi play, chance of a catch, 1 more wicket. I think it's been dropped by the fielder there. That would have been easily at the 5th wicket. Just a single more to the total. Guru Raj is off the mark in a shaky style. And what can one say about Mitesh? He was man of the series in the just concluded KPL, Khadri Premier League, last week. And he's continuing the same in this ground as well, in this tournament as well. This time on to the pads, so we have to wait for the signal. He's gone, he's gone. And the umpire has raised his finger, and that's the end of Rashid as well. So wicket number 5 falling. The total disaster here for NFC Tokur. They are 4 for the loss of 5 wickets. One more new batsman walking out to the middle. It's Mithun. And Mitesh also among the wickets. 2 wickets already of 4 deliveries. Comes and balls this time to Mithun. Mithun handsomely struck right from the middle of the bat. Manjunath, the fielder there, before he collects the ball, the batsman can complete only a single. 1 more run added to the total. The score moves up to 5. 2 batsmen out there in the middle are Guru Raj as well as Mithun. 2 new batsmen, both facing a single delivery each.
Pramlar, once again, it's plumb in front of the wicket. One more wicket falls. The sixth wicket to fall. And it's Gururaj who has been dismissed. Found plumb in front of the wicket. Wickets trembling here for NFC Tokur. So both the bowlers who have been used have 3 wickets each against their name. Vinith as well as Mitesh. They have uprooted all the wickets. Ganesh is the new batsman who is on the non-strikers end. And the bowler to continue the proceedings is Manish. Starts with the dotted delivery. Coming from the far end, the change of ends today. In this match, this time it's been lofted high up in the air. A fielder coming underneath it and takes the catch neatly. One more wicket falls. None of the batsmen are able to stick out there in the middle and play a big innings for their team. They are losing wickets one after the other. So Manish is also among the wickets, picking up the wicket of the very second delivery he has bowled. They are already 7 down for just 5 on the board. Not at all a good going for NFC Tokur. The batsman is Nawaz. Manish this time balls to Nawaz, just outside the off stump, completely beating the batsman, going for a wild swing. Every batsman, now, as I said earlier, none of them are trying to take singles or play some ground shots. Everyone going for the big ones as the situation demands, because they are chasing a target of 54 runs, but no one is able to clear the ropes. They are finding the fielders each and every time they go up in the air, and a couple of runs added here to the total from Nawaz. The score moving up to 7 on the board. Final 2 deliveries remaining in the third over. Manish this time balls once again upishly played. The square of the wicket just for a single. The only batsman to get that high score so far is Nawaz, batting on 3. And Ganesh is on strike for the first time. Goes for the reverse shot. Same completely beating, gathered by the keeper behind the stumps. That's the completion of the over. Over number 3 comes to an end after the completion of 3 overs. The score on the board is 8 for the loss of 7 wickets. So Mitesh as well as Vinith picking up 3 wickets each, whereas Manish picking up 1 wicket, and it's Ritesh who is being brought into the attack. Oh, it's a beautiful delivery. Left it alone, thinking that the ball would have gone, would be called a wide, but the ball was within the crease. Wide crease there. Good delivery, beautifully bowled. Pacey delivery this time compared to the previous one. So next match will be played between Victory 11 Mugrodi as well as NFC Pakkaladka. So I think one more chance appeal there. They're waiting for
The decision confirmation from the umpire. Two umpires are having a consultation, and it's the first referral of the day towards the third umpire for caught behind. Play has a little break there. Nawaz claiming that he had the ball had hit his shoulder. So umpire having a look, the third umpire, to take the decision. The decision from the umpire is that the batsman is out. It got that outside edge, the ball taking the outside edge and taking the shoulders on the way and popping high up in the air. So one more wicket falls. It's Nawaz who has been dismissed after scoring 3 runs. Shailesh behind the stumps taking that catch neatly, and Ritesh also among the wickets. So number 8 goes down. The score is on 8 for the loss of 8 wickets in the over number 4 in progress. The new batsman is Mahendra. This time outside the off stump. It's a wide call by the umpire. The line belongs to the umpires. So the second wide of this innings. Ritesh this time balls down the leg side. Might be a wide. Yes, it is. Rightly called by umpire Mr. Pushparaj. Back-to-back wides here. The score moves up to double figures. 10 on the board for the loss of 8 wickets. Once again, I request the captains of Victory 11 Mugrodi, as well as the captain of NFC Pakkaladka, to please report to the commentators and give away their official signature in the register which has been kept on the stage. This time drives the ball, handsome looking shot towards the gully region. The ball has been cut off the back foot from Mahendra just for a single. So he's off the mark. The score moves up to 11 for the loss of 8 wickets. Final delivery coming up of the over number 4. Ritesh, so far a good over. What a delivery to finish off the over. Slow leg cutter delivery, and that's the completion of the over. A dot ball resulting. Jnanish yet to get off the mark. So after the completion of 4 overs, the scoreboard showing 11 for the loss of 8 wickets. None of the batsmen have made an impression in this particular innings for NFC Tokur. Bowler into the attack is Mitesh to bowl the quota of his over, and the 5th for his side from the far end. It comes in balls. This time loft in the air. The fielder coming underneath it and takes the catch neatly. One more wicket falls. The 9th one down. Mahendra is the man who has been dismissed. Caught by Yogi off the bowling of Mitesh. So Mitesh has 4 wickets into his account. NFC Thokur have lost their 9th wicket at the score of 11 on the board, and the final man standing now, it's Suresh. Good delivery, beautifully balled, but completely beating the batsman as well as the keeper. Leg by signal by the umpire. One more run added to the total in the form of extra this time. Suresh.
Ganesh struck very hard. One bounce into the fence for 4. This was really the first confidence stroke from the batter of NFC Thokur, as said by my co-commentator as well as my friend Mr. Gopi, was just sitting besides to me and watching this match. Cleaned him up this time, and that's the end of the innings. So Ganesh is gone. The last man to be dismissed is Ganesh. They have bundled up the opponents, NFC Thokur, for just 16 4.4 overs. So what bowling performance along the side of batting which was performed by Kailesh as well as Masood. Kailesh scoring 14, Masood scoring 15 and setting a target of 54 and bundling up the opponents for just 16 on the board. Still 8 overs remaining. As well as Victory 11 Mugrori. I request both the team captains as well as the players to sign off in the official register and get ready for the match as soon as possible. We'll be back with the live actions of that match within a short while from now. Thank you.
ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಕರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
धन्यवाद जयप्रकाश। तो जहां तक सवाल है मैच नंबर 2, द मैच नंबर 2 ऑफ दिस prestigious cricket tournament, VV Trophy 2026, which proudly organized by Veera Venkatesh cricketers, Shakthinagara, 23rd year anniversary in the sweet memory of our late Sri Padmanabha Shanai. This prestigious tournament, the second match of the day 2 of this prestigious cricket tournament, is now going to start between NFC Pakkaladka versus Victory 11 Mugrodi, and new CCR from the center. That the captain of NFC Pakkaladka, after won the toss, he elected to field first. And because of that, their fielders are now spreading out on the field. Openers are comes out to the middle. Are Azhar and Tawfiq. Meantime, the bowler starts a fresh proceedings is Safwan. And we are just waiting for the first ball of the match number 2 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, VV Trophy 2026. The first ball, Safwan the bowler, Azhar the striker. And the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त यार पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए, जहां तक सवाल है सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी भी इसके दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद बेहतर गेंद है, इस बार समसम पर गेंद टकरा चुकी है और पहली गेंद पर यह विकेट यहां पर गिर चुका है अजहर का। गेंद को ड्राइव करना चाहा था, गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ थी और गेंद बल्ले और पैर को वंचित करती हुई सीधे लेग स्टंप पर जा टकराए। पहली गेंद पर यह विकेट गिर चुका है यहाँ पर विक्ट्री 11 मुगलोडी का, और पहली गेंद पर सफान यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। Azhar the man departs, it's not for one, and Safwan got the breakthrough. It's not for one for Victory 11 Mugrodi. So new batsman, number 3 batsman is now coming out to the middle. और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर सफवान इस वक्त तैयार। नए बल्लेबाज जुनैद का आगमन यहाँ पर हो चुका है, एक बेहतर खिलाड़ी जुनैद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। विक्ट्री 11 मुगलोडी का 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर जुनैद एक बार फिर से सामना करते हुए सफवान की गेंदों का, और सफवान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप पर आते हुए क्विकर गेंद इस वक्त, गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर सफवान फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार रही। ये गेंद इस बार जुनैद का स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाते, गेंद के पीछे फील्डर आते हुए, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। बेहतर कैच इस वक्त मिड ऑफ के फील्डर लपकते हुए अपने पीछे की ओर दौड़कर गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को बेहतरीन तरीके से लपक लिया, और इसी के साथ ये विकेट जुनैद का यहाँ पर गिर चुका है। सेकंड विकेट गॉन, and Victory 11 Mugrod, I must say they are looking in trouble now. It's 1 for 2. तो नंबर 4 बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। गेंदबाज सफवान की गेंदों का नंबर 4 बल्लेबाज नंबर 4 की जर्सी पहने हुए इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और सफवान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार।
ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और स्टंप्स को कुछ हद तक कवर करते हुए ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ, खाली क्षेत्र चुनते हुए बल्लेबाज नए बल्लेबाज राहुल ने, और 4 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त राहुल के बल्ले से लगता है और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट पहले ओवर में गिर जाने के बाद एक साझेदारी निभाने की जिम्मेदारी क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों पर आन पड़ी है, राहुल और तौफीक के ऊपर। और देखते हैं वो एक बेहतर साझेदारी अपनी टीम के लिए निभा पाते हैं या नहीं। इस बीच सफान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार राहुल। अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था अंतिम क्षण में, गेंद को ज्यादा उछाल लेती हुए, इस उछाल को पहचानते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोकते हुए गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया मिड ऑन पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 2 विकेट इन दी ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सफान फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को उछालने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके पहुंच से काफी बाहर, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गुजरते हुए, और वाइड का इशारा इस बीच हो चुका है अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। क्विक वन, एब्सोल्युटली गुड वन फ्रॉम द बॉलर सफान। लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, और इसी के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर एंड स्लो स्टार्ट फॉर Victory 11 Mugrori. They lost their 2 valuable wickets in the first over of their innings. Now they are 7 for 2 after first over. दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ, सेकेंड ओवर स्टार्ट्स इन विक्ट्री 11 मुग्रोडीज इनिंग्स। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज निजाम इस वक्त तैयार, और सामना करते हुए इस वक्त राहुल। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त वक्त का, तो 10:45 इस वक्त बच चुके हैं। ऑलरेडी 10:45 इन द मॉर्निंग। और पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पैरों पर गेंद टकराई बल्लेबाज राहुल के, और जब तक गेंद को स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है लेग बाई के रूप में। और लेग बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर, 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार तौफीक का सामना करते हुए। Just gone for a mighty heave, not succeeded. Wicket keeper, third man fielder misses and they completed a single run very safely in the end. बाई का इशारा, और जोखिम भरा रन जरूर था, लेकिन शॉट थर्ड मैन फील्डर गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाया, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था तेजी के साथ 1 रन बाई के रूप में चुराने का, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, और गेंदबाज निजाम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, बल्लेबाज राहुल जो कि इस वक्त सामना करते हुए निजाम की गेंदों का। इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट करते दैट वन प्रॉपर्ली, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया था आगे की ओर आते हुए गेंदबाज ने, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वहां पर कोई बैकअप नहीं था। और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, निजाम, रिवर्स शॉट delicately played, this is an absolutely exquisite reverse shot played by the batsman। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का, तौफीक इस गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को खेलने में सफल, खूबसूरती के साथ शॉट थर्ड मैन फील्डर की दाईं ओर से गेंद निकली, इस वक्त डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर हो चुके हैं 4 रनों के लिए। चौका प्राप्त करते हुए रिवर्स शॉट के जरिए बल्लेबाज तौफीक, बेहतर स्ट्रोक उनके बल्ले से लगता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब
14 रनों पर 2 विकेट पहले ओवर में गिर जाने के बाद क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश करते हुए तौफीक और राहुल और निजाम ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद जस्ट गॉन फ्रॉम माय टीम नॉट सक्सीडेड शॉट फाइन लेग फील्डर मिसेस एंड द बैट्समैन क्रॉस्ड ओवर फॉर द सिंगल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट 15 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर उनके पारी का प्रगति पर निजाम दाहिने हाथों पर द विकेट अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद शॉट थर्ड मैन फील्डर ठीक तरह से गेंद को फील्ड नहीं कर पाया और इस बीच रन एक मिलेगा जरूर और इस बीच अंपायर कुछ कहते हुए गेंदबाज से और कुल मिलाकर जहां तक सवाल है इस वक्त अब तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है कि वाइड है या नो बॉल ये परखने के लिए देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं वाइड इज द कॉल और इस बीच 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर काफी लंबा ओवर इस वक्त निजाम का प्रगति पर और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए इस वक्त तौफीक और दूसरा पपर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर निजाम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार लेग स्टंप से बाहर एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी वाइड का इशारा 1+1 अगेन इनटू द अकाउंट ऑफ द टीम विक्ट्री 11 Mugrodi and with that couple run the scoreboard moving up to 19 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल गेंद का पीछा करते हैं फील्डर काफी लंबा दौड़ इस वक्त लगाते हुए और गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर अपने पैर के जरिए रोकने में सफल 3 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके चौथा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा बेहतर स्ट्रोक अपने पैर के जरिए गेंद को इस वक्त रोकने में सफल फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का बेहतर स्ट्रोक लगता हुआ बल्लेबाज राहुल के बल्ले से और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 22 for the loss of 2 wicket and now I must say victory 11 Mugrodi recovered very well after being a shackling start all because of this partnership between Tawfiq and Rahul now they are looking in a good situation it's 22 for 2 after 2 overs So 2 overs completed, third over is now going to start in the innings और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और गेंदबाज जो कि गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ विक्ट्री 11 मुगलोडी की पारी में जहां तक अगले मैच का सवाल है Durga Kunchadi will take over Aiden Kodange in the next match and because of that I request all the players of these 2 teams to report to the stage for the signature procedure in the official chart. और third over starts in the innings गेंदबाज साहिल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए राहुल सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद लेकर साहिल दाहिने हाथों पर विकेट ये गेंद लेग कटर के तौर पर गेंद थी लेग स्पिन के तौर पर गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर वाइड का इशारा और 2 रन 1+1 2 runs now added to the total with that couple run the scoreboard moving up to 24 for the loss of 2 wicket at the start of the third over और साहिल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे तौफीक के लिए जो कि 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए यह गेंद उछाला बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए
बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ तौफीक के बल से लेग स्टंप पर गेंद थी और इस लेग स्टंप पर आती हुई गेंद पर थोड़े से फ्रंट फुट पर जाने के बाद गेंद को उछाल दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए बेहतर स्ट्रोक तौफीक के बल्ले से लगता है इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान बेद्रा इनका सारथ्य में और कुल मिलाकर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला वीवी ट्रॉफी 2026 की शानदार प्रगति होती हुई। यह गेंद बेहतर गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करते हुए सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन बल्लेबाज को नहीं मिला और साहिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर था विकेट तौफीक के लिए। यह गेंद एक बार फिर से बेहतर लेग कटर गेंद थी इस वक्त गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। इस बार गेंद लगभग जमीन के सहारे फेंकी थी गेंदबाज ने और जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त बल्लेबाज को नहीं मिले और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तो गेंदबाज साहिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त तौफीक का सामना करते हुए अंपायर विकेट को सही करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए स्क्वायर लेग पर और ओवर की अगली गेंद राफ्टेड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस और नॉट जस्ट वी हैड वेट एंड सी एंड इज गॉट द डिस्टेंस। दिस इज a magnificent struck into the bat of Tawfiq. He's hit that one too high but he got the distance at last at wide long on for a maximum. Outstanding struck, better stroke इस वक्त लगता हुआ तौफीक के बल्ले से and a fantastic third wicket partnership is now building up here. 36 on the board, just a 3 overs, third over in progress and really they are heading towards to a huge total now. Victory 11 McGrody, एक रन पर 2 विकेटें गिर जाने के बाद जो दबाव छा चुका था उस दबाव को लगभग पूरी तरह हटाने में सफल हो चुके हैं तौफीक और राहुल एक बेहतरीन साझेदारी के जरिए और साहिल अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था इन हाथों पर विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया डिलिकेट ले लेकिन फील्डर मौजूद है बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल नाउ इट्स 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार left-hand. This time I think no one in that area and the ball crossed, no in fact it collected by the fielder, cut set off by the fielder just inside the fence और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। बेहतर स्ट्रोक था, खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को उछाला था, बेहतर फील्डिंग वहां पर 3 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में। 41 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs. Now I must say victory 11 McGrody looking in a commanding situation. 41 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs. Now they are really heading towards a huge total. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನವಾಜ್ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಫ್ MCC ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ನವಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ನವಾಜ್, ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಫ್ MCC. वेलकम टू यू सर टू दिस टूर्नामेंट वंस अगेन. और जहाँ तक सवाल है चौथे ओवर का, 4th ओवर स्टार्ट्स लिटिल फेलो स्टार्टिंग द फ्रेश ओवर. और गेंदबाज ताजू गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तौफीक सामना करने के लिए तैयार. इस बार स्टीयर करना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट बट ही गॉट अ सिंगल
कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर 42 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 स्टार्टेड जस्ट शॉट वेल अगो इन द इनिंग्स। ताजू अगली गेंद लेकर तैयार राहुल के लिए स्वीप करना चाहा शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची रन के लिए दौड़ पड़े राहुल के लिए खतरा हो सकता है विकेटें उखाड़े गए और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा अब अंपायर तीसरे अंपायर की ओर इशारा करते हुए और काफी नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है देखना पड़ेगा जब विकेटें उखाड़े गए थे थ्रो को रिसीव करने के बाद गेंदबाज द्वारा तब बल्लेबाज राहुल नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंच चुके थे या नहीं और काफी नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है और इस बीच देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं या नहीं He's gone in fact. He fell just short out of his feet. He has to go. Rahul departs. और एक और अब तीसरा विकेट गिर चुका है and now I must say exactly 41 run third wicket stand has been broken in the face of Rahul. His departs after playing a sensible knock for their side of 9 runs including 1-4 and the third wicket lost. New batsman is now comes out to the middle. Rafa, नए बल्लेबाज राफा नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल और नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद सामना करते हुए इस वक्त तौफीक और गेंदबाज ताजू इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट तैयार just gone for a sweep at the last minute quicker one from Taju absolutely fantastic deliver extra quicker one और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में और बेहतर कलेक्शन विकेट कीपर द्वारा विकेट जरूर उखाड़े लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त ताजू तैयार बेहतर 3 गेंदें इस ओवर में अब तक वो फेंक चुके हैं अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार तौफीक के लिए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला जरूर इम्प्रोवाइजेशन करते हुए लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं और 1 रन मात्र मिलेगा और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 43 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। नए बल्लेबाज राफत जो कि इस वक्त गेंद की परीक्षा करते हुए और इस वक्त अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज ताजू गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई विकेट कीपर फील्डिंग में जमावट करते हुए और इस बीच ताजू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था इन हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक absolutely fantastic struck came from the bat of Arafat he just hit that one square of the wicket just clearing the infield just over the fielders at cover point and finds the gap as well down to a deep cover point fence for a boundary fantastic struck और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 47 रन पर 47 they are progressing along nicely 47 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress और ताजू एक बार फिर से तैयार राफा के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा रनों का खतरा विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो को कलेक्ट करने में असफल गेंदबाज 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल लेग बाय के रूप में 4 overs completed and after 4 overs still I must say victory 11 Mugrori looking in a good situation now it's 48 for 3 after completion of 4 overs with 2 overs to go in their innings.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Heartily welcome to Mr. नारायण देवाडिगा कॉन्ट्रैक्टर शक्तिनगर. और इस बीच गेंद को खेल दिया इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 49 रन ओवर 41 for the loss of 3 wickets in the over number 5 started just short while ago in their innings. और गेंदबाज इस वक्त सफान गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. तौफीक एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज सफान की गेंदों का इस गेंद को ड्राइव करते हैं. इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंचे. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरा रन लेना चाहते हैं तौफीक लेकिन नहीं मिलेगा. थ्रो पहुंच चुका है और इस 1 रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर विक्ट्री 11 मैंगलोर. 50 रन यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं जबकि उनकी पारी का 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर. और गेंदबाज सफान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. बेहतर गेंद थी इस वक्त. चक्रीकार विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल. और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 51 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. Good one. Get some extra bounce at the last moment. Gone through for a quick single. Direct hit. This time he's gone. In fact, he lost his wicket. Fantastic work made by wicket keeper. अपने आगे की ओर दौड़ कर आते हैं विकेट कीपर ने गेंद को तुरंत कलेक्ट करते हैं विकेटों पर निशाना दागा नॉन स्ट्राइकर एंड पर. और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ स्टम्प्सों को भी कर ले जाता हुआ थ्रो. और देखिए इस वक्त दैट इज एन एब्सोल्युटली गुड वर्क मेड बाय द विकेट कीपर. विकेट फॉलन. Tawfiq the man depart unfortunately. He's run out backing to pavilion after being 24 runs into his credit in just 15 deliveries and a fantastic knock came straight in from him. Tawfiq departs for 24 of 15 deliveries. 4th wicket lost for victory 11 Mugrodi. Now it's 51 for 4. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಡಿಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ನಿತಿನ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಡಿಗ ಇವರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची. वाइड का इशारा. वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. एक्स्ट्रा क्विक और 1 फ्रॉम द बॉलर. मिस outside the leg stump and with that single run the scoreboard moving up to 52 for the loss of 4 wickets. 52 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर. और अंपायर अब रिव्यू यहाँ पर शायद लेते हुए अंपायर्स रिव्यू कि ये वाइड है या नहीं ये परखने के लिए. तो गेंदबाज इस वक्त शायद रिव्यू ले चुके हैं और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इस का परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं. वाइड इज द कॉल. और गेंदबाज का रिव्यू इस वक्त बेकार जाता हुआ 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज सफान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सामना करते हुए इस वक्त राफत सफान की गेंदों का. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा. मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इज गॉन. इन फैक्ट राफत डिपार्ट्स बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. 1 more wicket fallen. 5th wicket gone in the face of run out. Now it's 52 for 5. One ball left in this over. ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈಡನ್ ಕೋಡಂಗೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
न्यू बैट्समैन विनीत इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करेंगे सफवान की ओवर की अंतिम गेंद का। अब तक सिर्फ 3 रन इस ओवर में सफवान प्रदान कर चुके, एक बेहतर ओवर अब तक उनका साबित हो चुका। 4 रन कहना पड़ेगा प्रदान कर चुके, एक वाइड उन्होंने फेंका था और इस बीच ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, शॉट फाइनल की दिशा में गेंद निकलती हुई, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। काफी तेज आउटफील्ड और यहाँ पर लेग बाई के रूप में 4 रन प्राप्त कर चुका है विक्टोरी 11 मुगरोडी और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 56। अब तक 56 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है। 5 कंप्लीटेड, स्टिल दे आर लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन। विक्ट्री 11 मुगलोरी 56 for 5। ताजू गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त जाबीर। ओवर की पहली गेंद लेकर ताजू इस वक्त तैयार। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ विक्ट्री 11 मुगलोड़ी की पारी में। फर्स्ट बॉल लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 57 रनों पर। 57 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 एंड अ फाइनल स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो इन देयर इनिंग्स। ताजू ये गेंद लेग स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की और इस वक्त नहीं निकल रही थी, सही गेंद घोषित। जहाँ तक रनों का सवाल है, रन नहीं मिलेंगे, स्कोर रुक चुका है 57 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें बाकी और ताजू अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली फ्रॉम द बैट, इन फैक्ट इट्स ऑफ द लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर and with that leg by run the scoreboard moving up to 58 for the loss of 5 wicket in the over number 6 in progress। ताजू अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को खेला। इस बार मौका जरूर था लेकिन गेंद उनके आगे टिप्पा खाते हुए पॉइंट पर। जब तक गेंद को बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था। इस बीच 3 रन नहीं मिलेंगे, यहाँ पर विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में और बल्लेबाज काफी धीमे दौड़े थे और आखिरकार भुगतान करना पड़ा। डायरेक्ट हिट लगता हुआ इस वक्त फील्डर का मिडल स्टंप को बिखेर कर ले जाता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर और बल्लेबाज विनीत की पारी पर पर्दा गिर चुका। 2 रन जुड़ चुके हैं और यहाँ पर गिर चुका है 60 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। Last 3 balls left in their innings. This is the second match of this prestigious cricket tournament, VV Trophy 2026, which proudly organized by Veera Venkatesh cricketers is now progressing here. And the second day of this prestigious cricket tournament is now progressing here. और गेंदबाज इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट, क्विकर गेंद, not connected that one properly, but he got a single. Scoreboard moving up to 61 now for the loss of 6 wicket. Now just 2 balls left in their innings. और अंपायर ने इशारा किया कि देयर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो खिलाड़ी को इस वक्त भी इसके दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। 2 गेंदें इस वक्त बाकी है उनकी पारी में। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई। डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर के इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया है और ताजू इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नासिर सामना करते हुए ताजू की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, अगली गेंद और लेग स्टंप पर आती हुई शॉट फाइनल के फील्डर का फेंका गया हुआ थ्रो बल्लेबाज के पैर पर टकराता हुआ ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। बाई का इशारा। लास्ट डिलीवरी नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। 63 on the board for losing 6 wicket. Last ball of their innings is now coming up. और ताजू, good one, terrific delivery from Taju. Dot ball to end their innings, and the innings is up for Victory 11 Mugrodi, and they started
shockingly, but finished well with 63 for the loss of 7 wickets in the stipulated 6 overs. And now they set a huge target of 64 for NFC Pakka Ladka. 64 runs they have to score for victory. The required run rate of exactly 10.66 runs for their stipulated 36 overs. That means in their stipulated 6 overs. And let's see can they reach the target or not. NFC पक्का लड़के की पारी की शुरुआत होगी इस वक्त उनके एक छोटे से अंतराल के बाद 64 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में इस वक्त उन्हें बनाने हैं और उनकी पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में हम आपके सामने उपस्थित होंगे जेपी जयप्रकाश के साथ जब NFC पक्का लड़का की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद। Venkatesh Venkatesh to get 63 runs in their stipulated 6 overs and set a target of 64 to win for NFC Pakka Ladka. So the two openers are making their walk out to the middle from the side of NFC Pakka Ladka with jersey number 11 as well as 45. Two batsmen out there in the middle are Aris with the jersey number 11 and on the other hand we have Tanzim. So Tanzim in the non-striker's end and the bowler to start the proceedings from the side of Fixie 11 Mugrodi is Rahul. So can't afford to rest these two batsmen right from the beginning because 64 is the target in front of them in the stipulated 6 overs.
have to score at a rate of just above 10 runs per over. At every over, they have to get at least 10 or 11 runs to keep themselves in the chase. 64 is what required. That's a start from umpire Mr. Pushparaj. The first delivery of the second innings of the second match. So Harris to face the first delivery from Rahul. Comes in ball this time straight away. The ball is being smashed towards the deep mid-wicket region, but not more than a single will result for Harris as the fielder was set for that particular shot by the bowler. Just a single one bounce into the hands of the fielder. Had to do a little bit work running towards his right. Rahul. This time balls. Good delivery once again in the similar same region, but fielded inside the 30-yard circle. Short mid-wicket fielder comes across and corrects the ball. Both the openers are off the mark of the very first delivery. They have faced 64 is the target in front of them. This time a good delivery, beautifully balled. This time we have to wait for the signal from the umpire, and umpire says that the batsman is safe in his crease. Very well gathered by the keeper behind the stumps, removing the bails off. They know the importance of each and every wicket because the batsmen, once they get their eyes in, they can be a very destructive players, especially in this ground. The boundaries are not as much big as compared to the other grounds in Dakshina Kannada. 63 is the score what is being put on the board by the captain, by the players of Victory Love and Mugrodi. That too after losing first 2 wickets for just 1 run. A tremendous comeback from the players of Victory Friends Mugrodi. This time good delivery and equivalently well played towards the long on region. In fact, they are coming back for the second chance of a run out there, but the throw was not good enough to get the batsmen out. 2 more runs to the total and 2 more runs to Harris. With that couple of runs, the score now moving up to 4 after the completion of the first 4 deliveries of the first over. Rahul, 5th time in the over to Harris. Comes and balls this time. A little bit of inside. A chance of a run out once again. Direct hit what was required. The ball is been not gathered by the backup fielder there. They're coming back for the second run. Extra run added to the total in the form of a bye this time. So with those 2 runs, the score now moving up to 6 on the board. The ball, if the ball had hit the stumps directly on the striker's end, it would have been the end of the innings for Tanzim. No one backing up for that throw from the fielder from the short mid-wicket region. This time Rahul comes across the balls. A good delivery, beautifully balled. Once again, a good piece of keeping behind by Gautam, in fact. He's collected the ball and removed the bails off in a flash to finish off the over. Over number 1 comes to an end after the completion of the first over. The score is on 6 for the loss of no wickets. Chasing a target of 64 runs. That means 58 more runs required in the stipulated 5 overs. 30 deliveries remaining, 58 required. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 58 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Pardon, Deepak was the keeper who had collected that ball and removed the bails off in a flash, but the batsman was safe in his crease. The bowler to continue the proceedings is Nizam. Will be bowling the first over of his quota and the second for his side. Pretty good over by Rahul coming to an end. Just 6 runs considered, but was not able to pick up any wicket. Nizam this time comes across, balls outside the off stump. It's a wide delivery called by the umpire. Starts off with the extra outside the off stump. 2 more runs. Nizam giving away in the form of wide. So with that couple, the score now moving up to 8 on the board.
without the ball being bowled in the second over. This time balls. A good delivery just outside the off stump. Once again the ball deviating after pitching, says the umpire. Yet to bowl a legal delivery in this over is Nizam. Has already considered 3 runs. He's coming from the far end. Yet to bowl a legal delivery with the first delivery of the second over. This time balls are very well struck over the head of the deep extra cover. The ball running towards before the fielder comes and gathers the ball. The batsmen are back for the second. 2 more runs to the total. With that the score moving up to double figures. 11 on the board. Harris. Good delivery, beautifully balled. This time onto the pads of Harris. Just a single more to the total in the form of a leg bye. Bobbitt this time balls. The third delivery of the over. There has been splashed. Once again taken on a bounce. 2 more runs to the total. With that double, the score moves up to 13, and Tajuddin this time getting a couple of runs. So Bobbitt bowling 14 on the board this time. Good delivery, beautifully balled just outside the off stump. Once again it has been gathered by the keeper behind the stumps. No damage done. The score still remains on 14 on the board. Last 2 to go. Still a couple of deliveries remaining in the over. The second over in progress. Good delivery, just a little bit of outside edge of the bat, but no chance of any run. Once again a chance of overthrow, chance of a run out as well. The ball hits the stumps directly from the fielder there, but umpire unmoved with the appeal. Just a single to the total. With that the score moves up to 15 on the board. Tajuddin moves up to 4. Final delivery coming up of the second over. 9 runs are considered of 5 deliveries so far from Bobbitt. They're still lagging behind that required run rate, which was 10.5 runs at the beginning of the innings. Good shot this time, up in the air. Will it be taken? I think the man has taken the catch neatly, just inside the boundary lines, timing the jump to perfection and taking the catch of Harris. So Harris has to depart after scoring 5 valuable runs for his team. In the process of clearing the ropes, he has just found the fielder there, keeping himself calm, timing his jumper to perfection, taking the catch neatly and landing inside the boundary lines. So the first breakthrough has been provided there from Bobbitt. NFC Pakkaladka losing their first wicket at the score of 15 on the board. The man out is Harris, back in the pavilion after scoring 5 runs of 8 deliveries. So 2 overs comes to an end, the second over, and the score on the board is 15 for the loss of 1 wicket. Imtiaz. So Imtiaz is a new man who is on the non-striker's end as the wicket fell of the final delivery of the second over. The breakthrough which was being provided by Bobbitt. As Harris looked to step on the accelerator, he has lost his wicket. So 15 of 2 deliveries, that means 24 deliveries remaining, and they require 49 runs to win.
24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 49 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. And the bowler to continue the proceedings is jersey number 4. It's Rahul once again continuing the proceedings, bowling the second over of his quota. He had given away 6 runs, including a bye in that. The bye also included in that, in those 6 runs. That means 5 runs will be considered against him. The man on strike is Tanzim. 49 required. 4 overs remaining this time. A good delivery, beautifully bowled. Once again, well kept by Deepak behind the stumps. Not allowing the batsman to move an inch out of his ground. He's so quick behind the stumps that as soon as he gathers the ball, removes the bails off in a flash. Tanzim might be having around the back of his mind that Deepak is very quick, lightning fast behind the stumps. Will not be thinking of stepping down out of the crease at any situation. Rahul. Balls sweep shot there down the corner towards the square leg. Not more than a single bill result for Tanzim. Should be happy with a single. With that single, the score moves up to 16 on the board. We are in the 3rd over of the 2nd innings of the 2nd match of the day. The captain of Victory 11, Mukrodi, will not mind the batters are taking singles unless and until they go for some big shots. This time outside the off stump. It's a wide called by the umpire. So I think it will be a review from the bowler regarding the wide. The umpire's decision is wide. The bowler questioning against the decision of the umpire. Oh, it's a wide. No other review has been taken back. So 17 on the board. Up to the wide. This time balls once again outside the off stump, just beating the batsman. Dot delivery against Imtiaz. Comes and balls. The 4th delivery of the 3rd over. Balls this time, it's been firmly struck, but couldn't miss the fielder there. Not finding the placement on that occasion is Imtiaz. The only fielder in that long gone region had to move at just a couple of yards towards his left and take that catch which comes his way. So Imtiaz has lost the wicket while trying to clear the ropes straight down the ground, but not able to clear that one, and he has been dismissed after without troubling the scorers on the scoreboard. So the 2nd wicket falls. This time it's Rahul who has provided the breakthrough for his side. The score on the board is 17, and they have lost their 2nd wicket. Imtiaz is my man to be dismissed. So the new man is Safwan. He's made his walk out to the middle to join Tanzim. On the other hand, playing on batting on 5 of 6 deliveries. Good delivery, wrapped on the pads. Loud appeal from the bowler, half-hearted appeal we can say. So leg by signaled by the umpire. One more run added to the total in the form of extra. The score moves up to 18 on the board, with final delivery coming up of the over number 3. At the beginning of this over, 49 was required of 4 overs, just 3 runs considered under the circumstances. It's a very good over. In fact, this time on to the pads. Once again trying to sweep that one, but taking the pads on the way. Once again a leg by signal by the umpire. 19 on the board after the completion of over number 3. In the process, they have lost 2 valuable wickets. 19 for the loss of 2 wickets after the completion of 3 overs. Meanwhile, I would like to call upon the captains of Durga Konchadi as well as Eden Kodange
to please give away the signature of the players. As soon as they have completed it, I request them to please report in front of the commentators box for the toss for the next match. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಡನ್ ಕೋಡಂಗೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So the next over will be bowled by jersey number 10, Jabir. Bowling the first over of his quota and the fourth for his side. The score on the board is 19. 45 more runs are required of the remaining 3 overs. ಉಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 45 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂದರೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. They still have 8 wickets in hand. They can't afford to take singles and keep the scoreboard ticking because the run rate is creeping up each and every dot delivery. Every delivery the run rate will be climbing up. 45 of 3 now. 15 runs per over is what required. This time outside the off stump. We have to wait for the signal from the umpire. It's rightly called as a wide. Starting off with the wide outside the off stump. 2 more runs to the total in the form of extra. The score moves up to 21 now. 43 required. The beginning it was 10.62 runs per over. Now it is 15 runs per over is what required. Hit straight down the ground. A fumble there by the fielder in the mid-off region, allowing the batsman to come back for the second. With that, the 2 more runs are added to the total, and 2 more runs to Safwan as well. The score now on the board is 23. 41 more required. This time sweeps it towards the deep square leg, but straight into the hands of the fielder. A couple of bounds towards him. Just a single more added to the total. I've not seen any boundaries or sixes in the innings of NFC Pakaladka so far. Coming right arm over the wicket. Chabir balls. Good delivery. Gets I think has got a little bit of inside edge of the bat. A single more to the total. With that single, the score now moving up to 25. Tanzim trying to go over the top, but the bowler quick to realize that he was making room for himself, moving away from the stumps, exposing the stumps to the bowler. This time sweeps it down the corner, very well fielded, very well backed up by the fielder there, just restricting the batsman for a single. 1 more run added to the total. The score moves up to 26 on the board. 38 more required of the remaining 14 deliveries. 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. This time a top edge for a single. Score moves up to 27. Final delivery of the over number 4 coming up. The next match will be played between Durga Konchadi as well as Eden Kodange. The 2 captains are requested to finish off all the proceedings what are required. Procedures what are required for them to play the next match. 28 on the board with the completion of the over number 4. Safwan as well as Tanzim, the 2 batters out there in the middle, trying to clear the ropes each and every occasion, but not able to get the ball in the middle of the bat. The bowlers really bowling a very good tight length. So remaining 12 deliveries, the score required is 36. 36 runs required of the remaining 2 overs. 12 deliveries, 36 runs to get 18 runs per over is the asking rate now for NFC Pakaladka to, if they want to make a match of that one. 3 sixes each over. A
At least a couple of sixes in each over is what is required for NFC Pakalarka to make a match out of this one. So Anish has been brought into the attack to bowl the fifth and the first for his of his quarter. He coming from the far end and he'll be bowling to the right-handed batsman Safwan, who is on strike, who is batting on 5 of 5 deliveries. None of the batsmen are able to make an impression in this innings for Pakalarka. So there's a call for the third umpire by the umpire himself for a wide. And his decision is wide. So he's referring towards the third umpire to just confirm it. It's a wide. It's a wide called by the third umpire as well. Very good decision coming from Mr. Pushparaj from the middle. It's very hard for the umpires, those who are performing the duties in this hot sun here. Meanwhile, it's a little bit cloudy, but the sun hitting the ground very hard this time. Full toss, they taken it on the full, drives the ball towards the deep mid-wicket region before the fielder comes and collects the ball. The batsmen are coming back for the second and also completing the second run quite easily. 2 more runs to the total with that couple. The score moving up to 31 now. Still require 33 more runs to win of 11 deliveries. 11 deliveries remaining, 33 more required. Anish this time balls outside the off stump, just tapping the ball towards the deep extra cover region for a single. 1 more run added to the total. The score moves up to 32. Tanzim on strike. Balls goes for the big one. This time the first maximum of this innings coming from the bat of Tanzim. But I think it's a little too late for NFC Pakalarka. Score on the board is 38 with the first maximum of the innings. They're coming in the over number 5. They required such type of shots earlier in the stage of the innings. But Tanzim this time getting a 6, which is much important. Can he repeat it again? Goes for the big one this time. Gets the inside edge of the bat. The ball running towards the square leg region for a single. 1 more run added to the total. The score moves up to 39. Good comeback by the bowler Anish after being smashed for a 6 of the third delivery of his over. Couple of more deliveries remaining in this over. Can he finish it off with the 2 dot balls? Good delivery, beautifully balled. Fumble there by the keeper and also the fielder behind the stumps. They're coming back for the second run. Leg by signaled by the umpire. 2 more runs added to the total in the form of extra. The score moves up to 41 now. $23 more required now. Of the remaining 7 deliveries. 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ NFC Pakalarka. This time balls, a good delivery, beautifully balled onto the stumps. Targeting the stumps on that occasion was Anish. Just a single more to the total to finish off his quota of 1 over. So that's the completion of the over number 5 as well. After the completion of 5 overs, the score on the board is 42 for the loss of 2 wickets. Still plenty of runs required. 22 required of the final over. 6 deliveries remaining. 6 legal deliveries remaining. In fact, in front of NFC Pakalarka, they have to score 22 runs, which is the required run for them to win this match and qualify for the next round. Meanwhile, the bowler to bowl that final over is the jersey number 2. It's Rakshit. So Rakshit bowling the final over.
onto the pads. Appeal from the keeper behind the stumps. No appeal from the bowler. Leg by signal by the umpire. One more run added to the total in the form of extra. The score moves up to 43. 5 deliveries remaining. 21 required. 3 sixes will change the course of the match. This time tries to go over the top. Not quietly middling it from the bat. Just a single. Singles will not at all help. Now this is the match deciding delivery. 20 required of 4 deliveries. A 6 here will really keep them in the hunt down the leg side. It's a wide fumble by the keeper. It's slightly called by the umpire as well. 2 more runs to the total with that couple. The score moving up to 46. Now 3 sixes will win them the match. 4 deliveries remaining. 3 sixes is what required. The man on strike is Tanzim. Has already hit a 6. Goes for the big one. Once again all down the carpet. This will not at all help them. They really required to go over the top. Safwan, the match deciding ball. 17 of 3. If this one results in a single or a double or a dot, the match will be 80% in the favor of the bowling side. Good delivery, beautifully bowled. A dot delivery. And almost that's the end of NFC. Unless the bowler bowls a no ball and the ball is being hit for a 6. This is the end of the proceedings for NFC Pakkaladka. 2 deliveries remaining and they require 17 runs to win this match. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Bowler has to keep himself calm. Ball a good delivery, not ball a no ball. To just maintain a good line, a good length. Final 2 deliveries remaining in the over. 17 is what required. Comes in balls this time. A good delivery, very well kept by Deepak behind the stumps. Little bit of fumble. They will not mind that because has balled a very good over here from Rakshit. Final delivery coming up. Just the formalities to be finished and he gets a 6 of the final delivery. And the score also crosses the 50 run. They have managed to score 54 runs in their stipulated 6 overs, losing the match by 9 runs. Congratulations to Victory Lavan Mukurodi and better luck next time for NFC Pakkaladka. They had been set a target of 64 runs. They managed to get only 54 out of their 6 overs. And Victory Lavan Mukurodi winning the match by 9 runs. And we are having the next match of the day played between Durga Konchadi as well as Eden Kodange. I request the 2 captains to please report to the commentators for the shot. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ 2 ಕಪ್ತಾನರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಡನ್ ಕೋಡಂಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಈ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Within a short while from now, the match between Durga Konchari as well as Eden Kodange.
ದಯವಿಟ್ಟು ಯಶವಂತ್ ಇವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಆಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಯಶವಂತ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. धन्यवाद जेपी जयप्रकाश। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मैच नंबर 3 का, तो मैच नंबर 3 इस वक्त से शुरू होता हुआ दुर्गा कोंचाड़ी टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो उन्होंने लिया है। पहले गेंद उनके गेंदबाज फेंक चुके हैं और ईडन कोडंगे के आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त पहली गेंद खेल चुके हैं. ईडन कोडंगे ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. Bowling just gone for a loft, not succeeded, and a middler of stump uprooted. First wicket gone. Eden Kodange lose their first wicket. The batsman departs. 12th player Eden. So new batsman Nitin is now comes out to the middle और नितिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए केविन और नितिन सामना करते हुए और श्रवण का विकेट गिर चुका है और अरुण नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद है और केविन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नितिन के लिए अगली गेंद स्वीप करना चाह. नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट. ही कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर. और फिर से एक बार गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए केविन दाहिने हाथों पर था विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके. एक बार फिर से गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर. रन्स इस वक्त नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर. 3 बेहतर गेंदे 4 बेहतर गेंदे केविन इस वक्त फेंक चुके हैं अपने के 5 विकेट. बाउल्ड आउट. 1 more wicket fallen. Extra quicker from the bowler and he just get rid of the batsman. विकेट नंबर 2 इन दिस ओवर. काफी तेज गेंद इस वक्त केविन ने फेंकी थी और इस गेंद को ऑन साइड पर उछालने के प्रयास में चूके अंतिम क्षण में गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई और उनके ऑफ स्टंप को टकरा कर निकल गए बिल्स डिसलॉन्च होते हुए और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका. नॉट फॉर 2 फॉर ईडन कोडंगे. दुर्गा क्रिकेटर्स कोंचाड़ी ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है
और 2 विकेट पहले ओवर में ईडन कोडंगे के गिर चुके हैं 0 पर। तो इस वक्त नए बल्लेबाज प्रशांत गेंदबाजी का सामना करते हुए और केविन सफल ओवर अब तक उनका साबित हो चुका है। पहली अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था, इन्हें रौंदा विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके और इसी के साथ मेडन एंड 2 विकेट। फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द बॉलर केविन। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद ईडन कोडंगे मेड अ शैकलिंग स्टार्ट्स, दे येट टू गेट ऑफ द मार्क आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर एंड आल्सो दे lost their 2 vital wickets, and a fantastic start given by the bowler Kevin for his team Sri Durga Konchadi, and first over completed, it's not for 2. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो इस वक्त गेंदबाज चेतन इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक. सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए चेतन, जबकि अरुण सामना करने के लिए तैयार. दूसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. पावर प्ले के अंतर्गत स्ट्राइट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर. वन मोर विकेट फॉलन, जस्ट हिट दैट वन but not so hard and unable to clear the inside 20-yard circle at the last moment. और जहाँ तक सवाल है मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंचे और विकेट नंबर 3 गिर चुका है. द बैट्समैन dismissed is Arun. 3 batsmen are out for a duck. Shravan, Arun and Nitin back to the pavilion in the face of duck, and now still I must say Eden Kodenge yet to get off the mark. It's not for 3 in the second over started just short while ago in their innings. अनवय नए बल्लेबाज और इस वक्त गेंदबाज चेतन तैयार. ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन मिलेगा इस बीच और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला एट लास्ट उनके लिए शुरू हो चुका है. उनके पारी के दूसरे ओवर में 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर अनवय का खाता खुल चुका है और सामना करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए चेतन. ये गेंद स्वीप करना चाह, रिवर्स शॉट खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली फ्रॉम द बैट और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर. चेतन फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद स्वीप करना चाह, एक बार फिर से क्विकर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज चेतन की. अपना बल्ला यानी बैट खो चुके थे स्वीप करने के प्रयास में, लेकिन कोई क्षति नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी है. रन से बल्लेबाज चेतन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन्हें राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत सामना करते हैं. धीमी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, गेंद तक पहुंचना चाहता. वाइड का इशारा, ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. विकेट गेंद मोड़ दिया, शॉट फाइल लेग पर रनआउट का खतरा, लेकिन नहीं, यहाँ पर विकेट बल्लेबाज पहुंच चुके हैं और 1 रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा. अपने हाथों से तीनों स्टंप्स को चटकाए इस वक्त विकेट कीपर ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 3 for the loss of 3 wickets.
चेतन ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। क्विक आउटफील्ड और गेंद को हल्के से इस वक्त मोड़ दिया था कलाइयों के सहारे बल्लेबाज ने, और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 7 रन बन चुके हैं, बेहतर स्ट्रोक लगता हुआ इस वक्त अन्वय के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है ईडन कोडंगे का 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 7 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। मनीष गेंदबाजी शुरू करते हुए, तीसरा ओवर शुरू होता हुआ ईडन कोडंगा की पारी में, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त मनीष तैयार, अंपायर विकेटों को सही करते हुए। दोपहर का वक्त, दोपहर के ठीक 12 बज चुके इस वक्त। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को फैलाता हुआ, और कुछ हद तक बादल जरूर नीला आकाश के तले दिखाई देते हुए, लेकिन वर्षा के बादल नहीं। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस सुंदर से विशाल से नाल्य पदों स्कूल मैदान शक्तिनगर पर छा चुका है, और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट वीवी ट्रॉफी 2026 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है वीरा वेंकटेश क्रिकेटर्स ने अपने 23वें एनिवर्सरी पर दिवंगत श्री पद्मनाभ शणै इनके मधुर याद में एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए ये श्रृंखला। और मनीष ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ अराउंड द विकेट, फुल टॉस ड्राइव कर दिया, गेंदबाज की दाईं ओर से गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर काफी पीछे तैनात, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। निश्चित रूप से एक साझेदारी की इस वक्त सख्त जरूरत है ईडन कोडंगे के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो। और मनीष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, प्रशांत लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर मौजूद, और इस बीच मनीष प्रशांत के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रशांत जो कि सामना करने के लिए तैयार। इस बार उछाला, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में जाती हुई एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, जस्ट अ सिंगल गॉट, and with that single run the scoreboard moving up to 9 for the loss of 3 wicket in the over number 2 in progress। और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज अनवय और प्रशांत एक साझेदार यानी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश करते हुए, और मनीष बाएं हाथ के बल्लेबाज को दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज को दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बार लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, बेहतर कलेक्शन विकेट कीपर द्वारा विकेटों के पीछे रन बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाह, गेंद को छोड़ दिया, शॉट फाइन लेग पर रन, और स्ट्राइकर एंड पर खतरा था इस वक्त, जरूर थ्रो पहुंचता, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया फील्डर ने, और बाई के रूप में बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज Manish. Bowled him, just gone for drive on the onside, not succeeded. The ball gets turned, some turn at the last moment, beating his bat and stuck to his mid leg stump. And this is an absolutely fantastic delivery bowled by the bowler Manish in this occasion. Absolutely fantastic delivery. और देखिए यहाँ पर किस तरीके से विकेट गिरा था, और निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंदबाजी मनीष द्वारा 10 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है। And the man Anwar departs, and 4th wicket fallen. It's 10 for 4. New batsman is now comes out to the middle. समीर इस वक्त नए बल्लेबाज अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मनीष की गेंदों का। ये गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को खेलना चाहा, चूंकि विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 overs completed after 3 overs. Still I must say Eden Kodange just searching for the right track. 10 for the loss of 4 wicket after completion of 3 overs, and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in their innings.
Dakshit, the bowler is now brought into the attack. Fourth over starts in Eden Kodange's innings और दक्षित ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट पहली गेंद फुल टॉस लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को रोकने में सफल बेहतर तरीके से इस वक्त फील्डर और वाइड का इशारा यहाँ पर हो चुका है 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल दक्षित वाइड के साथ इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए समीर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दक्षित की गेंदों का और दक्षित fantastic delivery run to gone through for a run and this time is gone. I think just we have to wait for the is gone in fact. Direct hit came from wicket keeper flattering the wickets. One more wicket fallen. Prashant the man departs. It's 12 for 5. New batsman Sharan is now comes out to the middle. 12 for the loss of 5 wickets और दक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार शरण के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहे शॉट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे स्कोर रुक चुका है इस वक्त 12 रन 5 विकेट के नुकसान पर निश्चित रूप से ईडन कोडंगे के बल्लेबाज अपनी सही राह को तराशते हुए जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक और अगली गेंद लेकर दक्षित इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शरण के लिए अगली गेंद bowled him just gone fall off not succeeded is off stump uprooted one more wicket fallen fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Durga Kunjari and because of that Aiden Kodange they are looking deep in trouble in fact it's 12 for 6 and the man Sharan departs. किशन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और दक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ के दिशा में लेकिन मौका वहां पर फील्डर के लिए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है गोल्डन डक के रूप में पहली गेंद पर किशन का विकेट गिर चुका है उछाला था जरूर लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे बाईं ओर दौड़ते हुए वनिश लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को उन्होंने आपका एक बेहतर जजमेंट के साथ और इसी के साथ किशन का भी विकेट यहां पर गिर चुका है 7th wicket down 12 for 7 really a struggling time continuing here for the batsmen of Eden Kodange in this situation. न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार दक्षित के गेंदों का और हैट्रिक गेंद लेकर तैयार इस बीच रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके इस वक्त विकेट कीपर निशु तेजी के साथ गेंद तक पहुंचते हुए रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 12 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दक्षित सफल ओवर अब तक उनका साबित हो चुका है ड्राइव कर दिया शॉट मिड विकेट पर रन का खतरा डायरेक्ट हिट वन मोर विकेट फॉलन this time non-striker and the batsman certainly is backing to pavilion direct hit better throw था इस वक्त और सीधे स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ non-striker एंड पर श्रवण नंबर 2 is now backing to pavilion
and 8th wicket down. Wickets are falling like a pack of cards. ताश के पत्तों के विकेट इस वक्त गिरते हुए और हर विकेट के पतन के साथ इस वक्त दबाव और बढ़ता हुआ ईडन कोडंगे के बल्लेबाजों के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति और जिस तरीके से दुर्गा कुंचाड़ी के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उस निर्धार का संपूर्ण समर्थन करते हुए, जस्टिफाई करते हुए इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दुर्गा कुंचाड़ी के 8 विकेटें इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं और सिर्फ 12 रन इस वक्त स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज का तो नहीं, और कि पहली गेंद एंड वंस अगेन वन मोर विकेट फॉलन, विकेट नंबर 9 डाउन। Perfect leg cutter from the bowler Manish, and he just get rid of the batsman. बेहतर लेग कटर गेंद थी, इस लेग कटर गेंद की टर्न को समझ नहीं पाए बल्लेबाज और एक विकेट और यहाँ पर गिर चुका है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, द बॉल टर्न लॉट देन द बैट्समैन एक्सपेक्टेड एट द लास्ट मोमेंट एंड इट स्टक टू हिज मिड ऑफ स्टंप। 9th wicket down and Chidam the man dismissed. 9th wicket gone. It's 12 for 9. Last batsman is now comes out to the middle. Number 11 the last batsman is now comes out to the middle और इस बीच गेंदबाज मनीष विकेट प्राप्त कर चुके अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर। बेहतर लेग कटर गेंद के जरिए एक विकेट बोल्डर के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार। Love that. This time I think he's got the distance. One bounce hit. Oh, that might be a certain disaster, but at the last moment तो 4 रन यहाँ पर मिलेंगे जरूर। 4 runs added to the total. The ball went over the fence after first bounce. और जहाँ तक सवाल है, फील्डर जो कि टकरा गए थे वहाँ पर और कोई क्षति नहीं है ये अंतिम क्षण में, तो 4 रन इस वक्त जरूर मिलेंगे। सारे खिलाड़ी इस वक्त वहाँ पर जाते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। So welcome back once again. And the boundary results again, Manish bowls. Bowled him, that's it, 16 runs packed up for Aiden Kodange. They were bundled out for just 16 runs in 4.3 overs. That means before 9 deliveries of their stipulated quota. And now the target for Durga Konchadi is 17. They have to score for victory in 6 overs. Fantastic bowling performance given by the bowlers of Durga Konchadi. And because of that, the innings of Aiden Kodanje bundled out for just 16 runs. 17 the target for Durga Konchadi. In 6 overs they have to score for victory. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಂಗೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Heartily welcome to Mr. Prasad Shetty Kodange to the prestigious cricket tournament. ದಲಿತ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ತಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಚೋಟ ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ತಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Heartily welcome to both the prestigious cricket tournament, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಂಗೆ and ಲೋಕೇಶ್ ಚೋಟ ಸಾಲದ ಮನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸದಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಂಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಚೌಟ ಸಾನದ ಮನೆ ಇವರಿಗೆ ಸದಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿರುವರಿಗೂ
ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಗಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಿಲ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಿಲ್ ಮುಗಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So back to the game, 17 the target, and their innings now going to start. Davik and Nishu now comes out to the middle, and the bowler starts the fresh proceedings. Is Shravan. 17 the target for them, and the first ball of their innings is now coming up. Pehli गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. Bowled him, first ball, dream start for the bowler. और शरुण जो गेंदबाज थे इस वक्त बेहतर गेंदबाजी की. लो फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, गेंद को ऑफसाइड पर उछालना चाहते थे, चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर वन और गेंद सीधे जा टकराई मिडल ऑफ स्टंप पर. गोल्डन डक इस वक्त दैविक प्राप्त करते हुए पहली गेंद पर आउट होकर पेविलियन वापस, और दुर्गा कुंचारी अपना पहला विकेट खो चुका है 0 पर. इट्स नॉट फॉर 1 एंड दैविक डिपार्ट्स फॉर अ गोल्डन डक. New batsman Kevin is now comes out to the middle. Top edge, but no one in that area. And they completed one, and they come back for the second. And get it comfortably at last. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो इस वक्त केविन खाता खोल चुके अपने अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. शरुण ने गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को खेल दिया था. नॉट करेक्ट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, बट ही प्लेड दैट वन स्क्वायर ऑफ द विकेट एट द लास्ट मोमेंट फॉर अ पॉइंट फॉर अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. निशु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और शरुण इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार खेल दिया, गेंद को कवर पॉइंट की दिशा में. रनआउट का खतरा, एक और विकेट यहां पर गिर चुका. मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन, and the man Kevin dismissed. Run out at a second wicket lost for Durga Kunchadi. It's 3 for the loss of 2 wickets. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ दक्षित जिन्होंने बेहतर गेंदबाजी की थी इस वक्त बल्लेबाजी पर उतरते हुए 3 रनों के ऊपर दूसरा विकेट खो चुका है दुर्गा कुंचाड़ी. लक्ष्य हालांकि छोटा सा, लेकिन यहाँ पर कमबैक करने का मौका जरूर है. ईडन कोडंगे के गेंदबाजों को एक घातक गेंदबाजी उन्हें निश्चित रूप से यहाँ पर इस मैच में वापस ला सकते हैं, और घातक गेंदबाजी के उस मकाम तक पहुँचने के लिए उन्हें अभी भी 3-4 विकेटें कम अंतराल में उखाड़ने होंगे. गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार. शरुण ऑफ स्टंप से बाहर. स्टॉप दैट वन ब्रिलियंटली बाय द फील्डर. शॉट थर्ड मैन. और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर यहाँ पर पूर्ण करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 4 for the loss of 2 विकेट. अगली गेंद लेकर गेंदबाज
इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फुल टॉस के तौर पर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची। इस वक्त एक बार फिर से रन बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बेहतर ओवर शरुण की समाप्ति हो चुकी है। इस वक्त पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। दुर्गा कुंचाड़ी मेड अ मिक्स स्टार्ट। इन फैक्ट इट्स अ 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ first over. Now 13 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs. Required run rate exactly 2.60 runs per over. Still they got 8 wickets kept intact. और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार चिदन और दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दक्षित और चिदन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ लेग स्टंप से बाहर विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन इस बीच मिला। काफी वाइड थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ 1+1 2 runs handed to the total in the face of wide and with that 2 wide runs the scoreboard moving up to 6 for the loss of 2 wickets. In the over number second started just short while ago in the innings. निशु सामना करने के लिए इस वक्त तैयार और चिदन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। इस बार निशु गेंद को उछालना चाहा विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े। निशु के लिए खतरा हो सकता है लेकिन इस वक्त चूका और जोखिम भरा ये रन दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ यहाँ पर पूर्ण करते हुए स्टेज पर इस वक्त विराजमान गण्यातीत गण्य अतिथि इस वक्त हमारे साथ मौजूद इस मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए जो कि इस वक्त स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और निश्चित रूप से एक बेहतरीन माहौल इस मैदान पर छा चुका है। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए दिस टाइम इट माइट बी इन ट्रबल फॉर द बैट्समैन द स्ट्राइकर एंड द थ्रो वाज डायरेक्टली टू द स्टंप्स बट द थ्रो वेंट जस्ट वाइड ऑफ द स्टंप्स एंड द बैट्समैन गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल 1+1 2 runs added 9 on the board for losing 2 wicket और गेंदबाज इस बीच चिदन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए निशु जो कि इस वक्त सामना करते हुए लेग स्टंप से बाहर और एक बार फिर से वाइड का इशारा। He really searching for his right length line in this situation. They gone through for a quick single and get it comfortably. The ball was still in play and because of that the batsman gone through for a quick single and with a couple runs the scoreboard moving up to 11 on the board. Just 6 to get for victory. Agli गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। This time gone for a big one, not succeeded. Well collected by the fielder and they completed a single run very safely in the end in the face of bye. और 9 रन एक्स्ट्रास के रूप में प्रदान कर चुके अब तक ईडन कोडंगे के गेंदबाज जो 12 रन दुर्गा कुंजाड़ी के खाते में बन चुके उनमें से 9 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में प्रदान कर चुके गेंदबाज ईडन कोडंगे के। Lofted and this time he just finished the match in a style with a maximum. Fantastic struck came from the bat of Nishu and a comprehensive victory for Durga Kunchari by 8 wickets with more than 4 overs to spare. They reached the target in just 1.3 overs for losing 2 wickets and they won the match comprehensively by 8 wickets. Big margin victory for them against Eden Kodange and with that victory against Eden Kodange, Durga Kunchari are through to the next round of this competition. Next match, one more good match is now coming up. Lucky Star Run Tadka will take over Green Lions Bengre. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart and also complete the toss procedure immediately. Match number 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament is now going to start between Lucky Star and Tarka and Green Lions Bangalore. For that, I would like to invite once again my friend Mr. JP Jayaprakash for the next further comments in his beautiful words in English. Thank you. Dhanyavad.
ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಂತರ ಟಾಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರೋ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ರೋಚಕದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ. come in front of the stage for the toss procedure.
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ್ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ to this prestigious cricket tournament, Veera Trophy 2026. Welcome to you, heartily welcome to you, sir, once again to this prestigious cricket tournament. Thank you. Thank you, Mr. Gopi. And this match played between Lucky Stars as well as Green Lions Bengare. Green Lions Bengare winning the toss and electing to field first. The two openers turn in the middle this time. First delivery has been smashed over the top of the bowler's head. The ball running towards the boundary line. It has been kept in play just before it crosses the ropes. 2 runs on the board of the very first delivery. The batsman second time it is over. Comes and balls are swept down the corner. A little bit of fumble. They are coming back for the run and it results in a run out. The first wicket falls in the form of run out. So Green Lions Bengare getting that breakthrough they wanted, resulting in a run out. So 2 for the loss of the first wicket. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಯೋಜಕರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ವಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026. So the new man who has made his walk out to the middle is jersey number 77 Mansoor. To face the third delivery down the leg side. No signal from the umpire. That means it's a legal delivery. The bowler Sammy. This time it's been driven towards the long on region for a single. Still a couple of more deliveries remaining in the over. Mansoor is off the mark. The batsman on strike is Saudik. To face the 5th delivery of the first over. Beautifully balled. Completely beating the batsman. A little bit of fumble by the keeper, but no chance of any run that occasion. The score still remains on 3 on the board. We are in the first over, final delivery coming up of the first over. Chami
Comes and balls. Good delivery and equivalently well played, but it's in the air and it's been taken. Second wicket falls in the very first over. The two openers are back into the pavilion. He says once again a shaky start for Lucky Star. They have lost both their openers for just 3 on the board. After the completion of the very first over, the score is on 3 for the loss of 2 wickets. So the new batsman now making his walk out to the middle to join Mansoor. Out there in the middle is jersey number 12, Nosher. The bowler to continue the proceedings is jersey number 8. Bowler's name, please. Balls at this time. Mansoor tries to sweep it, but unfortunately not getting the placement here. The dot ball. Tafi. Once again, straight into the hands of the fielder. 2 dot balls in a row. The second over in progress. Good delivery, beautifully bowled. Once again, 3 dot balls now. With that particular delivery in a row against Mansoor, he's batting on 1 of 4 deliveries. Nosher, on the other hand, yet to face a delivery. Rafi bowling the second over this time. Goes for a single. Good running between the wickets. No signal from the umpire. We have to wait for the signal. It's a bye signal by the umpire. So he has referred towards the third umpire. This is a referral from the batter for the wide. Wide not given on field. And the batsman having one chance to refer this tournament. It's a legal delivery called by the third umpire. So just a single added to the total in the form of a bye. So the score moves up to 4. And now Nosher is on strike for the first time. Rafi, the bowler, bowls 4 deliveries. Yet to consider a run from the bat. He's coming right arm over the wicket from the far end. Umpire Mr. Pushparaj setting the stumps as the stumps were broken by the keeper. Attempting for a run out, but Nosher was safe in his crease before the bails were removed. Final 2 deliveries left in the over. Umpire Mr. Siraj as well as Mr. Pushparaj are the 2 umpires for this match. Comes and balls. So this time once again the ball deflected towards the fine leg region. No signal. It is from the bat of Nosher. Gets a single on that occasion. The score moves up to 5. A final delivery left of the second over. So it's a very good bowling display here from the bowlers of Green Lines. Inside the power play, restricting the batsman only for just 5 runs with the ball delivery remaining. And it goes for the big one. The ball is in the air and it sails over the boundary line for a 6. The first maximum coming of this match from the bat of Mansoor. And he has broken the shackles there. The score moves up to 11 on the board after the completion of 2 overs, losing 2 wickets. After being put into bat by the captain of Green Lines, Lucky Stars, after a little shaky start here, have managed to come back with that 6. They have just managed to keep the run rate 5.50 after the completion of 2 overs. 11 on the board for the loss of 2 wickets.
The new bowler who has been brought into the attack is jersey number 16, Sarfraz. So Sarfraz continuing the proceedings, bowling the third delivery. Coming right arm, third over in fact for his side and the first of his quarter, and he'll be bowling to Naushir. Score on the board is 11. This time a good delivery, equivalently well played towards the deep mid-wicket region. The ball fielder from the deep comes across, collects it, throws it on a bounce to the keeper, just for a single to Naushir and also to Lucky Star. Run Tadka. Second time in the over. Sarfraz from the far end coming and bowling to Mansoor. Already hit a 6 in the previous over. This time the keeper unable to collect the ball. It was bowled wider from the batsman. Wide called by the umpire. 2 more runs to the total. With that couple, the score now moving up to 14 on the board. Getting some runs on the board and also helped by the bowlers bowling some extras. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. So back to live actions. Sarfraz bowling the second delivery of his over. Coming from the far end, bowling to Naushir. Sarfraz this time was good delivery, beautifully bowled, very well kept by the keeper behind the stumps and removing the bails off. The batter was safe in his crease, no damage done. The score still remains on 14. Losing 2 wickets in the very first over, 1 in the form of a run out. It was the man Shobit was run out this time. Firmly struck. The misfield there by the fielder results in a boundary there. The ball was struck with immense power. The fielder had enough chance to cut it off, but the ball travelling in between the legs of that fielder couldn't bend down at the proper time. The ball travelling in between his legs and crossing the boundary lines. So welcome boundary here for Naushir. The score moves up to 18 with that shot. Comes and balls. Stripes the ball. Up easily played. This time he might be out. Yes, he's gone. The catch has been taken safely. End of Naushir's innings. The wicket falls at the wrong time for Lucky Star. They have lost their third wicket. They were looking good out there in the middle, both Naushir as well as Mansoor. The partnership was just starting to begin. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೋನಿ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So Sean was coming right arm over the wicket. Sarfraz to Sean was just walked in after the fall of
Nausheer's wicket this time. Trying to reverse sweep that one, not making any contact with the ball. The ball is being gathered by the keeper behind the stumps. Dot ball resulting once again. Final delivery coming up of the over number 3. The score is on 18 for the loss of 3 valuable wickets. So dot ball to finish off the over. A wonderful over comes to an end in spite of giving away 7 runs in that over. Also picked up an important wicket of Nausheer. Sarfaraz finishes his quota for first over. And after the completion of 3 overs, the score on the board is 18 for the loss of 3 wickets. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಣೈ ಇವರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಣೈ ಇವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿರುವ ಪದ್ಮನಾಭ ಅನೇಕ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖ್ಯನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಣೈ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ Mansoor. As I just spoke about the reverse sweep specialist Padmanabh, here Mansoor has produced that reverse sweep and he has got himself a boundary. So Jami balls that first delivery of his quarter of second over and he's welcomed to the bowling crease by a reverse shot from Mansoor. The score now quickly moving up to 22. We are in the 4th over. Shan was on the other hand with Mansoor. They have to steady the ship for their team this time, chipping in the air into the vacant region towards the point. Not more than a single result for Mansoor. Happy with the single. Rotating the strike, the left hand and right hand combination. They have to make use of this combination out there in the middle, Mansoor as well as Shan was, because normally we have seen the bowler not able to maintain his line and length when these two type of batters are out there in the middle, the left hand and right hand combination. This time everyone straight line on the ground, just missing the stumps on the non-strikers end. I think the bowler might have got his hand onto that one, a little bit nick onto that one. He was having his hands on his head. Missing the stumps in the non-strikers would have been all end up for Mansoor if the ball had struck the stumps in the non-strikers end. Tries to go for the sweep shot completely. It was balled outside the leg stump. A wide call by the umpire. 2 more runs, 1+1. The score moves up to 26. Still 3 more deliveries left in Jami's over. Extras moving to 5 out of the 26. That means 21 runs are being scored from the bat. Tries to go for the reverse shot this time. The dot ball resulting. Final 2 deliveries left in the over. Chami saw that Shan was trying to go for the reverse shot and bowling a little away from his leg stump as he was early into his shot. Tries to go over the top, completely misjudging the line of that delivery, trying to play across the line. Once again he's been beaten. The ball is collected by the fielder in the short fine leg region. No chance of any run for the batters out there. Score remains on 26. Final delivery of the over coming up. This time goes for the big one. The ball in the air. Might be the end of the innings. Now it's been dropped. The ball landing in between the 2 fielders. A lucky chance there for Shanwaz. Just a single been taken on that occasion by the 2 batters. Shanwaz as well as Mansoor.
That also gets to the end of the over number 4 after the completion of 4 overs. The score on the board is 27 for the loss of 3 valuable wickets. So Jami has completed his quota of 2 overs. He has given away 12 runs. 4 overs completed, just 2 overs remaining intact. That means 12 legal deliveries remaining in the innings for Lucky Star Rantadka to set a target in front of Green Lions Bengare. So the bowler who has been brought into the attack is jersey number 2. Jersey number 8. I think once again it's Rafi to bowl the second over of his quota and the 5th for his side. Coming right arm round the wicket to the left-handed batsman Shanwaz. This time tries to go for the big shot. Unhappy with the shot he has played, not connecting from the middle of the bat. Once again, just managing to get inside half of the bat for a single. We have not seen plenty of big shots, just a 6 and a boundary so far in the innings. That too coming from the bat of Mansoor. He's still out there in the middle. Needs at least a couple of sixes to get some respectable total on the board. This time completely beaten outside the off-stump. A pacey delivery on that occasion from Rafi. Dot ball resulting against the name of Mansoor. This is the 5th over in progress. Just 10 more legal deliveries remaining in the innings for Lucky Star. Down the leg side. This time it's a wide call by the umpire. He's trying to go over the top, but not finding the timing proper. He's not middling the ball. Final delivery left in the innings for Lucky Star. Can he finish off with a glorious shot with a 6 or a boundary, which will be a handy one for his team. This time completely beaten outside the off stump. They're running for a single there, missed by the keeper behind the stumps. It's a bye signal to finish off the over. So over number 6 and also the innings of Lucky Star Rantadka comes to an end. They have managed to score 36 runs in the stipulated 6 overs. That means run a ball they have scored just over 6 runs per over is what required for Green Lions Bengare to win this match and qualify for the next round. After a shaky start at the beginning of the innings, they have managed to get their scorecard up to 36 in the stipulated 6 overs. Thanks for that little cameo from Mansoor, scoring 14 runs, 14 valuable runs in fact. The rest half of this
धन्यवाद जेपी जयप्रकाश। और जहां तक सवाल है इस वक्त 37 रनों का लक्ष्य का 37 द टारगेट फॉर ग्रीनलैंड्स Bengaluru set by lucky star run tarka. And the innings now going to start. Imran and Rafi, the openers, are now comes out to the middle. Shah Nawaz starts the fresh bowling proceedings. Batted first, lucky star run tarka man to score 36 runs in the simulated 6 overs. Good innings played by Mansoor, who top scored with 14 runs. And with his help, they finished 36 for the loss of 6 wickets in the stipulated 6 overs. 37 the target for Greenland's Bengaluru for victory, and their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up from the hands of Shah Nawaz to the right-handed batsman Imran. Rafi on the non-striker end. And the first ball is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार शाहनवाज गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनके पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद थी। गेंद को इस वक्त खेलना छोड़ दिया प्रश्नार्थक तरीके से अंपायर की ओर जरूर देखा, लेकिन गेंद कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सही गेंद इस वक्त घोषित करते हुए और एक बार फिर से गेंदबाज शाहनवाज गेंदबाजी करेंगे इमरान के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। यह गेंद अजवार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया। इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक था इस वक्त बल्लेबाज इमरान के बल्ले से लगता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर इस वक्त 4 रनों पर पहुंच चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 4 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से शाहनवाज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इमरान के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद एक बार फिर से बल्ले का बाहरी किनारा शॉट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची। रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और आखिरकार 1 रन प्राप्त करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर शाहनवाज अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राफी जो कि इस वक्त सामना करते हुए और 2 मात्र खिलाड़ी डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर तैनात बाएं हाथ के बल्लेबाज राफी के लिए और शाहनवाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज राफी सामना करते हुए। यह गेंद ऑन सा बॉल्ड है, जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ्ट ऑफरिंग शफलिंग अक्रॉस द लाइन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली और गेंद सीधे मिड लेग स्टंप पर जा टकराते हुए और इसी के साथ राफी की पारी पर पर्दा गिर चुका है। एक बेहतर गेंद के जरिए शाहनवाज इस वक्त विकेट प्राप्त कर चुके हैं। राफी का फर्स्ट विकेट लॉस फॉर ग्रीन लाइन्स बेंगलुरु। इट्स 5 for 1। Next match, the first match of the second round will be played between Shakthinagara versus Victory 11 Mangalore. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो इस बीच गेंद स्वीप करना 4 रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और शाहनवाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। जहाँ तक सवाल है इस वक्त लकी स्टार रन तड़का के खिलाड़ियों का, तो इस वक्त उनके गेंदबाजों को चाहिए एक बेहतरीन गेंदबाजी अगर ग्रीन लाइन्स बेंगलुरु के बलाढ्य बैटिंग लाइनअप पर उन्हें अंकुश लगाना है तो। और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए
इमरान जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को उछाल दिया, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, बट ही गॉट अ सिंगल, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 7 रनों पर और पहला ओवर समाप्त हो चुका। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, first over mixed start for Greenland Spengler chasing the victory after that target of 37 in 6 overs. They are 7 for the loss of 1 wicket after completion of first over. This is the match number 4 of this prestigious cricket tournament. Vivi Trophy 2026 is now progressing here, which is proudly organized by Veera Venkatesh Cricketer Shakthinagara 23rd years anniversary and the sweet memory of late Sri Padmanabha Shanai. They are organizing this fantastic cricket tournament in this beautiful Nalia Padau School ground Shakthinagara. और आज इस मेगा श्रृंखला का दूसरा दिन का चौथा मैच, पहले दौर का अंतिम मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं। द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स। नौशीर माफ कीजिए, इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया, इस वक्त ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। नौशीर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद, इस वक्त शायद बल्ले का डिफ्लेक्शन हुआ था अंतिम क्षण में, लेकिन विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को पकड़ नहीं पाए विकेटों के पीछे। और जहाँ तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। और नौशीर वाइड फेंकने के बाद एक बेहतर गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं। इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार इमरान, जो कि इस वक्त सामना करते हुए lofted. This time he finds the gap as well. Straight down the ground and it's gone over the fence for a 4 after first bounce. This time pretty well struck in for the bat of Imran. He's got that one right from the middle of the bat and hit that one straight down the ground and between long off and long on fence into the straight hit area for a boundary. Fantastic struck. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन स्ट्रोक लगता हुआ इमरान का, ऐसा कहना पड़ेगा पावर प्ले का फायदा इस वक्त उठाते हुए, जस्ट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द पावर प्ले। और इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार नौशीर, गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार इमरान, जो कि इस वक्त सामना करते हुए एक बार ऑन साइड पर मोड़ा गेंद को इनटू द गैप एज वेल। गेंद का पीछा करते हैं फील्डर डीप मिड विकेट पर, जब तक फील्डर दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, लेकिन गेंद गैप पर गई थी इस वक्त मिड विकेट पर, और डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करे। 2 रनों का इजाफा हो चुका और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। नासिर फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इमरान के लिए, यह गेंद इस बार चिप किया, जस्ट क्लियरिंग द फील्ड। गेंद जाती हुई पॉइंट पर, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। बेहतर फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, काफी तेजी के साथ गेंद पर पहुंचते हुए पॉइंट और बैकवर्ड थर्ड मैन के दरमियान गेंद को इस वक्त फील्ड करने में सफल, और 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके। 15 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। और नौशीर माफ कीजिए, अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। Swings and this time he's got the distance. He just got that one for a maximum. और जहाँ तक सवाल है, गेंद सीधे इस वक्त जाकर टकराती हुई फ्लैग्स झंडे का जो खंबा है उस पर जाकर गेंद इस वक्त टकराई। फ्लैट छक्का, 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और बेहतरीन स्ट्रोक लगता हुआ इस वक्त निहाल के बल्ले से। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 21 in the over number 2nd in progress. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद रन के लिए दौड़ पड़े, नॉट स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा इस वक्त, रन आउट का खतरा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग सौंपी गई है। काफी चतुराई के साथ गेंद को इस वक्त थ्रो किया था इस वक्त शॉर्ट फायर लेग फील्डर ने। नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज
नो स्ट्राइकर एंड गेंदबाज के हाथों में, और गेंदबाज जब विकेट चटका है, वाइड का भी इशारा हो चुका है और एक रन उनके खाते में ज़रूर जुड़ेगा। और देखना है यह है कि बल्लेबाज यहाँ पर बचते हैं या नहीं। No doubt is a call and 2 runs added to the total. 23 on the board for losing 1 wicket in the over number. Just a second in progress. Green line Bengre looking in a good situation. So 16 runs already scored in this over from Nausir. एक गेंद अभी बाकी, वहाँ पर कुछ अपने पैर में दर्द महसूस करते हुए खिलाड़ी और दूसरे खिलाड़ी उनका उपचार करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला वीवी ट्रॉफी 2026 वीरा वेंकटेश क्रिकेटर्स शक्तिनगर ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है। 23वें वर्षगांठ पर दिवंगत श्री पद्मनाभ शणै इनकी मधुर याद में ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करते हुए आज दूसरा और अंतिम दिन इस श्रृंखला का, और मुकाबला इस वक्त जारी है पहले दौर के अंतिम मैच में लकी स्टार रणतरका और ग्रीन लाइन्स बेंगरे के बीच। तो इस वक्त 1 बॉल लेफ्ट। रिटायर्ड हर्ट हो चुके इस वक्त बल्लेबाज, लेकिन स्कोर इस वक्त अच्छा खासा बन चुका है। 23 रन बन चुके हैं और ग्रीन लाइन्स बेंगरे को चाहिए सिर्फ 14 रन विजय के लिए, जबकि इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल और बाकी। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और अंतिम गेंद लेकर नौशीर इस वक्त तैयार। यह गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट and went into the hands of wicketkeeper. 2 overs completed and 16 runs came from this over from Naushir, and after 2 overs green line Bengre looking in a comfortable track, and now it's 23 for 1 after completion of 2 overs. Fourteen runs to get for victory in remaining 4 overs. और नए बल्लेबाज ग्रीन लाइन्स बेंगरे के अत्यंत अनुभवी खिलाड़ी इम्तियाज का आगमन इस वक्त होता हुआ, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज अफरीद, जो कि गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को छोड़ दिया। इस वक्त इम्तियाज ने वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। अब 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। निस्संदेह कमबैक करने के लिए घातक गेंदबाजी की जरूरत इस वक्त लकी स्टार रणतरका के गेंदबाजों को, और ये गेंद इम्तियाज के लिए खूबसूरत स्ट्रोक, आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक इनटू द गैप एज वेल, और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर बढ़ते हुए, और जब तक गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर रोका जाता, थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था इस वक्त इम्तियाज ने, और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और अगली गेंद लेकर अफरीद इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। रन अप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के लाइन मार्क पर जाते हुए स्वस्तिक शक्तिनगर और विक्टोरी 11 मंगलोर के बीच अगला मैच खेला जाएगा। तो इसलिए एक बार फिर से मैं दोनों टीमों से निवेदन दरख्वास्त करता हूँ कि कृपया स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए, और टॉस प्रक्रिया को भी पूर्ण करें। ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ दिया इस वक्त इम्तियाज ने, स्कूप्ड इट अवे ऑफ द टॉस बाय इम्तियाज फॉर अ सिंगल। That single run, the scoreboard moving up to 27 for the loss of 1 wicket.
in the over number 3 in progress. And Green Lions Bangre heading towards to their victory now. Just 10 more runs now they have to score for victory. और सामना करते हुए इस वक्त इमरान ना ड्राइव कर दिया खूबसूरत स्ट्रोक लॉक ऑन की दिशा में. जस्ट अ सिंगल. 28 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. इमरान एक बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और अफरीदी इस वक्त गेंदबाजी करेंगे इम्तियाज के लिए. 28 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. अगली गेंद लेकर गेंदबाज अफरीद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इम्तियाज के लिए. अगली गेंद ये गेंद उछालना चाहा, गेंद निकल चुकी है फाइन लेग की दिशा में. गेंद का पीछा करते फील्डर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे 1 रन का इजाफा हो चुका है. उछाल कर खेलना चाहा था, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद इस वक्त फाइन निकली और 1 रन बल्लेबाज इस गॉट इनसाइड एज ऑन दैट. 29 ऑन द बोर्ड. 2 गेंदें बाकी इस ओवर में. 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज अफरीद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इमरान जो कि 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए ये बाउंड है. जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ, नॉट सक्सीडेड. Extra quicker, much straighter from the bowler, and he just get rid of the batsman. Freed got the wicket, and a good innings came to an end from Imran of 14 runs. 14 runs he scored, including 2 boundaries. And after being playing a good knock, he's backing to pavilion. A second wicket loss for Green Lions Bangre. It's 29 for 2. Adil, the number 5 batsman, is now comes out to the bill. Number 5 batsman, in fact. And now here he is now facing the bowling of Afreed. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज अफरीद और अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार आदिल, जो कि इस वक्त सामना करते हुए अफरीद की गेंदों का दाहिने हाथों पर था विकेट. ये गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया, खूबसूरती के साथ गेंद जाती है फाइन लेग की दिशा में. गेंद तक पहुंचते हुए फील्डर सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा. बेहतर फील्डिंग वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर द्वारा, फाइन लेग पर कहना पड़ेगा फील्डर द्वारा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर. 30 for the loss of 2 wickets, and over number 3 has been came to an end. Now still I must say the equation seems to be much easier for the batting side. Green Lions Bangre, just 7 runs more now they have to score for victory. और जहाँ तक नए बल्लेबाज का सवाल है, अरशद इस बार गेंद को उन्होंने खेल दिया पॉइंट पर और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं. 31 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर, जबकि तीसरा ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर. अगली गेंद, this time driven that one by Imtiaz, but straight to slim down fielder, can't got any run for that stroke, and the scoreboard stays at 31 for the loss of 2 wickets. अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार इकबाल. फुल टॉस, लॉफ्टेड, क्लियरिंग द एनफील्ड, और गेंद इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे फील्डर डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 33 रनों पर. 33 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. This time just gone for a blind stroke, not succeeded. गेंद लगभग जमीन के सहारे आती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. The score stays at 33 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. This time gone for a mighty again misses, and collected by wicketkeeper behind, collected by short third man fielder behind the wicket, and there is no possibility of any run. Still 4 to get for victory. Last time in this over, Iqbal bowls. 2K fantastic over came from Iqbal, who conceded just 3 runs, and after 4 overs, still Green Line Bangre looking on top. 33 for 2 after completion of 4 overs, just 4 to get for victory. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಟರಿ 11 ಮುಗುರೋಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಣೆಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು
ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದೊಳಗಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 overs left, 4 runs required. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार. मंसूर खुद गेंदबाजी करते हैं. पहली गेंद ड्राइव कर दिया पॉइंट पर. मिसफील्ड इस वक्त गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद का पीछा करते हैं फील्डर और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल. couple of runs added to the total and with that couple of runs the scoreboard moving up to 35 on the board. Now just 2 runs to get for victory. मंसूर गेंदबाजी करते हुए इस बार चूके स्लिप कॉर्नर पर गेंद फील्ड कर ली गई. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. 5th ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. मंसूर अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त. This time helicopter shot fade fantastically struck and he just finished the match in a style with a boundary by Arshad. So that's it. Victory for Green Lions Bangalore against Lucky Star Rantarka by 8 wickets, and with that victory they are through to the next round of this competition. So the match number 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, VV Trophy 2026 has been came to an end. Match number 5 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, VV Trophy 2026, is now going to play between Shakthinagara versus Victory 11 Mugrodi. And I request once again all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. And I will back right after the short break.
swastika Shakthinagara tantangan toss kali ini bagus coba kali nanti. Swastik Shakthinagara ಹಾಗೂ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಇಟ್ಟು 11 ಮುಗ್ರೋಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ both teams players to please start the match immediately.
Victory 11 Mugrodi. The two opponents from the side of Victory 11 Mugrodi are walking out to the middle. Before the match started, the toss won by the captain of Shakthinagara, and his decision was to field fast. The two openers with the jersey number 45, it's Azhar as well as Taufik, the two batters making their walk out to the middle. Swastik Shakthinagara winning their match against NFC Tokur by a huge margin. That was the first match of today's play. They won that match by a margin of 40 runs. And also Victory 11 winning their match against NFC Pakaladka. So Azhar as well as Taufik are the two batters out there in the middle. Azhar on the strikers end and Taufik in the non-strikers end. The bowler will be starting the proceedings is jersey number 14, Vinith. So Vinith to start the proceedings. He'll be bowling to the left-handed batsman Azhar, who is on strike. The first ball of the third quarterfinals. Oh, that's comes left arm round the wicket. Goes for the start, very fast delivery. Manju can't get there. He was little slow to react as soon as the ball was played in the air. And a couple of runs of the very first delivery. So Azhar is off the mark with a shaky start, going over the top, but not quite middling it. Lucky for him, the ball landing is the no man's region. That's really thinking, no, the ball was dead, and umpire suggests that you can't take a run for that. So he's been sent back to his batting crease. Azhar, 2 on the board. First ball being bowled of the very first over. Vinith to continue the proceedings, bowling at the second delivery of his over. Coming left arm round the wicket to bowl to Arshad. Full toss delivery, and it's been smashed towards the mid wicket. They're coming back for the second run as well. Two more runs to the total. With that couple, the score moves up to 4 on the board. This time, Vinith. Again, balls. A good delivery this time. A very good comeback after being taken for 2 runs of the first 2 deliveries. 4 runs of the first 2 deliveries. In fact, the third delivery we bowled as a dot ball against Azhar, the left-handed batsman who is on strike. Good delivery, beautifully bowled once again. Back-to-back dotted deliveries here. Vinith, the captain, having plenty of hope on this bowler. They have some good strike bowlers in their side. Comes and balls. This time a flick of the wrist. Once again off the toes. This time just for a single. With that single, the score moves up to 5 with the final delivery remaining of the first over.
Coming left arm round the wicket from the far end. The field adjusted a little bit. We can see Manjunath in the deep mid wicket region, and also a long off the two fielders outside the 30-yard circle for the first 2 overs. This time, loud appeal from the keeper behind the stumps, Shailesh. Trying to play with the mind of the umpires. Umpires are very strict on those decisions. The ball would have gone on to miss the leg stump, says umpire Pushparaj. That's the completion of the over. Over number 1 comes to an end after the completion of the first over. The score on the board is 6 without loss after being put into bat by the captain of Shakthinagara. So the bowler who has been brought into the attack to bowl the second over, I think it's Mitesh, who bowled a magnificent over in the first match, picked up 3 wickets in the very first over. He'll be bowling to Taufik. Was just faced one delivery, the last ball of the previous over, getting a leg by and keeping the strike for the next over. Mitesh this time, right arm over the wicket, comes and bowls. Good delivery, beautifully bowled. What a delivery that one. I think that might have caught the outside edge of the bat of Taufik. And a missed opportunity there from Shailesh behind the stumps. Looking at the reaction of the bowler as well as the fielder in the short third man region, definitely there was an thickish outside edge. This time goes for the big one, up in the air. Fielder comes underneath it and takes the catch neatly. That's the end of innings for Taufik. He's out without troubling the scorers. Once again among the wickets is Mitesh. He has made that habit of picking up wickets in his very first over. So the dangerous Taufik is back into the pavilion. And the new batsman to replace him is number 20, Arafat. So Arafat is walking out to the middle after the downfall of Taufik. The second over in progress. Four deliveries remaining in the power play. He'll be on strike to face the third delivery from Mitesh. Wants to have a look at the ball. Sarafa. Coming right arm over for the third time in the over. The first over of his quota. Mitesh to the new batsman Arafat. Comes and balls up. Once again the ball is being played towards the deep mid wicket region. Manjunath, the fielder there, not more than a single will result for Arafat and also for victory 11 Mugrodi. So with that single, the score moving up by 1 run. 7 on the board for the loss of one valuable wicket, that is of Imtiaz Taufik, in fact, who is back in the pavilion. The batsman now on strike is the left-handed batsman Azhar. Goes for the mighty heave. This time the ball running towards the deep. Very well fielded, very good piece of fielding. They are lightning faster in the outfield. The fielders of Shakthinagara has really saved a couple of runs for his team. Running across one hand field. Just look at that in the replay as well. Can make out that the fielder had to run at least 15 to 16 yards towards his right. This time driven firmly. Chance of a run out. Oh, that direct hit what was required, and that would have been the end of Azhar's innings. Lucky for him, the ball not finding the timbers in the non-striker's end. One more run to the total. Final delivery coming up of the over number 2. And the score on the board is double figures 10. Arafat to face the final delivery of Mitesh over. Already picked up a wicket in this over. This time down the leg side, very well kept by the keeper Shailesh on that occasion. It's a bye signaled by the umpire. A little bit of fumble that allows the batsman to go for a run.
And in the form of extra, the score moving up to 11 after the completion of 2 overs. 11 for the loss of 1 wicket. Put into bat by the captain of Shakthinagara. Victory 11 have managed to score 11 runs in the first 2 overs. 5.50 runs per over is what the run rate maintained by Victory 11 Mugrodi. And once again, it's Vinita who has been brought back into the attack to bowl his quota of the second over and the third for his side. The left arm round the wicket to the right-handed batsman Arafat, who is on strike. Slow straight. Coming left arm around the wicket, comes and balls to Arafat. Arafat, reverse sweep there. Once again, the fielder running very hard, taking that ball. Chance of a run out in the non-strikers end as well, but they are appealing for a run out in the strikers end for the second run. And it's a third umpire referral from umpire in the square leg. He has referred towards the third umpire. The ball was shy at the stumps. Just wants to confirm that whether the batsman had landed his bat inside the crease. Third umpire, Mr. Siraj, having a good look. Having a look there, the ball hitting the stumps in the striker's end. Shailesh shiring at the stumps. And the third umpire gives the decision that the batsman is short of his crease and he has to make his walk back to the pavilion. So run out resulting. So just a single to the total, resulting in a run out of Arafat. Attempting for that second run, and good thinking there from the keeper Shailesh, having a go at the stumps, hitting it on the full, and it was a very close decision, just by a couple of inches the bat behind that crease, and Arafat has to make his walk back to the pavilion. The new batsman is Rahul. Score on the board is 12 for the loss of 2 wickets. Man out is Arafat. Run out, attempting to take that second run. A very good piece of fielding by Mitesh. It was firmly reverse swept by Arafat. The ball was travelling towards the third man boundary. Mitesh running behind that one, cutting off and throwing the ball towards the keeper. And keeper, it's a fumble, and that's a boundary. This is not at all what the fielders of the captain of Shakthinagara would want his fielders to do. The final moment, getting a nasty bounce, and the ball beating the fielder and travelling over the lines. So boundary for Rahul of the very first delivery. The score with that boundary moves up to 16 on the board. Unfortunate for the fielder there. The ball might have hit some of the stones in the outfield. This time once again down the leg side. It's a wide called by the umpire. One more run added to the total in the form of extra. The score moves up to 17. This is the first wide of the innings, along with the one leg bye as well as a bye. So balls, good delivery, beautifully balled from
bowler leg by signal by the umpire. One more run added to the total in the form of extra. The score moves up to 18. Third over in progress. Still 3 more deliveries to go in the over number 3. We have already come to the end of the power play. 12 runs have been scored of the first 2 overs. Couldn't make much use of those power play restrictions. 3 deliveries left in the over number 3. And Vinith is the bowler who will be coming right arm, left arm rounder. Chance for an out there, missed by Sailesh. They're coming back for the second run. Very good running between the wickets by these 2 batters out there in the middle. Azhar as well as Rahul. I think it was off the bat from Azhar. Yes, no signal from the umpire. That means it was off the bat. So 2 more runs to Azhar and 2 more runs to victory 11. Score was up to 20. 8 runs already considered of the first 4 deliveries. Still 2 more deliveries to go. Reverse shot, gets the top edge and he's gone. This time he gets the revenge for that. So Vinith picks up the wicket, the crucial wicket of Azhar. Getting the top edge and the ball scooping high up in the air. Ritesh, the man, the short fine leg region, straight into his hands and he will not miss those catches. End of innings for Azhar. The score on the board is 20 and they have lost 3 wickets in the process. So Junaid, the man making his walk out to the middle to join Rahul, who's batting on 4 of 2 deliveries. He'll be facing the final delivery of the third over, that is of Vinith. Can't afford to give away more runs. Anything around 40 to 45 will be a handy score in this ground. That too in the afternoon session. It's very hard. The wind blowing along with the ball in the direction of the batter. And also sometimes across the pitch. This time drives the ball, handsome looking shot towards the extra cover region, not more than, it's an overthrow there, no one backing up. They're coming back for the second. Will they come back for the third? They're running and 3 runs are quite comfortably taken. This should have been just a single, resulting in 2 extra runs and 3 more runs are added to the total and 3 runs to Junaid. And after the completion of over number 3, the score on the board is 23 for the loss of 3 wickets. 12 runs coming up that over from Vinith. And 2 wickets falling as well. 1 in the form of run out and 1 caught. Man out, run out was Arafat. The next one to be dismissed was Azhar, caught by Ritesh. And the score on the board is 23. Once again, it's Mitesh who is being brought into the attack. The captain finishing off with the quotas of his 2 strike bowlers, Vinith as well as Mitesh. Wants him to get 1 or 2 wickets in this over. Mitesh, normally known to pick up wickets, this time balls a good shot, beautifully played. He has bisected the gap between the deep mid wicket as well as the long on. Perfect shot, perfect cricket shot. And Junaid is off to a flyer. Is a 7 of just 2 deliveries he has faced. And the score with that boundary moving up to 27. So Mitesh is being welcomed to the bowling with the boundary of the very first delivery. It will be a psychological effect on the bowler if you have been struck for a boundary of the very first delivery. This time balls a good delivery. Once again it's been played towards the deep mid wicket. Deep square leg fielder comes across, cuts the ball. Meanwhile, the batsman had enough time to cross over for a single. Just a single to the total. With that single, the score moves up to 28 on the board now. We are in the over number 4.
This is the third quarter final of this prestigious VV Trophy 2026 organized in the sweet memory of late Padmanabh Shanai. Good delivery, beautiful comeback from Mitesh. This time Rahul had no idea of that particular delivery. It was bowled with the pace, much more pace compared to the first two deliveries of the over from Mitesh. It disguised a slower delivery also in between. That is a speciality of Mitesh over. You will not know which way the ball is going to turn. Has picked up several wickets in the just concluded KPL season 11. He was adjudged as the man of the series. One wonderful stop from Vinith, which would have been certainly a boundary if he had missed that one. Yes, sir, saved 3 runs for his team. So one more run added to the total. The score moves up to 29 with still 2 more deliveries to go in the over. Mitesh. This time will be bowling to Junaid. Batting on 8 of 3 deliveries. This time comes Mitesh, comes and balls. Obviously played once again. The ball not carrying on to the fielder there. Just a single more to the total. The score moves up to 30. Final delivery of the over number 4 coming up. I think there Rahul wants a change in the bat. The final delivery of the over number 4 coming up. 13 legal deliveries remaining in the innings for Victory 11 Mugrodi. They have managed to score 30 of 3.5 overs. Mitesh comes and balls this time to Rahul. A wonderful delivery, Yorkland delivery, and he's gone, run out. So that's the end of Rahul's innings. Run out, trying to take that single. The call was given by both the batters. Unfortunately, Rahul couldn't make it towards the non-strikers end. The bowler on his own followed through, shiring at the non-strikers end, and Rahul was short of his crease. He is back into the pavilion after scoring 5 runs of 5 deliveries. Wicket number 4 falls at the score of 30 on the board. The partnership of 10 runs comes to an end between Junaid as well as Rahul. They scored 10 runs of 10 deliveries. Unfortunately, it's Rahul who has to make his walk back to the pavilion. The next batsman is Jabir with the jersey number 10 walking out to the middle to replace Rahul, and he'll be joining Junaid, who is already there in the center. Junaid has seen a good partnership between him and Rahul. Unfortunately, Rahul is run out. So the 5th over from the side of Swastik Shakthinagara. It will be bowled by Ritesh. Manisha, in fact, I beg your pardon, Manisha will be bowling the 5th over and the first of his quarter. Coming right arm over the wicket from the far end, Prakash Kumpala, and he's bowling to the right-handed batsman Jabir. Has made he has just walked out to the middle after the fall of a wicket of Rahul. Clean him up. Beautiful delivery to the first new batsman here. The pressure to the wicket, and Manish has picked up the wicket of Jabir with a stunning delivery. Right on the money. The middle stump was hit. Jabir going for the slog shot there, completely misjudging the line of that particular delivery and finding his timbers being broken. So Manish picks up the wicket of the very first delivery of his over. The wicket number 5 falls. Half of the side of Victory 11 is back in the pavilion. So 30 for the loss of 5.
Man out, Jabir and Deepak. He's a new man who has made his walk out to the middle to join Junaid. Manish to ball. The second delivery already picked up a wicket of the very first delivery of his over. The stunning delivery. Going for the slog shot was when this time tries to sweep that one. Just manages to get a single. So with that single, the score moving up to 31, and Deepak also gets a single against his name. Opens his account with his cheeky shot. So Manish, third time in the over, will be bowling to Junaid, who's batting on 9 of 4 deliveries. Legal deliveries remaining in the innings for Victory Love and Mangalore. This time outside the off stump. It's a wide call by the umpire. One more run to the total in the form of extra. The score moves up to 32. Right arm over the wicket. Bowling the third over. This time wrapped on the pads, a loud appeal. The ball would have gone on to miss the leg stump, says umpire Mr. Pushparaj. It's a leg by signaled. One more run added to the total in the form of extra. The score moves up to 33. So first dot ball against the name of Junaid. Out of the 6 deliveries he has faced. Manish, 4th time in the over. From the far end. Bowling to Deepak. Sweeps it. Tries to place the ball towards the fine leg, but unfortunately can't able, but fumble there by the fielder allows the batsman to come back for the second run. 2 more runs to the total. They're very quick between the wickets. All the players, all the batters of Victory Love, and they're very quick to react to any misfield. A little bit of fumble by the fielder. They will be running for that extra run. Each know the importance of each and every run. Good shot. Flick up the wrist, on the toes. Towards the deep mid wicket before the fielder collects the ball. The batsman will be happy with only a single. The score moves up to 36 on the board with the final delivery remaining of the 5th over. Coming right arm over the wicket. They picked up the wicket of Rahul of the very first delivery. This time drives the ball. Handsome looking shot straight down the ground. The fielder he collects the ball. The batsmen are coming back for the second, and they have completed the run very easily at the end. So 2 more runs to Junaid. So after the completion of 5 overs, the score on the board is 38 for the loss of 5 wickets. 38 for 5. The bowler to ball the final over from the side of Swastik Shakthinagara will be Ritesh. He'll be bowling the final over for his side. That means 6 legal deliveries unless the bowler bowls any extras. 6 legal deliveries remaining. And Ritesh coming right arm over the wicket, bowling to Deepak. Tries to chase the banana, stepped. Deepak is gone. Wicket once again of the first delivery of the over. This time it's of the important wicket of Deepak. 38 for 6. 5.1 overs been bowled. So he is back into the pavilion, scoring 4 valuable runs for his team.
The new man is Nasi. Nasir. This is number 17 has made his walk out to the middle with just 5 deliveries remaining intact for him. Goes for the reverse shot completely, not the throw, the chance of a run out once again. The ball was shied at the stems on twice the occasions, but none of the occasions the ball hitting the stems. An extra run being provided for the opponents. 39 on the board. More importantly, the strike has been rotated and Junaid is back on strike. The captain of Victory 11 will be wanting Junaid to be on strike as much as possible with the 4 legal deliveries remaining in their innings. Ritesh. Was firmly struck straight down the ground towards the long off. They're coming back for the second, but deciding against it. Just a single more to the total. Down the leg side, wide +1, 2 more runs to the total. Gets outside edge of the bat. Gets a single is Junaid. Final 2 deliveries remaining in the innings, and the batsman now on strike is Nasir. This time wrapped on the pads, loud appeal for LBW. It's been put down by the umpire. They think it's a little bit of inside edge of the bat. Yes, sir. So 1 more run to the total. The score moves up to 44. Can Junaid finish the innings with a 6 and get the half century score on the board? 44 on the board. Final delivery remaining goes for the mighty heave. Just a single might be run out as well. We have to wait for the signal from the umpire. In the non-striker's end, it's a referral towards the third umpire. Have to wait. The bails were removed in the non-striker's end. Umpires asking for the volunteers to please go out and have a little bit of cleaning of the wide lines. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ it's a not out called by the umpire. So a single more added to the total of the final delivery. That means that they have managed to score 45 runs. So they have ended up scoring 45 runs in their stipulated 6 overs. That means the target is 46 of 36 deliveries. 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಜಯಗೊಳಿಸಲು. 36 deliveries, 46 is what required, and change in the committee box. Change in the committee box. I would like to call upon my close friend as well as a wonderful commentator who will be the opening of the microphone for the rest half of this particular match where Swastik Shaktinagara need
46 runs of 36 deliveries. He'll be taking you towards the end of this particular match. And welcome Mr. Gopi onto the microphone. Thank you. धन्यवाद जेपी जयप्रकाश। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्वस्तिक का शक्तिनगर का, तो इस वक्त उनके सामने लक्ष्य है 46 रनों का, 46 टारगेट। एंड ओपनर सामना कम्स आउट टू द मिडल। शैलेश एंड मंजू और राहुल गेंदबाजी शुरू करते हैं पहली गेंद, और इस बार विकेटें उखाड़ चुके हैं सारे फील्डर अपील करते हुए अंपायर से, लेकिन अंपायर कहते हुए कि जी नहीं, गेंद बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद था जब अपने विकेटें उखाड़े थे, बेल्स उड़ाए थे, तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। और शैलेश अपनी पहली गेंद पर बच चुके हैं और 46 रनों का लक्ष्य, 46 टारगेट फॉर स्वस्तिक का शक्तिनगर हैव टू स्कोर अगेंस्ट विक्ट्री 11 मुकरोडी। और गेंदबाज राहुल इस बार जस्ट गॉन फॉर माय टीम, नॉट सक्सीडेड। आई थिंक इज गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। जिस तरीके की कोशिश इस वक्त विकेट कीपर ने की थी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बल्ले और गेंद का कुछ हद तक संपर्क हुआ था, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाया विकेट कीपर विकेटों के पीछे, और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। दो बेहतर गेंदें शैलेश इस वक्त फेंक चुके अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा। गेंदबाजी करते हुए स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन फ्रॉम द बैट, इज गॉट अ सिंगल। और एक रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है, एक रन बिना किसी नुकसान के। और इस वक्त मंजू स्ट्राइक पर आ चुका है। पहला पावर प्ले ओवर उनके पारेगा इस वक्त प्रगति पर राहुल, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत वीवी ट्रॉफी 2026 के अंतर्गत खेला जाता है, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है वीरा वेंकटेश क्रिकेटर शक्तिनगर ने। और अगली गेंद, यह गेंद मंजू का स्ट्रोक वाइड स्लंग ऑन पर, लेकिन फीडर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर। 2 ऑन द बोर्ड, yet to lose a wicket in the over number first in progress। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का,
दाहिने हाथ राउंड द विकेट. Again, just gone for a mighty, not succeeded, and they gone through for a quick single and get it comfortably at last. 3 on the board to lose the wicket. बेहतर गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज राहुल और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट मंजुनाथ जो कि सामना करते हुए. Just gone for a big one, missing the line completely, but the ball missing outside the leg stump. अंपायर ने सही तरीके से इसे नकार दिया. पहले ओवर की समाप्ति. Fantastic over came student from Rahul who conceded just 3 runs from the first over. First power play over और 3 रनों के साथ बेहतर शुरुआत इस वक्त कर चुके हैं गेंदबाजी में राहुल और धीमा शुरुआत कर चुका है स्वस्तिक शक्तिनगर पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद. It's 3 for none after first over. So the bowler starts a fresh proceedings. First ball of his fresh over is now coming up. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए शैलेश सामना करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट. चांस फॉर द कवर पॉइंट फील्डर जुनैद अंडरनीथ इट एंड ही नेवर मिसेस. And this is the wicket number 1 fall on. Again this वक्त शैलेश ने उछाला था स्क्वायर ऑफ द विकेट लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट और गेंद हवे में उछली और कवर पॉइंट पर जो जुनैद फील्डर था पीछे की ओर हल्के 3-4 कदम जरूर उन्हें जाना पड़ा लेकिन एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल. जुनैद का कैच शैलेश को पेविलियन का रास्ता दिखा चुका है. 3 रनों पर पहला विकेट खो चुका है स्वस्तिक शक्तिनगर. New batsman is now comes out to the middle और नीतू पट्टे नए बल्लेबाज और इस वक्त दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज ये गेंद नीतू के लिए परफेक्ट लेग कटर गेंद थी इस वक्त और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद इस वक्त की थी गेंदबाज ने और रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज जाबीर इस बार अजीब तरीके से गेंद को खेल दिया. इस वक्त गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में डीप स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. पहले सोचा था गेंद को रिवर्स शॉट खेला जाए लेकिन देखा कि गेंद लेग स्टंप पर आ रही है. अजीब तरीके से गेंद पर अपना बल्ला उड़ाया और गेंद को खेल दिया अजीब तरीके से. इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर 2 रनों के लिए 5 रन बन चुके हैं और जाबीर एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे नीतू पट्टे के लिए. और अगली गेंद लेकर तैयार. रिवर्स शॉट एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लेकिन इस बार स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं और एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. 1 more run added to the total 6 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. जाबीर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त स्वस्तिक का शक्तिनगर की पारी में जारी है और मंजुनाथ जो कि आक्रामक का बल्लेबाज के रूप में जाने जाते इस वक्त सामना करने के लिए तैयार जाबीर की गेंदों का. इस बार गेंद को उछाला है मंजुनाथ ने लेकिन जी हाँ गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्लेड दैट वन with the wind and got that one for a maximum. This is an outstanding struck effortlessly played by Manjunath and he's got that one for a big 6. 12 on the board और ज़रूरतमंद छक्का इस वक्त लग चुका है मंजुनाथ के बल्ले से और जैसे ही छक्का लगा स्वस्तिक का शक्तिनगर के खिलाड़ियों के डगआउट से इस वक्त शोर शराबा इस वक्त सुनाई दिया और प्रशंसा करते हुए वो मंजुनाथ की इस छक्के के लिए जो उन्होंने झड़ाए पिछले गेंद पर और इस ओवर में अंतिम बार जाबीर
तैयार, दाहिने हाथों पर था विकेट। पावर प्ले खत्म होने से पहले की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर था विकेट। अगेन द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम 2 scorer and it went over the fence for a maximum consecutive success for मंजुनाथ। और इन 2 छक्कों की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा स्वस्तिक शक्तिनगर are now back in the game. 18 on the board, 15 runs came from the last over from Jabir. Now, straight away coming back to the equation, 46 minus 18, 28 to get in remaining 4 overs. That means in remaining 24 deliveries. The required run rate straight away coming down to exactly 7 runs per over. और 2 छक्का लगातार मंजुनाथ का निश्चित रूप से स्वस्तिक शक्तिनगर की भटकी हुई गाड़ी को बैक ऑन ट्रैक सही पटरी पर लाकर खड़ा करने में सफल हो चुका है। और 2 पावर प्ले ओवर समाप्त हो चुके हैं। और देखते हैं अब फील्डर से जो कि मैदान पर छाते हुए अब बल्लेबाज किस तरीके का बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइकर एंड का, तो नितिन पटे जो कि इस वक्त सामना करते हुए, जबकि गेंदबाज राहुल अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार। नंबर 4 की जर्सी इस वक्त पहने हुए राहुल। और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, जबकि ऑफ साइड पर कोई डीप कवर पॉइंट नहीं। अब लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर जाते हुए बिल्कुल सीधे, बल्लेबाज नितिन पट्टे जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, और गेंदबाज जाबिर, माफ कीजिए राहुल, ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर था विकेट गेंदबाजी करते हुए। फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम राहुल, just gone for a mighty, have not succeeded. The ball getting his leg off the bat and a bye. No, in fact, no contact between the leg and the ball. The ball flicking out of the wicketkeeper's hand at the last moment, and the batsman crossed over for this single. And with that single run, the scoreboard moving up to 19 for the loss of 1 wicket at the start of the 3rd over. Jabir अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। रिवर्स शॉट delicately played. This is a fantastic strike और इस बार गेंद को रोकने में सफल। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्डर अपने पैर के जरिए बेहतर तरीके से, और इस बेहतर फील्डिंग की बदौलत 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। बेहतर स्ट्रोक था मंजुनाथ का, लेकिन उतनी ही बेहतर फील्डिंग इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्डर ने की, अपने पैर के जरिए गेंद को ढकेला सीमा रेखा के अंदर, और 2 रन बल्लेबाज यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। राहुल एक बेहतर लेंथ तोलान के साथ गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। धीमी गेंद, full toss, not connected that one properly, but this time he's just got a single. Just change of pace परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद इस वक्त फेंकी थी, और इस धीमी गेंद पर रिवर्स शॉट खेला जरूर, लेकिन स्ट्रोक्स में उतना दम नहीं, और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 22 on the board for losing 1 wicket. राहुल अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को इस वक्त क्या शॉर्ट फाइन लेग के दिशा में गेंद फील्ड होती हुई 1 रन तोड़कर पूर्ण कर चुका, लगभग तरवाल की तरह इस वक्त बल्ले को उन्होंने घुमाया था, और आखिरकार अंतिम क्षण में गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जा चुका है। 23 रन 23 on the board, still the same number of runs they have to score for victory in remaining 20 deliveries. और राहुल मंजुनाथ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार पैरों पर गेंद टकराई, 1 रन मिलेगा जरूर। Just they got a single. It's off the legs declared by umpire, and with that leg run, with that leg by run, the scoreboard moving up to 24 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज राहुल, और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार नीतू सामना करते हुए, और साथ ही लेग स्टंप and dot ball to end the over. Good over came to an end from Rahul. Also a good spell came to an end from him after 3 overs. Still the equal battle is now on. Swastik Shakthinagara managed to score 24 runs in the first 3 overs for losing 1 wicket. 22 to get from remaining 18 balls. Now that means in remaining 3 overs with a required run rate of exactly 7.33 runs per over, and still they got 9 wickets kept intact. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಚತುರ್ಥ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ದುರ್ಗಾ ಕುಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಂತೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So back to this game, the equal battle is now on. गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए, the bowler starts the fresh proceedings. Fantastic live coverage we are just watching here on Bedra Media under the great leadership of Mr. इरफान बेद्रा. और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट देखते हुए, जो इस वक्त बेद्रा मीडिया कर रहा है वीवी ट्रॉफी 2026 के अंतर्गत. रक्षित गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और सामना करते हुए इस वक्त मंजुनाथ, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद का स्क्वायर लेग के दिशा में फील्डर तोड़ कर रहा है. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका लेग बाय के रूप में. 25 रनों पर 25 for the loss of 1 wicket. 21 to get from remaining 17 balls now. This is an absolutely fantastic match is now progressing here. The equal battle is now continuing here. और रक्षित गेंदबाजी करेंगे नीतू पट्टे के लिए. अगली गेंद स्वीप करना चाह, बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी के कीपर मिस अ चांस फॉर an out at the last strike run, but the ball stuck to the back of the batsman, and because of that they crossed over for this single, and with that single run the scoreboard moving up to 26 by का इशारा 26 for one exactly 20 runs required from 16 deliveries. और गेंदबाज इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. मंजुनाथ बैक ऑन स्ट्राइक, इज बैटिंग ऑन 16 इंक्लूडिंग 2 मैसिव सिक्सेस. अंपायर कुछ कहते हुए मंजुनाथ को इस कुछ नियम के बारे में, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त कुछ समझाने के बाद अंपायर पुष्पराज अपने स्वस्थान पर लौटते. बेहतरीन अंपायर का पैनल इस श्रृंखला के लिए नियुक्त किया गया है. श्रीमान पुष्पराज, श्रीमान प्रदीप कोठारी और श्रीमान श्रीरज कुंपला इस श्रृंखला के लिए अपना अंपायरिंग का कार्यभार बखूबी अदा करते हुए गेंद को उछाल दिया. इस वक्त लंगोन सीमा रेखा से अंदर गेंद को रोका गया बेहतरीन तरीके से. दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेव मेड बाय द वाइडिश लंगोन फील्डर. जस्ट वी हैव टू चेक इट. और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा, आखिरी मौके पर जैसे गेंद उनके सिर के ऊपर से गुजरे, गेंद को उन्होंने ढकेला सीमा रेखा के अंदर. लेकिन देखना यह है कि जब गेंद को उन्होंने ढकेला था सीमा रेखा के अंदर, तब उनका शरीर का कोई अंग सीमा रेखा से टकरा चुका था या नहीं. तीसरे अंपायर इसकी जांच यहां पर करते हुए. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರು K19 MM 1661 K19 MM 1661 ಈ ವಾಹನದ ಈ ಕಪ್ಪು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇವ್ಡ್. और ದಯವಿಟ್ಟು K19 MM 1661 ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೈದಾನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಾಹನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. K19 1661 ಈ ವಾಹನದ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರಿನ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So next one from the bowler balls out Sadio stump. This time driven that one down to wide. He's long on fielder starting just little deep side bit of fumble there, and the batsman come back for the second run. This could be trouble, and this time I think it's gone. Manjunath is backing to pavilion. Fumble happened at long on, and because of that the batsman come back for the second run. लेकिन मंजुनाथ जिससे पहले के क्रीज पर पहुंचे थ्रो पहुंचता हुआ इस वक्त सीधे विकेट कीपर के हाथ में, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट झटका दिया. मंजुनाथ की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है. He's out for 19, including 2 massive sixes he scored,
and a second wicket loss for Shakthinagara in the total of 29. Now it's 29 for 2. 29 for the loss of 2 wicket. Now 17 runs to get. 17 runs to get from 14 balls. 14 गेंदें 17 रन चाहिए. तो मंजुनाथ का विकेट इस वक्त गिर चुका है. न्यू बैट्समैन नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. मसूद एक और बेहतर खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर मौजूद. स्वस्तिक शक्तिनगर की ओर से 14 गेंदें बाकी 17 रन चाहिए. बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी है. और मंजुनाथ आउट फॉर 19 inches 10 deliveries he scored with a strike rate of exactly 190. It's back to pavilion for being a fantastic knock for their side. गेंदबाज इस बीच रक्षित again swings and this time he finds the gap and it's gone over the fence for a maximum in a flatter version. और डीप स्क्वायर लेग पर जो फीडर खड़े हुए थे उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया इस वक्त गेंद ने. और गेंद इस वक्त काफी तेज रफ्तार के साथ फ्लैटर वर्जन पर ऑन साइड पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए. तो ये छक्का मसूद ने लगाया और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा समीकरण काफी हद तक आसान बन चुका है स्वस्तिक शक्तिनगर के लिए. नाउ बॉल रिमेनिंग 13, रन्स रिक्वायर्ड 11. Thirteen balls left, 11 runs required, and what a fantastic start for Masood with a 6 in his very first delivery that he faced. और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ. फील्डर पीछे तैनात. एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. एक दूसरा रन लेना चाहते हैं. राउंड पर है और रन का खतरा लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और 1 रन का इजाफा. और बल्लेबाज को पहली चेतावनी फर्स्ट वार्निंग दी गई अंपायर द्वारा पिच के बीच दौड़ने की वजह से. बल्लेबाज मसूद को अंपायर प्रदीप कोठारी इस वक्त चेतावनी वार्निंग दे चुके हैं. 1 रन का इजाफा 36 for the loss of 2 wickets. 4 overs completed, 10 required from the last 12 deliveries. That means in the remaining last 2 overs. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. अनीश गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. जहां तक सवाल है स्ट्राइक का तो मसूद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 12 बॉल्स लेफ्ट, 10 रन रिक्वायर्ड. कम बैक करने के लिए गेंदबाजों को इस वक्त डॉट गेंदों की सख्त दरकार लगातार. और पहली गेंद लेकर गेंदबाज अनीश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. मसूद सामना करते हुए. ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया. सेंसिबल, डेलिकेट एंड गुड वर्क. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्रिकेट शोन बाय द बैट्समैन इन दिस डिलीवरी. हल्के से गेंद को टैप कर दिया वहां पर और तेजी के साथ स्ट्राइक रोटेट इस वक्त करते हुए बल्लेबाज मसूद. 1 रन का इजाफा हो चुका है. नीतू पट्टे इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अनीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. अगली गेंद नीतू पट्टे के लिए. अगेन बैक टू फॉलो थ्रू में इस वक्त गेंद को पकड़ने में असफल. गेंदबाज की थोड़ी सी बाईं ओर से गेंद को खेला था और 1 रन का इजाफा. अब ये दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए वो जान चुके हैं गेंदें ज़्यादा है, रन्स बनाने वाले कम हैं और 10 गेंदें बाकी है. इस वक्त 8 रन चाहिए और डॉट गेंदों की तलाश में गेंदबाज अनीश अगली गेंद लेकर तैयार. रिवर्स शॉट सीधे मिसअंडरस्टैंडिंग. दिस एन एब्सोल्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग. और उछल कर इस गेंद को पकड़ते हुए शॉर्ट पॉइंट के फील्डर और आसान सा रनआउट होता 1 ऑन स्ट्राइकर एंड पर. So batsman has to go. In fact, Masood Daman dismissed, caught by short point feeder of the bowling of Anish and a dot ball bowled. तो 9 गेंदें बाकी और रन चाहिए इस वक्त 8 और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ. इनफैक्ट इट्स अ रनआउट हैपेंड एट द स्ट्राइकर एंड. और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का
तो नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद सामना करते हुए इस वक्त नीतू पट्टे 9 गेंदे बाकी 8 रन चाहिए रनों की सख्त जरूरत बल्लेबाज को जबकि डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त दरकार गेंदबाज को इस वक्त अगली गेंद अनीश इस वक्त नीतू पट्टे के लिए अगली गेंद लेकर तैयार धीमी गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़ दिया लेग कटर गेंद थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और अब वाइड का इशारा करते हुए अंपायर बिल्कुल सही जजमेंट करते हुए गेंद को छोड़ दिया था इस वक्त बल्लेबाज नीतू ने विकेट कीपर के हाथों में और 7 रन अब चाहिए 9 गेंदे बाकी अनीश एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद चूंकि इस वक्त बेहतर गेंद क्विक वन वांटेड रन लेकिन अंतिम क्षण में रन नहीं मिलेगा सो डॉट बॉल बाउल नाउ रिक्वायर्ड रन 7 बॉल्स रिमेनिंग 8 और गेंदबाज अनीश एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और दूसरे फील्डर फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और अनीश इस वक्त तैयार नीतू के लिए अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए ऐसा कहना पड़ेगा he just muscles that one and have a look at this in the replay just caught that one right from the mid of the bat and lofted that one into the vacant area at straight hit in between long off and long on 43 on the board now equation seems to be much easier for the batting side 3 to get from remaining 7 balls और कहना पड़ेगा अब कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही विक्ट्री 11 मुगलोडी को इस मैच में वापस ला सकती है lofted and he just finished the innings just finished the match in a style in fact with a 6 so fantastic struck came to the bat of Neetu Patte and Swastik Shakthinagara read the target with exactly 1 over to spare they read the target of 46 runs in 5 overs for losing 3 wickets and they won the match by 7 wickets against victory 11 Mugrodi and with that victory they are through to the semi-final of this competition now the last fourth and the last quarter-final match will be played between Durga Konchadi versus Green Lions Bengre and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. Durga Konchadi ಹಾಗೂ Green Lions Bengre ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ वो मैच अंतिम क्वार्टर फाइनल fourth quarter final match of this prestigious cricket tournament VV Trophy 2026 is now going to start with the clash of Durga Konchadi versus Green Lions Bengre तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ जेपी जयप्रकाश के साथ हम तो खुद मेरे साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जब यहाँ पर ग्रीन लाइन्स बेंगरे और दुर्गा कोचारी की पारी की शुरुआत होगी तो अब वक्त है ब्रेक का विश्राम को ब्रेक थैंक यू धन्यवाद
ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Heartily welcome to Mr. Harish Kumar, Chairman of MESCOM. Behalf of the organizers and behalf of all the spectators, heartily welcome to you, sir, to this tournament, Mr. Harish Kumar, Chairman of MESCOM. Heartily welcome to you, sir, once again to this prestigious cricket tournament. VV Trophy 2026 is proudly organized by Veera Venkatesh Cricket Shakthinagara, Mangalore. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್.
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. It is prestigious cricket tournament. Happy welcome to you, sir. Once again, it is prestigious cricket tournament. Thank you. Right, the match starts between Green Lions Bengaluru versus Durga Konchadi. One more good match is now coming up. The last quarter-final of this prestigious cricket tournament, VV Trophy 2026. First ball comes. Kevin is the bowler. First ball outside the off stump, like that one this time down to extra cover for a single, and with that single now Green Lions Bengaluru are off the mark. Imran off the mark, and now Nihal is now going to face the bowling of Kevin. और केविन इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जबकि निहाल इस वक्त सामना करते हुए यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची. दो कदम आगे जरूर बढ़ाते निहाल ने, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट है. ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया. गेंद को इस वक्त लॉन पर फील्डर रची नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका हाथ जरूर टकराया था. लेकिन गेंद सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. मुश्किल सा मौका इस वक्त वाडिश लॉन फील्डर के लिए है, और अपनी दाईं और दौड़े जरूर 7-8 कदम, लेकिन गेंद तक पहुंचने में असफल. और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतर स्ट्रोक निहाल के बल्ले से लगता हुआ इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. केविन ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइट, ही हैव नॉट सक्सीडेड. बेहतर गेंद इस वक्त. The ball came almost along the ground and went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. फिर से एक बार केविन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर रन्स नहीं मिलेंगे, और इस बार रनों का खतरा. इम्तियाज यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में बल्लेबाज जो थे इस वक्त इमरान नॉन स्ट्राइक रन पर खतरे में पड़ चुके हैं या नहीं देखना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए गेंद सीधे पहुंची थी शॉर्ट थर्ड मैन पर. विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया. गेंदबाज के हाथों में गेंद पहुंची. डायरेक्ट हिट इस वक्त लगता हुआ, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा डायरेक्ट हिट लगते वक्त बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं या नहीं, यह देखना पड़ेगा. तीसरे अंपायर इसकी जांच यहाँ पर करते हुए. तो काफी नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है, और तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. तो अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ वीवी ट्रॉफी विच इज प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय वीरा वेंकटेश क्रिकेट शक्तिनगर मैंगलोर.
the sweet memory of late Sri Padmanabha Shana. They are organizing this fantastic cricket tournament in this beautiful नालियापदा स्कूल ग्राउंड शक्तिनगर. और तीसरा अंपायर जो कि इस वक्त इसकी जांच यहाँ पर करते हुए कि बल्लेबाज आउट है या नॉट आउट, इसका परिशीलन करने के लिए. और देखते हैं यहाँ पर क्या निर्धार वो देते हैं. काफ़ी नज़दीकी मामला यहाँ पर है और बार बार इसकी जांच करते हुए इस वक्त तीसरे अंपायर इंतज़ार है इस वक्त उनके निर्धार का. नो डाउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड. काफी नजदीकी मामला था लेकिन भाग्य बल्लेबाज का साथ देता हुआ और अपने क्रीज पर वापस लौटते हुए बल्लेबाज इमरान. और जहां तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर उनके पारी का प्रगति पर. केविन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर तो विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. Again, fantastic delivery, outstanding one from the bowler, and a fantastic over came to, and just 5 runs came from it, except he conceded 1 boundary in this over, and the other deliveries came in, bowled fantastically. First over completed, steady start for Green Lions Mangalore, 5 without loss after losing the toss and put it to bat by Durga Kunchadi in the 4th and the last quarterfinal match of this prestigious cricket tournament, VV Trophy 2026. Winners of this match will meet Shakthinagara in the second semi-final, and that second semi-final match will coming up live exclusively right after this match in this ground. तो गेंदबाज सहल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त इमरान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ओवर की पहली गेंद लेकर सहल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त, लेकिन शायद अंपायर के आड़े आ गए थे इस वक्त गेंदबाज, तो अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए नो बॉल का इशारा. गेंद लाइंस के बाहर से गुजरी थी इस वक्त शायद, तो इस वजह से नो बॉल यहाँ पर अंपायर घोषित करते हैं. लेकिन बातचीत इस वक्त जारी है खिलाड़ी और अंपायर के बीच, और अंपायर अब स्क्वायर लेग अंपायर की ओर बढ़ते हुए और देखते हैं यहाँ पर बातचीत करने के बाद वो क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं. नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर, और यहाँ पर देखते हैं ये नो बॉल है या नहीं, इसका परिशीलन अब तीसरे अंपायर करेंगे. इट्स अ वाइड ओनली, और वाइड इस वक्त घोषित कर चुके हैं. पहले टिप्पे के बाद गेंद इस वक्त गुजरी थी, और जहाँ तक सवाल है वाइड का, तो वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर. 6 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, सेकंड इनफैक्ट स्टार्टेड. सहल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तो विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, मिड विकेट पर गेंद पहुंची. गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ा, थ्रो पहुंचा, स्ट्राइकर नॉट स्ट्राइकर रन पर, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर. 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले गो इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाज शहल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद बल्लेबाज इमरान के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट अगली गेंद फेंकते हुए, और ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी अपीलिंग फॉर लेग बिफोर प्लम्ब इन फ्रंट गिवन हिम. Plumb in front given by the umpire, and the batsman Imran has to go. Just wanted to loft that one, लेकिन गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ आई थी और गेंद उनके फ्रंट लेग पर इस वक्त टकराई. देखिए किस तरीके से होता है, look at this in the replay, and Plumb, absolutely Plumb in front given by the umpire. First wicket for Imran departs. 8 for 1. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ
ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು ಪದುವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಂತೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ Yatin Kumar, the member of Padwa Friends Club Nantur, Mangalore. Heartily welcome to you, sir, once again to this prestigious cricket tournament. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಫಿ, ದಿ ನ್ಯೂ बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और सहल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को मिड ऑफ की दिशा में. This could be in trouble if they gone through for a run at the last moment, but the batsman kept his back foot, kept his steps back onto his crease at the last moment, and because of that he survived. और जहाँ तक सवाल है गेंद का, तो डॉट गेंद उनके खाते में इस वक्त जुड़ चुका है. दोपहर के 3:30 यहाँ पर बच चुके हैं. लगभग बदली भरा माहौल इस वक्त मैदान पर छा चुका है. धूप उतना तेज नहीं, सूरज को इस वक्त बादलें इस वक्त ढक चुके हैं और इस वक्त अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ. गेंदबाज शहल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. रफी इस वक्त सपना करने के लिए तैयार. शहर की गेंद का रिवर्स शॉट खेलना चाहा. गेंदबाज शॉट थर्ड मैन पर थोड़ी सी मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज एक रन प्राप्त करने में सफल. बाई का इशारा, and with that bite on the scoreboard moving up to 9 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. 2 balls left in this over और गेंदबाज सहल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज निहाल सामना करने के लिए तैयार. रिवर्स शॉट डेलिकेटली प्लेड, फाइंड्स द गैप एज वेल, और यहाँ पर दैविक गेंद का सामना पीछा करते हुए बेहतर फील्डिंग वहाँ पर, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. बेहतर तरीके से ट्विस्टेड बैट गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ, और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल. स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स नाउ, दैट मींस 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. और सहल अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फुल टॉस. गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. ओवर नंबर 2 की समाप्ति. 2 overs completed, 11 for 1. Still the batsmen of Greenlands Begre now just searching for the right track. JB. So 2 overs completed, 11 on the board, 1 wicket loss for Greenlands Begre. और इससे पहले के तीसरा ओवर प्रारंभ हो. आगे का को देखा सुनाने के एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त जेपी जयप्रकाश को अंग्रेजी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा. So thank you, Mr. Gopi. After the completion of 2 overs, the score is on 11 on the board. The toss won by Durga Konchadi itself, and they have opted to bat first. For a change, Durga Konchadi have opted to field first. So the bowler to continue the proceedings from the side of Durga Konchadi. This time tries to go for the big one, not making any contact with the ball. The ball is being gathered by the keeper behind the stumps. The score still remains on 11 on the board. This time just kissing the pads, chance for an out. Oh, that's really a disaster here. If he had just tossed the ball to the keeper, it would have been an easy run out. Trying to shy at the stumps, completely missing the stumps. The target missed, and the batsman once again gets alive. Back-to-back dot balls here from the bowler.
Not getting the names as well as the jersey number of any players from Durga Konchadi. A single more to the total. So with that single, the score now moving up to 12. So 12 on the board. 3 more deliveries left in the third over. Bowler Manish coming right over. Oh, what a shot this time! It's high in the air. It sails over the boundary line for 6. A magnificent shot straight over the head of the fielder. The fielder there was just a spectator. 6 more to the total. The score moves up to 18 on the board. It's Nihal who has struck that right from the middle of the bat. The sound when the ball left the bat, it was perfect. That it was a 6 run on that one. This time tries to go once again down towards the square leg region. This time shuffling across the stumps. Trying to play with the mindset of the bowler Manish to bowl the final delivery of the over number 3. This time once again struck. It's in the air. Will it be taken? Will it be taken? Yes, it is. It's been taken inside the boundary line this time. Trying to repeat that shot which he had hit of the 4th delivery. Unfortunately, this time not getting the distance. Just finding the fielder. The fielder who was a spectator in the previous occasion has taken the catch neatly this time to dismiss Nihal and send him back to the pavilion. So wicket number 2 falls at the score of 18 on the board. 18 for the loss of 2 wickets. Both the openers are back in the pavilion. So Imtiaz, the skipper of Green Lines, is walking out to the middle. So Rakshak to bowl the 4th over and the first of his quarter, coming right arm round the wicket to the left-handed batsman Rafi, who is on strike. He's seen his partner who was dismissed at the final delivery of the 3rd over. This time beautiful delivery and cleaned him up. He has claimed the wicket of the very first delivery, and Rafi is back to the pavilion. Back-to-back wickets here at the score of 18 on the board. So Harshad is making his walk out to the middle to join Imtiaz. 2 new batsmen out there in the middle. Both have not faced any deliveries so far. Imtiaz walking after the downfall of Nihal, and Arshad now walking after the downfall of Rafi. The 4th over in progress. The score is on 18 on the board. They're having a healthy run rate here, the batters of Green Lines Bengare, but they have lost 3 important wickets, scoring just under 6 runs per over. This time a full toss taken on down the full hits the ball towards the deep mid wicket, and in between the deep mid wicket as well as the long on for a single. With that single, the score moves up to 19. So Arshad is off the mark. Imtiaz to face the first delivery of his innings, and 3rd from Rakshak. This time balls. This time tries to flick the wrist on that occasion. Umpire says that he was unsighted, and also from the bat. So 1 more run added to the total. So Imtiaz is also off the mark. 20. There's a warning given to the bowler for running on the pitch after the follow through.
So first warning, official warning there from umpire to Rakshak. Emma once again tries to paddle sweep it towards the fine leg, but not getting the timing proper. The ball going towards the short mid wicket region for a single. One more run added to the total. The score moves up to 21. Runs have been put a little bit of breaks after the fall of Nihal's wicket. Once again tries to heave that ball over the mid wicket, not properly connected it, wanting the second run on that occasion, but sent back by Imtiaz. So one more run to the total. 4 runs of 5 deliveries so far from Rakshak. Good delivery this time, trying to york the batsman. That's the completion of the over. Over number 4 comes to an end with a dot ball, and after the completion of 4 overs, the score on the board is 22 for the loss of 3 wickets. So over calculation, there are 12 deliveries remaining in the innings for Green Line Bengare to set a target in front of Durga Konchadi. They are 22 on the board. 4 runs coming off that Rakshak's over. The bowler to continue the proceedings. Bowler name, please. So Manish to continue the proceedings. He's bowled first over. Is bowling the second over of his quota this time. Imtiaz trying to reverse sweep that one, not properly middling it off the bat just for a single. He rotates the strike, and the strike is back to Arshad now. These 2 batters now they have to step on the accelerator. At least they have to score a score of around 40 to 45. Good delivery this one. Slower one compared. Lekker delivery there. The overthrow resulting in 1 more extra run for the 2 batters. So bye signaled, 2 byes. So 2 more runs added to the total. The score moves up to 25. Referral towards the third umpire for a wide, but wide not given on field. It was a referral from the batter. So wide has been given. That means 3 runs added to the total. Three wides. 26 on the board. Second time in the over. Manish to ball to Arshad. Arshad swings his bat on that one. It was a juicy delivery onto the legs of Arshad, and he has used that loose delivery and smashed that one towards the deep square leg region for a maximum. So 6 more to the total. With that 6, the score now moving up to 32 on the board, and Arshad has moved up to 8. Second 6 in Manish's over. This time full toss once again. He smashed that one. Just look at that shot. He knows that they are not having much deliveries left. He'll be trying to go after the bowling each and every delivery. And on twice of the occasions he has managed to clear the ropes. One towards the deep square leg and one over the head of the fielder in the mid-wicket region. To back-to-back sixes here. The score moves up to 38. They're heading towards a huge total if they go in this rate. Still 3 more deliveries left in Manish's over. Swings the ball, a flat hit there, but this time there is a fielder. One bounce into the hands of the fielder in the long on, and he has to satisfy with just a single. 39. Still 2 more deliveries left in the over from Manish. It's a huge over. Sensible cricket there from Imtiaz. Single.
takes the single and rotates the strike because he has seen Arshad going for that mighty heave, 2 sixes of this over. And he has decided that Harshad will be going after the bowling. This time down the leg side, have to wait for the signal from the umpire. It's a wild throw from the keeper. It's a by signaled, and that's the completion of the over as well. After the completion of the over, number 5, the score on the board is 41. 41 for the loss of 3 wickets. 19 runs coming up that over from Manish, with 2 massive sixes also included in that one. Really a big over from the perspective of Green Lions Bangare. They were desperately looking for that big over. So they are coming to the end of their innings. Final 6 deliveries remaining. They want to get as much as runs possible on the board so that the bowlers will have something to fight for them. This is not a big ground compared to the other grounds in Dakshina Kannada, and the wind also helping, assisting the batsmen. Full toss delivery, swings at that one, not middling it properly. Just a single more to the total. With that single, the score moves up to 42. Rakshak to bowl the final over. Final 5 deliveries remaining in the innings for Green Lions. Imtiaz this time. It's his turn to go after the bowling, and he gets a maximum as well. So in the span of just 8 deliveries, 3 sixes been hit by the batters of Green Lions Bangare. This time once again tries to go over the top, tries to repeat the previous shot, but not getting any amount of bat onto that one. Leg by signal by the umpire. 1 more run added to the total. The score moves up to 49. Just 1 short of the 50-run mark. Rakshak. This time to balls a little bit of fumble. Chance of a run out in the non-striker's end, and is gone. This time a run out resulting. They are trying to go for everything. Imtiaz wanted the strike back, asking Arshad to go for that one, and Arshad not able to make his ground, and he's run out. He has to make his walk back to the pavilion after scoring 15 runs against his name, with 2 massive sixes included in that. Wonderful knock comes to an end. 8 deliveries for his 15, and the score on the board is 49. 49 for 4. The new batsman who has made his walk out of the middle is jersey number 44. Good shot towards a deep mid-wicket region. The fielder there collects the ball. Coming back for the second run, 2 runs. I think the very good sportsman spirit there. It's a referral for a boundary. It's a referral towards the third umpire for a boundary. Boundary check-up, I think. Yes, it's a boundary. The bowler was in touch with the ball. The fielder was in touch with the ball, and that's a boundary signal by the third umpire. So 53 up for Green Line Bangare with that boundary from Imtiaz. Final delivery coming in the innings of Green Lions Bangare. Comes and balls. This time, what a way to finish the innings. A massive hit over the head of deep mid-wicket once again to finish up the innings, and they have managed to score 59 runs in their stipulated 6 overs and set a target of exactly 60 for Durga Konchadi when they come out to bat. That means that they have to score at a rate of exactly 10 runs per over right from the beginning of the innings. They can't afford to relax. Each and every batsman, those who walk out,
they should be thinking of scoring 10 runs in each over. 60 is what required of 6 overs for Durga Konchari to make it into the semi-finals. So we are already having Swastik Shakthinagara, the third semi-finalist, who just won their match against Victory 11 Mugrodi. And they will be facing the winners of this particular match, which is being played between Green Lines Bangre as well as Durga Konchari. And Durga Konchari having a target of 60 runs in front of them when they come out to bat in the simulated 6 overs. And with 36 deliveries for them to get those score of 60. They are also having a very good batting lineup. Besides of Rakshak, Daivik, still have the capability of getting those 60 runs, because the wind is also in favor of the batting side. The wind is blowing across the ground. Once he makes contact with the ball, there are enough chances for the ball to sail over the ropes if it is in the air. The wind will assist the batters as well. So we have to wait and watch for the reply from the batters of Durga Konchari when they come out to bat. 60 runs ahead of them in 56 innings over the wire to qualify for the semi-final. And for the rest of the comments, take you to the end of this particular match, the fourth quarter-final match. It will be a trophy by co-commentator as well as by one of my best friends. He'll be on the microphone. It's my pleasure to hand over the microphone to Mr. Gopi for the rest of the comments. Thank you. धन्यवाद जेपी जयप्रकाश, आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए। अंग्रेजी में बेहतरीन आंखों देखा हाल आपने सुनाया। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त 60 रनों के लक्ष्य का, तो इस वक्त दुर्गा कोंचाडी के लिए लक्ष्य है 60 रनों का, 60 द टारगेट। क्वाइट इंटरेस्टिंग फिगर। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए जम्मी और रक्षक का, जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नॉन स्ट्राइकर एंड पर दैविक का, जो कि इस वक्त मौजूद है। और पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ पहली गेंद लेकर जम्मी इस वक्त तैयार रक्षक के लिए। गेंद को खेल दिया रक्षक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन दौड़कर पूर्ण करने में सफल। और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। जहां तक का 60 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है निर्धारित 6 ओवर में, तो इस वक्त दोनों सलामी बल्लेबाज को एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर देने, तेज शुरुआत कहना पड़ेगा। और खासकर 2 पावर प्ले ओवर्स का फायदा इस वक्त उन्हें उठाना होगा। इन 2 पावर प्ले ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने होंगे दुर्गा कोंचाडी के सलामी बल्लेबाजों को। और
इस बीच गेंदबाज जम्मी गेंदबाजी करेंगे दैविक के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार लेग स्टंप पर क्विक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर and the batsman has to go. Daivik departs in his very first delivery that he faced. Golden duck for him, wide also called by umpire. और दैविक का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो पिछले मैच में भी पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में आउट हुए थे दैविक, यहाँ भी गोल्डन डक के रूप में इंग्लैंड वापस लौटते हुए और पहला का second golden duck for Daivik and the first wicket loss for Durga Kunchadi. It's 1 for 1 in the first over. तो इस वक्त नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल वेयरिंग नंबर 33 जर्सी। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर। 2 without loss in the over number first in progress. 60 the target for them in 6 overs. They have to score for victory. I request the extra player of Durga Kunchadi please to be reported here to tell the player's name. और गेंदबाज जम्मी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था इन हाथों पर विकेट रक्षक बैक ऑन स्ट्राइक। और निस्संदेह यहाँ पर रक्षक के लिए इस वक्त चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत, खासकर इस पावर प्ले ओवर का फायदा उन्हें उठाना होगा। और जम्मी इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इन हाथों पर विकेट तैयार रहा। यह गेंद रक्षक के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। वाइड का इशारा, 1 + 1 2 runs now added to the total. तो इस बीच not connected that one properly and the ball went into the hands of bowler. He can't got any run. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हैं नंबर 33 की जर्सी पहने हुए गेंदबाज जम्मी की गेंदों को, और जम्मी गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार परफेक्ट लेग कटर, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर एंड आई थिंक द बॉल जस्ट किसिंग द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। और बेहतर गेंद थी इस वक्त, परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद फेंकी थी। और यहाँ पर देखिए असल में किस तरीके से हुआ था, गेंद को उछालना चाहा, चूंकि इस वक्त गेंद स्टंप्स पर टकरा कर चली गई इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। दूसरा विकेट गिर चुका था। बैट्समैन नौशाद डिपार्ट्स, नाउ दे आर लुकिंग इन ट्रबल। दुर्गा कुंचाड़ी आर 4 for 2। 4 गेंद इस वक्त फेंके जा चुके हैं, रन बढ़ चुके हैं 4, 2 विकेट गिर चुके हैं। रक्षक एक छोड़ पर मौजूद है और नए बल्लेबाज चेतन का आगमन इस वक्त होता हुआ। और जहाँ तक सवाल है, पहले 4 ओवर में 22 रन न सिर्फ बटोरे थे ग्रीन लाइन स्पिनर के बल्लेबाजों, लेकिन उसके बाद अंतिम 3 ओवर में 37 रन, 37 रन स्कोर्ड फ्रॉम द लास्ट 3 overs scored by the batsmen of green line spinner, and because of that they finished well with 59 in the stipulated 6 overs. First 4 overs only conceded only 22 runs by the bowlers of Durga Kunchadi, but in the last 3 overs they conceded 37 runs and because of that green line spinner batsmen finished well with 59 in the stipulated 6 overs. Exactly 60 the target for Durga Kunchadi. 2 विकेट यहाँ पर खो चुका है और गेंदबाज जम्मी दाहिने हाथ रौंदा विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद इस वक्त फाइन लेग की दिशा में निकल चुकी है। गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, पैर के जरिए गेंद को रोकने में सफल है और जब तक दोबारा वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का बाई के रूप में। गेंद बिल्कुल फाइन निकली थी इस वक्त। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर इम्तियाज जो खड़े हुए हैं उनकी दाईं ओर से, और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त 2 रन बाई के रूप में मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज जम्मी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिम, नॉट सक्सीडेड। द बॉल स्ट्रेट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड विकेट फील्डर एंड अ सक्सेसफुल ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम Jammi. He conceded just 6 runs in this over
और 60 रनों के लंबे से लक्ष्य का पीछा करते हुए फुल्का को जॉडी इस वक्त सिर्फ 6 रन जोड़ चुका है एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 54 to get in remaining 5 overs. That means in remaining 30 dealers and the asking run rate is now straight away gone up to exactly 10.80 runs per over. 7 in fact the score. I beg your pardon, it's a 7 the score. 53 to get now in remaining 5 overs. मुबीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और इस बीच रक्षक का सामना करने के लिए तैयार दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ निश्चित रूप से रक्षक कुछ ऐसे जोरदार स्ट्रोक्स की तलाश में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रन वो प्राप्त करे और पहली गेंद लेकर इस वक्त मुबीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रक्षक जो कि सामना करने के लिए तैयार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर 53 to get from remaining 30 balls और ओवर की पहली गेंद लेकर मुबीर रक्षक के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार फर्स्ट बॉल कम्स तो अंपायर इस वक्त कुछ कहते हुए नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज से और मुबीर ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रक्षक के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए This time not connected that one properly. It's can't got any run. Direct hit इस वक्त नहीं लगा और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ और जहां तक तो इस वक्त 7 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार रक्षक जो कि इस वक्त सामना करते हुए इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद शॉट फाइन लेग पर पहुंची इम्तियाज के हाथों से गेंद चुकी इस वक्त एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर लेग पाई का इशारा रक्षक ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं इस वक्त चेतन सामना करने के लिए तैयार निश्चित रूप से चंद चौके और छक्कों की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत यहाँ पर कमबैक करने के लिए और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो मुबीर इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज चेतन जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए इम्तियाज जो कि कप्तान है ग्रीन लाइन से बेंगरे के और मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त बल्लेबाज चेतन जो कि इस वक्त सामना करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा शॉट थर्ड मैन पर इम्तियाज ओ मिसअंडरस्टैंडिंग लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर रनआउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन चेतन दौड़ पड़े थे लेकिन गेंद को विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाया लेकिन तुरंत बैकअप करते हुए दूसरे फील्डर वापस गेंद को विकेट कीपर के हाथों में लौटाया कोई रिस्पांस नहीं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज द्वारा रक्षक का और इस बीच वाइड का भी इशारा हो चुका है विकेट भी गिर चुका है दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ 1 रन एडेड टू द टोटल इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड चेतन डिपार्ट्स Winners of this match will meet Swastik Shakthinagara in the second semi-final of this match and that match is now coming up live exclusively right in front of you within right after this match. New batsman चरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और मुबीर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अंपायर विकेटों को सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और स्क्वायर लेग पर और इस बीच गेंदबाज मुबीर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और
फील्डिंग में जमावट अभी भी चलती हुई। तो गेंदबाज इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार रहा। गेंदबाज मुबीर दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज इस वक्त चरण सामना करने के लिए तैयार। स्वीप कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप फाइनल की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद का पीछा करता है फील्डर और गेंद को सीमा रेखा के अंदर बेहतर तरीके से ढकेलने में सफल। फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय द डीप फाइन लेग फील्डर, डीप स्क्वायर लेग से दौड़ कर आए करीबन 15 से 20 कदम और बेहतर तरीके से गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। अगली गेंद दाहिने हाथ over the wicket. This time just wanted to play that one on the onside, not succeeded. That was just, this could be in trouble if the throw was directed the stumps. In fact, the throw hit the stumps and it's gone this time. फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर। तुरंत गेंद पर झपकते हुए गेंद को इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स की ओर थ्रो किया और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और एक और विकेट गिर चुका है। Chanda Mande has 4th wicket gone. They're looking deep in trouble. Durga Kunchari are 11 for 4. इस बीच गेंदबाज मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार और रक्षक का बैक ऑन स्ट्राइक। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और गेंदबाज मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रक्षक जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच, fourth and last quarter final match of this prestigious cricket tournament, VV Trophy 2026 is now progressing here, which is probably organized by Veera Venkatesh cricketers Shakthinagara Mangalore। और गेंदबाज मुबीर दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रक्षक के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। This time stuck to his leg, गेंद इस वक्त पहुंची गली कॉर्नर पर 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में और लेग बाय इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 12 for the loss of 4 wicket. Runs are hard to come by in the situations for the batsmen of Durga Kunjadi, and a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Green Lines Bengre। और इस बीच मुबीर फिर से फील्डिंग में एक बार जमावट करते हुए और दक्षित इस वक्त गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। मुबीर अगली गेंद स्वीप शॉट इस वक्त, लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा पावर नहीं, गेंद जाती बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर रिबीज आने के साथ 2 रन प्राप्त करने में सफल। इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को मोड़ दिया था विदर ट्विस्टेड बैट 2 रनों के लिए और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 2 overs completed, 14 on the board and 9 runs came from this over from Mubir. And after 2 overs, still I must say the batsmen of Durga Kunjadi searching for the right track. It's 14 for 2, 14 for 4 after completion of 2 overs. 36 to get from remaining 24 balls. Balls left, 36 runs required. In fact, 46 runs required, not 36. It's 46 runs required from 24 balls. 46 required from 24 deliveries. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड बाय द बॉलर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। 15 for the loss of 2 wicket. 45 runs more required from 24 deliveries. रक्षक
Just gone for a big one. Get some extra bounce for the bowler. The last moment missing the line completely. और गेंद इस वक्त सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. हर डॉट गेंद के साथ दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर दुर्गा कुंजाड़ी के, और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा. नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट. लॉन्ग ऑफ फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए रन के दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. थ्रो पहुंचा और इस वक्त डायरेक्ट हिट लग चुका है जरूर, लेकिन ओवर थ्रो. रक्षक थोड़े से फिसले, संभल कर पीछे दौड़े और 3 रन यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल. तो 3 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल. और बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट ओवर थ्रो के रूप में तीसरा रन बल्लेबाज ने पूरे किया और 3 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. और गेंदबाज जम्मी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार. दक्षित फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर जम्मी इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ದಕ್ಷಿತ್ के ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರು. तो इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए lofted. This time I think he's got the distance. Much needed sixer came from the bat of the batsman दक्षित. और जहां तक सवाल है इस वक्त छक्के का, तो इस वक्त जरूरतमंद छक्का लग चुका है दक्षित के बल्ले से. 3-4 छक्के अगर लगते हैं कम अंतराल में तो यहाँ पर दुर्गा कुंजाड़ी इस मैच में वापस आ सकता है. फिलहाल बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त दक्षित के बल्ले से लगता हुआ. और एक बार फिर से जम्मी गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार. इस बार लेग स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा. स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर. Bowl 2 for outside the leg stump. 1 run added to the total. 25 on the board. 25 for the loss of 4 wickets now. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए यह गेंद उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई. प्लम इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ दक्षित का विकेट यहाँ पर गिर चुका है. एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट गिवन बाय द अंपायर. गेंद लाइन पर टिप्पा खाती हुई बल्लेबाज के बैक लेग पर टकराई, जो बिल्कुल स्टंप्स के सामने था. और अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में. 5th wicket gone. Dakshit departs. The problems are now more building up for Sri Durga Konchadi. Now it's 25 for 5. तो थर्ड अंपायर का सौलभ यहाँ पर अब नहीं है. कुछ हद तक यहाँ पर बारिश, हल्की बारिश की चंद बूंदें गिर चुकी इस वक्त. इस वजह से तीसरे अंपायर की सौलभ्यता को तात्कालिक होकर यहाँ पर रद्द किया गया है. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज का, तो गेंदबाज इस वक्त जम्मी गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज सहल कम्स आउट टू द मिडल. रक्षक का आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे थे. अभी तक क्रीज पर जुड़े हुए, हालांकि सिर्फ 4 रन जरूर उन्होंने बनाए हैं. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. जम्मी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर नए बल्लेबाज सहल के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, चूंकि 1 रन का इजाफा. बाई का इशारा और बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर. 26 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. स्लोअर प्रोग्रेस अगेन नाउ फॉर श्री दुर्गा कुंचाड़ी. रक्षक बैक ऑन स्ट्राइक इस वक्त सामना करते हुए. लेग स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा. 27 for the loss of 5 wicket. Still 33 more runs required in remaining 19 balls. Just time gone for a big one, missing the line completely, and that's it for this over. 3 overs completed, and after 3 overs, 27 on the board. That means 33 runs to get from remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries.
So just drizzling out here in this ground. और बारिश की चंद बूंदे यहाँ पर गिरती हुई, लेकिन प्रखर धूप इस वक्त मैदान पर छा चुकी है और कुछ ज़्यादा बादल नीला आकाश तले इस वक्त दिखाई नहीं देते हुए, और निश्चित रूप से यह एक शुभ संकेत है मैच को आगे बढ़ाने के लिए। और ओवर की अगली गेंद लेकर मुबीर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर और 6 रनों के लिए, और यहाँ पर स्ट्रोक था सहल का, और इस छक्के के साथ दुर्गा कुंचाटी अपनी उम्मीदों को बरकरार रख चुका है। स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रन पर। नाउ 17 बॉल्स लेफ्ट, 27 रन रिक्वायर्ड। एक छक्का और निश्चित रूप से दुर्गा कुंचाटी को इस मैच में वापस ला सकता है। और इस बीच पहली गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद गेंदबाज मुबीर कुछ हद तक दबाव में इस वक्त नजर आते हुए, और देखते हैं अगली गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी, किस तरह की गेंदबाजी वो यहाँ पर करते हैं। फिलहाल इस वक्त सहल छक्का लगाने के बाद काफी आत्मविश्वास भरे इस वक्त नजर आते हुए सामना करने के लिए तैयार मुबीर की गेंदों का। यह गेंद को खेल दिया, मिड विकेट पर गेंद जाते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। क्लीन पिक अप थ्रो पहुंचा इस वक्त, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलना। बेहतर फील्डिंग, फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय द डीप इन विकेट फील्डर। नाउ the score is moving up to 34. That means 26 runs required in remaining 16 balls. और रक्षक इस वक्त अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। निश्चित रूप से रक्षक काफ़ी देर से चौके और छक्के लगाने के प्रयत्न में कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सफलता उनके पक्ष में नहीं आई है अब तक, लेकिन उम्मीद ज़रूर बरकरार है इस वक्त उनके टीम के लिए। और मुबीर इस वक्त अपने और की अगली गेंद लेकर तैयार है रक्षक के लिए, चूंकि इस वक्त बाउंड आउट। फैंटास्टिक डिलीवरी केम फ्रॉम मुबीर, and after this delivery a struggling innings from Rakshaka came to an end. और काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे थे रन्स बनाने में, आखिरकार उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका है, और दुर्गा कुंचाटी एक और विकेट यहाँ पर खो चुका। 6 विकेट डाउन, 34 for 6. रक्षक डिपार्ट्स। ज्ञानेश द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और मुबीर और एक छक्का प्रदान करने के बाद बेहतर कमबैक कर चुके हैं मुबीर, और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 15 गेंदें बाकी कुल मिलाकर, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रन का, तो 26 रन और बनाने। 26 टू गेट फ्रॉम 15 डिलीवरीज। और गेंदबाज इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार मुबीर, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज ज्ञानेश के लिए। इस बार स्वीप कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग पर, लेकिन फीडर मौजूद वहां पर। नॉट मोर देन अ सिंगल, एंड दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 25 to get now from remaining 14 deliveries, and the man who hit a 6 couple of deliveries back on strike. सहल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और मुबीर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार बल्लेबाज सहल के लिए। और अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, थ्रो इस वक्त चूका, और बल्लेबाज 1 रन पूर्ण कर चुके हैं। ओवर थ्रो लेकिन बैकअप होता वहां पर मिड ऑफ पर बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 36 नाउ 24 टू गेट इन रिमेनिंग 13 बॉल्स। 13 गेंदे 24 रन चाहिए। द टॉल मैन बैक ऑन स्ट्राइक। ज्ञानेश सामना करते हुए मुबीर की ओर के अंतिम गेंद का, दाहिने हाथों पर द विकेट। मुबीर अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर तैयार, अपने स्पेल की अंतिम गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद जाती है बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में। बेहतर फील्डिंग, फैंटास्टिक वर्क मेड बाय द बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर। ना सिर्फ गेंद को उन्होंने फील्ड किया, बल्कि तुरंत अपने हाथों से गेंद को इस वक्त रिलीज किया बेहतरीन फील्डिंग के जरिए, और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज इस गेंद पर प्राप्त करने में सफल है। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, and over number 4 has been came to an end. Now equation stands 23 to get from last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. Winners of this match will meet Shakthinagara in the second semi-final match, and that second semi-final match coming up live exclusively right in front of you right after this match. तो 2 ओवर 23 रन चाहिए। 23 टू गेट फ्रॉम 12 बॉल्स, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ज्ञानेश चौके और छक्कों की तलाश में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज की ओर की पहली गेंद का
ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा इस वक्त, गेंद मिड विकेट पर पहुंच चुकी है, रनआउट का खतरा और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। बेहतर फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा और आखिरकार रनआउट के रूप में इस वक्त विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 7 डाउन। द स्कोर स्टैंड्स एट 37 for 7. Manish, the new batsman, is now comes out to the middle और गेंदबाज सरफराज गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं, अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त सामना करते हुए बल्लेबाज सहल जो कि एक छक्का पिछले ओवर में झड़ चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद इस बार उछालना चाहा, गेंद को खेल दिया, इस वक्त गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लेकिन बेहतर तरीके से कैच को लपकने में सफल। मिड ऑफ से पीछे की ओर दौड़ते हुए लंगों पर गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं, बेहतर तरीके से इस कैच को लपका और इसी के साथ सहल का भी विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 8th विकेट डाउन, 37 for 8 and now the things getting much tighter for the batting side. Just 2 wickets they got and 23 to get in remaining 10 balls. तो इस वक्त 10 गेंदें बाकी, 23 रन चाहिए। नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल, मनी और गेंदबाज सरफराज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट तैयार। यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन पर, मनी रन लेना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने, एक डॉट गेंद और उनके खाते में जुड़ता हुआ। नाउ 23 टू गेट फ्रॉम 9 बॉल्स और सरफराज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बल्लेबाज मनी जो कि इस वक्त सामना करते हुए, इस बार गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑन पर मौका हो सकता है, लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपक लिया गया और इसी के साथ मनी का भी विकेट गिर चुका है, 9वां विकेट गिर चुका है। 37 for 9 नाउ। वक्त ऐसा कहना पड़ेगा once they were 34 for 5 and now they are 37 for 9. अंपायर इशारा किया कि देयर एक्सीड देयर टाइम लिमिट, तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। They lost their 5 wickets in the space of just 2 runs in between 35 to 37. At one stage they were 35 for 4 and now 37 for 9. And dramatical collapse happened under pressure in the innings of Durga Kunchadi. और अंतिम विकेट मैदान पर बल्लेबाज the last batsman, number 11, the last batsman comes out to the middle. This time getting his inside it, down to a short fine leg, better stop Imtiaz द्वारा, just a single they got. 38 for the loss of 9 wickets. Now बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंद इस ओवर में फेंके जा चुके हैं। ये गेंद bowled out, that's it. 21 runs, a comprehensive victory for Green Lions. They were bundled out in exactly 5 overs for just 38 runs. And Green Line Bangalore registered a 21 runs comprehensive victory over Sri Durga Kunjani and with that victory they are through to the semi-final of this competition. Now the second preliminary match will be played between Green Line Bangalore versus Shakthinagara, and that match coming up and exclusively right after the short break. और एक छोटा ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद सबसे बड़े कभी दोस्त अंग्रेजी में जिपी प्रकाश के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट अगला मैच यहाँ पर शुरू होगा। तो अब वक्त है कि ब्रेक करना, इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
to the second semi-final of this tournament. Will be played between Green Lions Bengaluru as well as Shakthinagara. I request both the team captains to please report to the committee dais. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. Green Lions Bengaluru ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ Shakthinagara ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಪೈರ್ನವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಇವರನ್ನು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So I request both the teams to please hurry up. There are every chances of drizzling here. Hope it will not rain. I request both the team captains to please cooperate with us in the smooth running of this tournament. So far we have all the matches been played without any interruption. I request the two captains of Swastik Shakthinagara as well as Green Lines Bengare to please cooperate with the organizers. I request both the teams to please occupy the ground as soon as possible. Swastik, Green Lines Shakthinagara is Green Lines Bengare winning the toss. The decision still pending. I request Mr. Imtiaz to give away the decision. They have won. It's Swastik, though the team which has won the toss, and they have elected to field fast. The team Swastik Shakthinagara has occupied the field. The captain winning the toss and electing to field first. I request the openers from the side of Green Lines Bengare to please walk out to the middle. The two openers are making their walk. Imran with the jersey number 333. And the other batsman who is making his walk towards the non-striker end is jersey number 0, Nihal.
So the bowler to start the proceedings from the side of Swastik Shakthinagara is Vinit. Coming left arm round the wicket. So there's a start from umpire Mr. Pushparaj. So Vinit to start the proceedings. First delivery. He'll be bowling to Imran. Good delivery. Cleaned him up. Very fast delivery. And Imran is out for a golden duck in this crucial match. That is the semi-finals of this VV Trophy 2026. Cleaned him up. Very fast delivery. So Imran is gone without troubling the scorers with a golden duck against his name. And Vinit has given the breakthrough for Swastik Shakthinagara. So disaster start here for Imran. Cleaned up of the very first delivery. So the new man is Taif. So Taif is the new man who has made his walk out to the middle after the early dismissal of Imran without troubling the scorers back in the pavilion. Vinit has made a habit. Oh, this time it's been smashed over one bounce into the hands of the fielder in the deep mid wicket just for a couple of runs. Two more runs, 2 runs to the total, and the scoreboard gets a tickle. It's Taif who is trying to make use of the full fielding restrictions. The first 2 overs, only 2 fielders outside the 30-yard circle. This time balls straight down the ground. A little bit of fumble there by the fielder. Allows the batsman for a single. So little urgency shown in the ground there by these 2 batters. They know the importance of every run against this strong side, Swastik Shakthinagara. Having a good bowling lineup as well this time. Oh, that's really sloppy. This is really sloppy, and the ball has gone, and it's a wide as well as a boundary. 5 wides added to the total. The score with that moves up to 9 on the board. 8 on the board, I beg your pardon. 8 on the board. Wide plus 4. 5 wides added to the total. Fumble by the keeper as well as the fielder in the short third man region. Rakshit was the culprit. This time gets a leading at top edge and is gone. Wicket number 2 falls. It's Nihal who has been dismissed. So Nihal is also gone for a golden duck. So Vinit gives the double breakthrough here for his team. The score is on 8 for the loss of 2 wickets. So back-to-back wickets here in the very first over. The first wicket falling at of the second delivery of the first over. The second in the fourth delivery. So 2 good batsmen are already back in the pavilion. Imran as well as Nihal, the openers, back into the pavilion. And Rafi has made his walk out to the middle. So left-handed batsman on strike now. The left-handed bowler bowling to the left-handed batter. Vinit, left arm round the wicket to the left-handed batsman Rafi. This time balls outside the off stump. Good delivery and well take by Shailesh behind the stumps. Dot ball resulting. Final delivery of the first over coming up. Good delivery to finish off the over. So that's the end of the first over. After the completion of the first over, the score on the board is 8 for the loss of 2 wickets.
So first over comes to an end. The score is 8 on the board, with 5 wides been gifted by the bowlers of Shakthinagara. The bowler who has been introduced into the attack to bowl the second over is Mitesh. Will be coming right arm over the wicket to bowl to Taif. Good delivery, fumble once again by the keeper. Shailesh behind the stumps, unable to gather the ball on the first attempt. Very well backed up by the two fielders, short fine leg as well as the short third man region. The two fielders are just behind the keeper. Oh, there was an outside chance for an out in the show. There was a chance in the striking end, but Rakshit preferring the non-strikers end, unfortunately not getting the target, and allows a single more to the total. The score with that single moves up to 9 on the board. There was an outside edge. It's very hard for the keeper, who is standing closer to the steps. The thickish outside edge will always be moving away from him. It's really hard for the keeper. Stand balls, a good delivery this time. Chance for an out, might be out. Yes, he's gone. That's a wicket they wanted. It's of Taif, who has been dismissed. Run out. Very well backed up by the fielder in the short third man region. Collects the ball and returns it back to the keeper. And Shailesh, without any hesitation, with a quick response, removes the bails off and gets rid of Taif. So Taif is back into the pavilion after scoring just 4 runs against his name of 5 deliveries. So the wicket number 3 falls at the score of 9 on the board. .3 overs been bowled so far. The new batsman who has made his walk out to the middle is jersey number 1, Imtiaz. So Imtiaz on strike to face the 4th delivery from Mitesh this time. Tries to go for the reverse shot, not making any contact with the ball. The ball resulting in a dotted delivery. Both teams wanting to win this match. This time wrapped on the pass, loud appeal for LBW, but it's been put down by the umpire, signalling it as a leg bye. So 1 more run added to the total in the form of extra. The score moves up to double figures, 10 on the board. Final delivery coming up of the second over. Just 10 runs been considered in the first 11 deliveries, that is of the power play. Meanwhile, they have lost 3 valuable wickets. All the 3 top order batsmen, Imran, Nihal and Taf, are back in the pavilion. Tries to go for the big one, sharing at the stumps. Mitesh, just look at that extra piece of energy shown by him, sharing at the stumps in the striking end. Lucky that the ball didn't went for the overthrows. So that's the completion of the over. Over number 2 comes to an end after the completion of 2 overs. The score on the board is 10 for the loss of 3 wickets. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10, 3 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡ. The toss won by the captain of Shakthinagara, and the captain deciding to field first. So far the decision from the captain has proved right for his side, because the 2 bowlers Vinith as well as Mitesh have really restricted the batsmen from scoring a huge amount of runs in that 2 overs of power play. Just 10 runs considered in the first 2 overs, and it's Vinith to continue the proceedings. Comes and balls this time, firmly struck. It was in the air, just away from the fielder Yogi in that short cover region. Just a single more to the total. The score moves up to 11. So Rife, who is on strike, yet to open his account. Good delivery, beautifully picked up shot, but there is a fielder stipulated for that shot.
Good piece of fielding set up as well by the bowler of his own bowling. 2 singles of the first 2 deliveries from Vinith. They've given away 8 runs in his first over. Oh, what a shot. Upishly played. Just opening the face of the bat at the final moment. Playing the ball over the head. Chance of a run out there. And he is safe in his crease. Imtiaz is lightning quick between the stumps. Converting the singles into twos. This is the speciality of this man, Imtiaz. Two more runs to the total with that couple. The score now moving up to 14 on the board. Vinith bowling the 4th delivery of his over, and the 3rd which he's been bowling from for his side. This time a picked up shot there into the gap. Manju keeps the ball in play, but couldn't quite keep it in play. The ball rolling over the boundary lines for a welcome boundary. So with that boundary, the score now moving up to 18. Imtiaz is playing a little cameo here. He's taking on the ball up. Vinith, the strike bowler for Shakthinagara, is under some pressure. Left arm round the wicket to Imtiaz. This time balls a good delivery. Chance of a run out in the non-strikers. And now he's gone. What a throw there. Picks it up and shires at the stumps on the non-strikers and gets a direct hit, and Imtiaz is short of his crease. Magnificent piece of fielding here there from the bowler. Vinith collecting the ball on his own follow through and turning back, shiring at the stumps on the non-strikers and getting rid of the dangerous looking Imtiaz. It's really unfortunate that Imtiaz is back into the pavilion. Imtiaz was just looking at the bowler with the quick reflexes from him, turning around, sharing at the stumps in the non-strikers end. It's very hard. Within a matter of seconds, he has to react, and good reaction shown there by Vinith. So that's the end of innings for Imtiaz, and the 4th wicket falls at the score of 18 on the board. The new batsman is Arshad, who is on the non-striker end. Loud appeal this time. A chance of a run out once again, but a leg by signal by the umpire. One more run added to the total in the form of extra, in the form of a leg by. So that's the end of the over. Over number 3 comes to an end. Plenty of drama out there in the middle. 19 for the loss of 4 wickets. With still 3 overs remaining, 18 deliveries intact for Green Lions Bengaluru to set a target in front of Shakthinagara. So far, the bowlers are doing a pretty good job. Both Vinith as well as Mitesh putting the brakes on the scoring rate of Green Lions Bengaluru. And it's Mitesh who has been brought back into the attack to finish off his quota of the 2nd over. Score is on 19. So Arshad on the non-strikers end had to face the delivery, and the batsman on strike is Raif. 19 for the loss of 4 wickets. Tries to go reverse shot. Chance of a run out once again. Oh, that was a good throw, but not finding the stumps. It's a bye signal by the umpire. One more run added to the total in the form of extra. The score moves up to 20 with that extra. A direct hit would have had Arshad in trouble. So Arshad to face the first delivery of his innings. The batsman bowler to ball is Mitesh. A good way to start his innings. Just
waiting for the ball to come onto the bat, opening the face of the bat at the final moment, gets himself a single, and also for his team, most importantly, he's rotating the strike. Sensible cricket. Run a ball will get them to 36, apart from the wides or odd sixes or boundaries which they get. This chance of a run out in the non-strikers, and this is a total misunderstanding, a mix-up between the two batters, Arshad as well as Raif. Both the batsmen in the same end. It's a wide also called by the umpire and resulting in the downfall of Raif. This is the third run out in the innings of Greenland Bangare. The score is on 22. 3 runs considered so far of 2 deliveries by Mitesh in his second over. And the fourth for his side, and the new batsman walking out to the middle is Saif. Shifaz. He's on the non-striker's end, and the batsman on striker is Arshad. Mitesh to bowl the third delivery of his over. Coming right up over the wicket balls, and it goes for the big one. This is handsomely struck right from the middle of the bat, and Arshad clears the ropes quite comfortably. So at least 3 rocks back into the crowd, and 6 more to the total. The score getting an acceleration, 28 on the board. That was really picked up, playing it on the rise, just helping the ball over the boundary lines. Pure timing behind that shot from Arshad. The score is 28 on the board. Mitesh normally sets a high standard with the ball. He's taken into some hammering here in the second over of his quota. He had given away just 2 runs in his first over, and here he's gone for some runs. Chance for run out in the non-strikers, and throw was directed. Just a single more to the total. With that single, the score moving up to 29. Still a couple of more deliveries remaining in the over number 4. Good delivery, beautifully balled. Once again, it's a fumble there from Shailesh. 1 more bye to the total. So they are heading towards a huge total now. 30 runs already considered. This is the 4th over in progress. We have also seen in the previous match, the first 4 overs they were just 22, and after the completion of the 6th over they were 59. A single more to the total to finish off the over. Over number 4 comes to an end, and with that single the score moves up to 31 with the completion of 4 overs. 31 for the loss of 5 wickets. Twelve runs coming up that over. They had lost their 5th wicket at the score of 22, and the new bowler who has been brought into the attack to bowl the 5th over for his side is Manish. Can Manish puts a break on the scoring rate of Green Lions Bangare? They're cruising on in spite of losing 5 wickets. This time it's been lofted once again. It's been kept in play there by the fielder, judging the ball, just tapping it inside the boundary lines and saving 4 runs for his team. So 2 to the total. Score moves up to 33.
With the 11 deliveries remaining in the innings for Green Line Bengare. They'll be hoping for some good innings from Arshad here. Lofts the ball in the air. The fielder tries to gather underneath that one, but unfortunately the ball landing in the no man's region. They're coming back for the third run as well. Good running between the wickets. 3 more runs to the total. With that 3, the score now moving up to 36. 36 on the board. First 2 deliveries for 5 runs already of Manish. More deliveries remaining in the innings for Green Line. Already 36 on the board. This time fumble there by the keeper. Once again, chance for an out. He has removed the bails off in flash, but it's a wide also signaled by umpire Mr. Pushparaj. 1+1, 2 more runs to the total. These are some extra gifted runs from the bowlers of Swastik Shakthinagara. They can't afford to bowl extras because already they are heading towards a huge total. With the 10 more deliveries remaining, the score already on 38. Anything more than 50 or 55, the batting side will be having a upper hand on the chasing side. Stand balls, slower delivery, leg cut delivery there from Manish, completely beating the batsman Arshad. Still 3 more to go in the over. Manish, short run up towards the bowling crease. Comes and balls. Once again it's been lofted. This time straight into the hands of the fielder in the long off. So wicket number 6 falls at the score of 38 on the board. He was trying to go over the ropes, but just couldn't get the distance on that particular shot which he has played. The ball was in the air, straight into the only fielder we can see outside the 30-yard circle in that region, towards the onside. The man in the long off. An easy catch taken by him, and that's the end of innings for Arshad. He's back into the pavilion after scoring 14 valuable runs for his team. The new batsman is Jami. Jami on strike. Be facing the 5th delivery from the over. This time it gets the leading edge of the bat. Back-to-back wickets here for Manish. Jami is back into the pavilion without troubling the scorers. Once again, a wicket falling back-to-back here. The 38 for the loss of 7 wickets now. We are in the over number 5 of the first innings of this second semi-finals. And the new batsman who is making his walk out to the middle with the jersey number 17 is Adil. And it's also Manish who is on a hat-trick. Will that be a first hat-trick of this tournament? We have yet to see a hat-trick. Can Manish pick up that hat-trick? Was this time good delivery, dot ball to finish off the over. Very good over comes to an end from Manish in spite of there's doubles and triples have been taken of the first 2 deliveries. Has come up very well with the couple of wickets against his name. So that's the completion of the over. Over number 5 comes to an end after the completion of 5 overs. The score on the board is 38 for the loss of 7 wickets. 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ is been handed over the ball to bowl that final over.
Can see the shoot done with the drone camera. A wonderful view of this Shakthinagara ground. 3 institutions inside these premises: Kuempu Higher Primary School, and also a high school, and also pre-university college, the government college in these premises, and it's a wonderful view to watch. So Ritesh balls the dot ball, very fast delivery to Shifaz. The score has been given a break here. From the last 5 deliveries, no runs being scored. This time a chance of a run out once again in the non-strikers end. Yes, it is run out resulting at the end of Shifaz as well. Plenty of run outs in this innings for Green Line Bengare. 4 run outs out of the 8 wickets that have fallen. So 4 legal deliveries remaining in the innings for Green Line Bengare. And the man making his walk out to the middle with the jersey number 9 is Mubir. Tenth batsman walking out to the middle. The score is 38, stuck on 38. From the last 6 deliveries, they were not managed to get any runs on the board, and they have lost 3 valuable wickets. 6 dot deliveries, 3 wickets. This time balls, a good delivery, beautifully balled once again. Oh, it's gone! What a wonderful response! A quick response there from Shailesh. He has removed the bails off. And Mubir is gone. Beg your pardon, it's Adil who has been dismissed, stepped by Shailesh. Off the bowling of Ritesh. A wonderful last over so far. 3 deliveries without any run, and 3 wickets. 2 wickets have fallen. The last man standing now. It's Sarfaraz. Who's walking out to the middle. He's the last man standing for Green Lines Bengare. 38 on the board, and they have lost 9 wickets. And 4 wickets fell at the score of 38. Last 7 deliveries without any run, and 4 wickets have fallen. This time into the gap, reverse sweep attempted, and gets a little bit of bat on it one, and gets a single as well. With that, the score after a long time gets a tickle, moves up to 39. Final 2 deliveries left. Ritesh the bowler, and he'll be bowling to Mubir. Good delivery, beautifully balled. Dot ball. Final delivery coming up. 39 on the board. Ritesh bowling the final delivery of the first innings for Swastik Shakthinagara. So far a wonderful over from him. Just 1 run considered. Balls at this time to a chance of a run out. That might be all out. Yes, is there. Wrap the innings of Green Lines Bengare. We can see in the last 10 deliveries, they have given away just 1 run and picked up 6 wickets. In fact, 5 wickets in the last 10 deliveries. After considering just a single run. What a wonderful comeback by the bowlers of Swastik Shakthinagara. They were 38 for 7 after the end of 5 overs, and they have ended up scoring just 1 run, 39 all out at the end of 6th over. The last wicket falling at the final delivery of their innings, it was Sarfaraz who was run out.
So the target for Swastik Shakthinagara when they come out to bat is 40, exactly 40, what is required of 36 deliveries. Just the difference between the bat and the ball is 4 runs, and we have to wait and watch what will be the response from the batters of Swastik Shakthinagara. Will they be able to chase it down and reach to the finals, or will Green Lions Bengaluru contain the batsmen of Swastik Shakthinagara from scoring that 40 runs and enter into the finals? We have to wait and watch until the final delivery has been bowled, and to take you to the end of this particular match, the exciting semi-final, the second semi-finals of this VB Trophy 2026. It will be Mr. Gopi, one of the wonderful commentators in Hindi, on the microphone. Thank you. धन्यवाद जयप्रकाश। और जहां तक सवाल है इस वक्त ठीक 40 रनों का लक्ष्य, एग्जैक्टली 40 द टारगेट इन 6 ओवर्स सेट बाय ग्रीन लाइंस बेंगरे फॉर स्वस्तिक शक्तिनगर। और उनकी पारी की शुरुआत होते हुए देयर ओपनर्स आर नाउ कम्स आउट टू द मिडल, शैलेश एंड मंजू। और गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द फार एंड। जम्मी तो पहली गेंद इस वक्त लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। फर्स्ट बॉल कम्स एग्जैक्टली 40 द टारगेट। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। और वाइड के इस रन के साथ जम्मी गेंदबाजी में शुरुआत इस वक्त कर चुके हैं वाइड के साथ। और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है स्वस्तिक का शक्तिनगर के लिए। 1 रन पे लगे से नुकसान के। फिर से एक बार जम्मी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो बड़ा विकेट टॉप है जिस वक्त फीडर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। यहाँ पर शैलेश ने गेंद को स्वीप करना चाहा था, लेकिन जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम क्षण में गेंद टॉपेज पर टकराए और आखिरकार मिड विकेट फील्डर को हालांकि पीछे की ओर कुछ हद तक दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन इस बीच गेंद पर अपनी नजरें कड़ाए रखते हुए इस कैच को वो बेहतर तरीके से लपकने में सफल। पहला विकेट गिर चुका है। शैलेश द मैन डिपार्ट्स एंड स्वस्तिक शक्तिनगर लूज देयर फर्स्ट विकेट्स। इट्स 1 for 1। तो 1 रन पर पहला विकेट गिर चुका है। पहला विकेट 1 रन पर गिर चुका है और ओवर नंबर भी 1 है। सिर्फ एक गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है और नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। और जम्मी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नीतू पट्टे इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और जम्मी इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। Again, the top edge. This could be no. In fact, it fell in the wicket area. It fell in front of the fielder and showed extra cover. मौका जरूर था, शायद गेंदबाज के लिए मौका हो सकता था। फील्डर दौड़ कर रहा है एक्स्ट्रा कवर से, लेकिन मिड ऑफ से भी फील्डर दौड़ कर रहा है, लेकिन गेंद तक कोई भी फील्डर पहुंचने में असफल और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। 1 रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। अब 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर मंजुनाथ आक्रामक बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर। और गेंदबाज इस बीच जम्मी गेंदबाजी करते हुए इस वक्त मंजुनाथ के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर माय टीम नॉट सक्सीडेड। अपील जरूर, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर और गेंदबाज जम्मी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज
मंजुनाथ, जो कि इस वक्त सामना करते हुए जम्मी की गेंदों का। Reverse shot, delicately played and finds the gap as well. One bounce into the fence for a boundary. Fantastic struck came from the bat of मंजुनाथ। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेला था। Look at this in the replay. This one is got that one from the top of the bat, but he finds the gap as well and deep back with a third man for a boundary. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त जम्मी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार lofted that one and this time I think it might be no, in fact it cuts it off just inside the fence brilliantly by the fielder. The ball lost its speed at the last moment और अंतिम क्षण में गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए बेहतरीन तरीके से गेंद को जब तक फील्ड की जाए अपने ऊपर की ओर छलांग लगा के बाद द फील्डर ने गेंद को ढकेला। और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है कि गेंद को ठीक तरह से सीमा रेखा के अंदर ढकेला गया है या फिर गेंद को ढकेलते समय फील्डर का शरीर का कोई अंग सीमा रेखा को टकरा चुका था या नहीं, ये देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए पहले टिप्पे के बाद गेंद जैसे ही सीमा रेखा के ऊपर से गुजरे अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को इस वक्त रोकने में ठीक तरह से सफल हो चुके हैं या नहीं, यहाँ पर देखना पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए और देखते हैं आखिरकार क्या निर्धार वो देते हैं। Just you have to look at this in the replay by the third umpire. तीसरे अंपायर अभी भी जांच यहाँ पर जारी है तीसरे अंपायर द्वारा और देखते हैं आखिरकार क्या निर्धार वो देते हैं। दूसरा सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत वीवी ट्रॉफी जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है वीरा वेंकटेश क्रिकेटर्स शक्तिनगर मंगलोर ने। और मुकाबला इस वक्त जारी है श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। It's perfectly saved. Just a couple of runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 18 रनों पर। माफ कीजिए स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 8 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। और गेंदबाज जम्मी अपनी ओर के अंतिम गेंद लेकर तैयार। बोल्ड फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बॉलर जम्मी दिस टाइम एक्स्ट्रा क्विकर वन परफेक्ट ऑफ कटर एंड ही जस्ट गेट रिड ऑफ द बैट्समैन मंजुनाथ द मैन डिपार्ट्स एंड अ बिग ब्लो फॉर स्वस्तिक शक्तिनगर इन दिस सिचुएशन। और निश्चित रूप से बेहतरीन गेंदबाजी थी और इस बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं मंजुनाथ। बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू कहना पड़ेगा इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं ग्रीन लाइन बेंगरे के गेंदबाज जम्मी। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद मिक्स स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कर चुका है इस वक्त स्वस्तिक शक्तिनगर 8 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय स्वस्तिक शक्तिनगर। बोथ ओपनर्स आर नाउ ऑलरेडी बैक इनटू द पेविलियन and we are just waiting for the number 4 batsman and he now comes out to the middle. AFC ಕಟ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರೋಣ ಕೊಡೋಡೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ। और नए बल्लेबाज मसूद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए माफ कीजिए मसूद इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। मुबीर गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। नितिन पट्टे इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ। पहली गेंद मुबीर दाहिने हाथ ऊपर था विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नितिन पट्टे के लिए ओवर की पहली गेंद
रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट को जीत। नितिन की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कर कराती हुई गेंद पर रिवर्स शॉट खेलना चाहता, चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद लगभग जमीन के सहारे आए और आखिरकार ये गेंद उनके पैरों पर टकराई। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से होता है रिप्ले, प्लम्ब इन फ्रंट गिवन बाय द एम्पायर, वन मोर विकेट लॉस। नाउ आई मस्ट से Swastik Shaktinagar looking in trouble. 3 top 8 batsmen are already back into the pavilion for just adding 8 runs on the board. और इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नंबर 5 बल्लेबाज, शाम के 5:15 इस वक्त बच चुके हैं। मैदान पर धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है, धीरे धीरे घने बादल नीलाकाश को ढकते हुए वर्षा की संभावना हो सकती है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। प्लीज़ कंटिन्यू द मैच एज सून एज पॉसिबल। और इस बीच योगेश का आगमन होता हुआ और मुबीर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और ये गेंद इस बार चिप किया, this time is taken at mid wicket, half-mindedly played by the batsman and he just paid the penalty for that. और अंतिम क्षण में ऐसा कहना पड़ेगा मिड लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद को इस वक्त उन्होंने उछाला जरूर लेकिन हाफ माइंडेडली। यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को बड़ी मुश्किल के साथ उछाला था और एक बेहतर कैच मिड विकेट के फील्डर यहाँ पर लपकते हुए अपने दाईं ओर जाते हुए। चौथा विकेट गिर चुका, गोल्डन डक फॉर योगेश इज रिपार्ट्स। नाउ आई मस्ट से Swastik Shaktinagar looking deep in trouble. In fact it's 8 for 4 in the over number 2 in progress. So number 6 batsman in this critical circumstances is now comes out to the middle और इस वक्त तो सामना करेंगे मुबीर की गेंदों का। 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर निश्चित रूप से एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत इस वक्त Swastik शक्तिनगर के बल्लेबाजों को। और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज ग्रीन लाइन्स बेंगरे के। और इस बीच मुबीर अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, वन मोर विकेट फॉलन, hat-trick taken by Mubeer. This is an absolutely outstanding piece of bowling performance continuing here from Mubeer. 3 balls and 3 wickets. This time he bowled a much straighter line. The batsman wanted to loft that one, missing the line completely. Leg stump uprooted. Hat-trick completed by Mubeer. And now I must say Swastik Shaktinagar are the batsman really struggling out in the middle. Now the score says 8 for the loss of 5 wicket. Dramatical collapse happened in the innings of Swastik Shaktinagar. और 3 गेंदे 3 विकेटें और निश्चित रूप से इस वक्त Swastik Shaktinagar काफ़ी मुश्किलों का सामना करता हुआ। नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, न्यू बैट्समैन वेरिंगा नंबर 07 जर्सी इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल एज अ नंबर 7 बैट्समैन। और वो इस वक्त सामना करते हुए मुबीर की गेंदों का हैट्रिक परिपूर्ण न करने के बाद मुबीर देखते अपनी अगली गेंद पर किस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त इस्तेमाल करते हैं। अपनी अगली गेंद लेकर तैयार नंबर 7 बल्लेबाज नंबर 07 की जर्सी पहने हुए रितेश इस वक्त गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। और मुबीर इस वक्त अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रन 9 रन माफ कीजिए और 9 रन यहाँ पर बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। मुबीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद को छोड़ दिया। इस वक्त गेंद की लाइन को परखते हुए देखा कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है। अब धूप मैदान पर कुछ हद तक प्रकट हो चुकी है। सूरज जब बादलों की आड़ से निकल कर अपने प्रखर किरणों को तो नहीं लेकिन अपने किरणों को जरूर मैदान पर फैलाता हुआ। शाम का वक्त 5:20 बज चुके हैं और इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम होते हुए मुबीर इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। तो इस बीच गेंदबाज ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को कट किया जरूर लेकिन पॉइंट पर गेंद पहुंची और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मसूद इस वक्त और रितेश मौजूद और यह गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, वाइड का इशारा, 1 मोर वाइड। तो हैट्रिक पूर्ण करने के बाद 2 वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं मुबीर निश्चित रूप से अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तलाशते हुए।
और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 11 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ग्रीन लाइन स्पिंगरे के गेंदबाज, फलस्वरूप इस वक्त परेशानियां काफी हद तक बढ़ चुकी है स्वस्तिक शक्तिनगर के बल्लेबाजों के लिए। दोनों बल्लेबाज कुछ बातचीत इस वक्त करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए दूसरा सेमीफाइनल मैच इस वक्त खेला जाता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। और गेंदबाज इस वक्त तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद। ये गेंद इस वक्त बेहतर गेंद थी, इस वक्त लक्ष्य से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकलती हुई। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रनों का, रन इस वक्त नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 11 रनों पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मुबीर एक लंबा ओवर उनका प्रगति पर दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करते हुए इस वक्त रितेश। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉट स्क्वायर की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। फील्डर गेंद पर पहुंचे जरूर लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। अब कुल मिलाकर 12 रनों पर 2 overs completed, 12 on the board. The run rate is quite well, but the main question about wicket, they lost their 5 wickets for adding just 12 runs in the first 2 overs. दूसरा सेमीफाइनल मैच, सेकंड सेमीफाइनल मैच of this prestigious cricket tournament, VV Trophy 2026, which is proudly organized by Veera Venkatesh cricketers 23rd year anniversary in the sweet memory of late Sri Padmanabha Shanai. This tournament is now progressing along fantastically in this beautiful and large and big Nalia Prado school ground Shaktinagar. और मुकाबला इस वक्त जारी है इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। तो 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त इम्तियाज, और कभी कभी इम्तियाज गेंदबाजी पर उतरते हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। कई ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां पर इम्तियाज निर्णायक मोड़ पर गेंदबाजी पर उतरकर विकेट उन्होंने प्राप्त किया। ये गेंद पहली गेंद को खेल दिया इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए। मिड ऑफ पर गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा, 13 ऑन द बोर्ड, 23 balls left in overall calculation in their innings and now 27 runs to get. 23 balls, 27 runs. The equation stands for the batting side. स्वस्तिक शक्तिनगर और इस बीच इम्तियाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है, जबकि लॉन्ग ऑफ फील्डर इस वक्त मौजूद सीधे। और ये गेंद रिवर्स शॉट, टॉप एज गेंद इस वक्त फील्डर को बीट करके निकल चुकी है जरूर, लेकिन उतनी तेज विकेट के पीछे फील्डर गेंद को फील्ड करने में सफल आफ्टर फर्स्ट पॉइंट्स पहले टिप्पे के बाद। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 14 रन बच चुके हैं, 2 गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं। इम्तियाज अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार रहा। यह गेंद रितेश के लिए, स्ट्रोक इस वक्त दमदार मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए जरूरतमंद छक्का लग चुका है और ऐसा करना पड़ेगा इस बार। गेंद को पिक किया था राइट फ्रॉम द स्पॉट, थोड़े से स्टंप्स को शफल होते हुए गेंद को उछाल दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 20 रन और 20 रन चाहिए विजय के लिए और 21 गेंदें बाकी। 21 balls left, 20 runs required. Still the match is in balance और गेंदबाज इम्तियाज अगली गेंद लेकर तैयार। रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल क्रिकेट प्लेइंग बाय रितेश। वो जानते हैं छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पर उन्हें एक और आक्रामक स्ट्रोक का प्रयत्न इस वक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि 5 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं। अगली गेंद पर रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर तेजी के साथ 1 रन बटोर चुके हैं। यह गेंद एक बार फिर से गेंद को डिफेंसिवली खेलना चाह चुके हैं, डायरेक्ट निशाना इस वक्त लग चुका है और यहाँ पर जश्न मनाते हुए फील्डर ग्रीन लाइंस के और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और देखना है कि स्ट्राइकर एंड पर जब स्टंप्सों पर गेंद टकराई थी तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। He is gone. Ritesh departs. He fell just short out of his crease. So Ritesh has to go. Unfortunately, Ritesh बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दे रहे थे, दुर्भाग्यवशात उनका विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। जब डायरेक्ट हिट लगा था, स्टंप्सों पर विकेट बिखरे थे, बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, तब रितेश अपने क्रीज तक नहीं पहुंच पाए और आखिरकार 6वां विकेट गिर चुका है। रितेश डिपार्ट्स नाउ, 21 द स्कोर। दैट मीन्स 19 runs to get from 19 balls.
जस्ट दे गॉट 4 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए विनीत, the batsman in this critical circumstances, is now comes out to the middle as a number 8 batsman for स्वस्तिक शक्तिनगर और इस वक्त 19 गेंदों पर 19 रन बनाने हैं। विकेटों की सुरक्षितता पर एवं ध्यान देना होगा इस वक्त स्वस्तिक शक्तिनगर के बल्लेबाजों को, जबकि ग्रीन लाइन्स बंगाली के गेंदबाजों को चाहिए विकेट इस वक्त जल्द से जल्द इस मैच में अपना प्राबल्य स्थापित करने के लिए। और इम्तियाज इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज विनीत जो कि सामना करने के लिए तैयार। विनीत के लिए एक फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, एक फील्डर डीप मिड विकेट पर तैनात और इस बीच इम्तियाज इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर वाइड का इशारा, वाइड रन इस वक्त जुड़ चुका है। 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। नाउ 18 required from the 19 deliveries और अंतिम बार इस ओवर में लास्ट टाइम इन दिस ओवर इम्तियाज बाउल्स राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा। One more wide. He definitely searching for his right length and line in this situation. Imtiaz bowled 2 consecutive wides. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 23 रनों पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अगली गेंद इम्तियाज की, यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची, डीप कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा और विनीत रिटेन द स्ट्राइक एंड third over has been came to an end after the completion of 3 overs. The run rate is pretty good for Swastik Shaktinagar, but the main question stands about the wicket. They lost their 6 top-enders wickets. Now just they got 4 wickets in hand. सिर्फ 4 विकेट सुरक्षित, जबकि रन से चाहिए इस वक्त 16, गेंदें बाकी है 18. 16 runs to get from remaining 18 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए और मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। गेंदबाजी शुरू करते हुए मुबीर, जिन्होंने अपने पहले ओवर में हैट्रिक प्राप्त किया था और अपने चौथे विकेट के तलाश में इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और सामना करते हुए इस वक्त विनीत। मुबीर की गेंदों का 16 रन चाहिए 18 गेंदों पर और ओवर की पहली गेंद लेकर मुबीर दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप करना चांस ऑफ स्टंपिंग मिस बाय विकेट कीपर, वाइड का इशारा, ऑफ सबसे बाहर की ओर निकलती हुई गेंद थी, काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी इस वक्त और आखिरकार बल्लेबाज हालांकि एक कदम आगे जरूर निकल चुके थे, लेकिन जैसा कि देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है, अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए और विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाया, वरना कुछ हद तक स्टंपिंग का मौका वहां पर हो सकता था, लेकिन खतरा टल चुका है और मुबीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। 15 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 18 बॉल्स और अपनी ओर के अगली गेंद लेकर मुबीर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, बेहतर क्रिकेट, फैंटास्टिक क्रिकेट इस वक्त अपनाते हुए विनीत। वो जानते हैं इस वक्त प्लेसमेंट इस वक्त बेहद जरूरी है, स्ट्राइक रोटेशन करना इस वक्त बेहद जरूरी है क्योंकि 4 विकेट सिर्फ उनके पास सुरक्षित है और पहली गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में पुश करते हुए 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। अब मसूद, हालांकि नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, उनके सामने 3 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज मुबीर की गेंदों का और मुबीर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, भाग्यशाली रहे, गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराई, स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई लेग स्टंप से कुछ बाहर और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। द स्कोर स्टेज एट 26 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स now 16 balls left, 14 runs required. गेंदबाज मुबीर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, मसूद जो कि इस वक्त सामना करते हुए मुबीर की गेंदों का और अगली गेंद लेकर तैयार मुबीर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहे, एक बार फिर से पहुंची गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर, एक और डॉट गेंद, 1 more डॉट डिलीवरी और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर, 26 for 6, 14 to get from remaining 15 डिलीवरीज। मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद मसूद के लिए स्वीप करना चाहा, एक बार फिर से शॉट फाइन लेग पर, रन आउट का खतरा, निशाना चूक चुका है, डायरेक्ट हिट, इट वुड हैव बीन अ सर्टेन डिजास्टर फॉर द बैट्समैन एट द स्ट्राइकर एंड, लेकिन इस वक्त निशाना चूका और बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट के द्वारा 1 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है बस 27 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 14 balls left, 13 runs to get. Still the equal battle is now continuing here. मुबीर इस वक्त तैयार विनीत के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज विनीत जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार,
ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद इस वक्त उछल चुकी है, विकेट कीपर गेंद को फील्ड करने में असफल रहे, वाइड का इशारा, वन मोर वाइड। अब ऐसा कहना पड़ेगा निश्चित रूप से मुबीर जस्ट सर्चिंग फॉर हिज राइट लेंथ एंड लाइन इन दिस सिचुएशन, bowled a couple of wides in this over, and with that wide run the scoreboard moving up to 28 on the board. जहाँ तक मुबीर के वाइड का सवाल है तो मेरे हिसाब से कम 4 से 5 वाइड अब तक वो फेंक चुके हैं 1.4 ओवर में। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए विनीत के लिए ये गेंद इस बार स्वीप किया, इस वक्त विनीत ने गेंद पहुंची मिड विकेट पर, बेहतर फील्डिंग, बैकहैंड थ्रो इस वक्त इम्तियाज का, लेकिन एक रन रेल से बल्लेबाज को नहीं रोक पा रहे, एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर, 13 balls left, 11 runs required. The match is now inching towards to a nail biting finish और मसूद इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज मुबीर की गेंदों को अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर मुबीर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मसूद के लिए यह गेंद इस बार स्वीप करना चाहा टॉप एज, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आए, एक रन दौड़कर प्राप्त करने में सफल और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर, 30 on the board and the fourth over has been came straight. Now 12 balls left, 10 runs required, 10 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी और ऐसा कहना पड़ेगा स्वस्ति के शक्तिनगर को चाहिए इस वक्त 10 रन, जबकि ग्रीन लाइंस बेंगरे को चाहिए इस वक्त 4 विकेट और बराबर का संघर्ष जो कि इस वक्त जारी, शाम के 5:33 इस वक्त बच चुके, इट्स ऑलरेडी 5:33 इन द इवनिंग और मैच इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मुकाबला जारी है इस वक्त स्वस्तिक शक्तिनगर और ग्रीन लाइंस बेंगरे के बीच। फाइनल में AFC कटला का मुकाबला कौन सी टीम करेगी कुछ 10-15 मिनट में यहाँ पर पता लग जाएगा और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए इम्तियाज अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार, हालांकि पहले ओवर में 10 रन उन्होंने प्रदान किए थे ज़रूर, लेकिन खुद जिम्मेदारी अपने कंधों में लिए वे नया ओवर प्रारंभ करते हैं, हल्के से गेंद को मोड़ा इस वक्त, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा हो चुका, 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। स्लोली एंड स्टडीली दिस पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप हियर फॉर द 7th विकेट बिटवीन विनीत एंड मसूद और विनीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया गली पर और इम्तियाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी इम्तियाज की, गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला, इस वक्त ओवर थ्रो हो चुका है, लेकिन बैकअप होता हुआ लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा मिड ऑफ पर, 1 run added to the total. Scoreboard moving up to 32 for the loss of 6 विकेट। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स उनके डगआउट में अपने अपने टीमों के खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाते हुए तालियों के साथ सीटियों के साथ चिल्ला कर और इस बीच अगली गेंद ये गेंद दिस टाइम इज गॉन, दिस टाइम फैंटास्टिकली टर्न्ड बोल्ड बाय इम्तियाज, टर्निंग डिलीवरी इस वक्त फेंकी थी इम्तियाज ने, रक्षात्मक तरीके से आगे बढ़ते हुए गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश करते हुए एक रन लेना चाहता चूके और लेग कटर गेंद पर, लेग स्पिन गेंद पर इम्तियाज ये विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुका, 7th विकेट गॉन, मसूद द मैन डिसमिस्ड, स्टिल द मैच इज नाउ अलाइव, 9 balls left, 8 runs required, 3 wickets they got kept intact और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ नंबर 9 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल, मितेश का जहां तक सवाल है, पिछले हफ्ते समाप्त हुए KPL कदरी प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उन्होंने प्राप्त किया था रेफ्रिजरेटर के रूप में और यहाँ पर उन्हें इस वक्त रखा गया है अंतिम क्षण के लिए और रन इस वक्त चाहिए 8 गेंदें बाकी है 9, 8 runs to get from 9 deliveries। मितेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और बल्लेबाज मितेश को इस वक्त गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज इम्तियाज, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए निश्चित रूप से सिंगल्स रोकने का प्रयास करते हुए इस वक्त गेंदबाज इम्तियाज और अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त मितेश के लिए हल्के से बोल दिया, डिलीकेट, एब्सोल्युटली डिलीकेट, स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, एक रन का इजाफा, गेंद के टर्न को भापते हुए स्टंप्स को थोड़े से कवर करते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था हल्के से बल्लेबाज मितेश ने और एक रन के साथ अपना खाता खोल चुके 33, नाउ 7 runs to get from 8 deliveries and विनीत बैक ऑन स्ट्राइक, ये गेंद इस बार विनीत का स्ट्रोक, बेहतर स्ट्रोक, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर वहां पर मौजूद, जस्ट अ सिंगल ही कीप्स द स्ट्राइक एंड नाउ no 1 ball left in this over, that means now they have to score 6 of 7 balls, 7 गेंदें बाकी, 6 रन चाहिए
और मैच निश्चित रूप से एक बेहतरीन मोड़ की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा बिज्जू का इस वक्त विकेट कीपर पहुंचते हुए निशाना चूक इस वक्त चूक चुका है और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। गेंद को बैकअप किया जा रहा है इस वक्त, 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं इस वक्त, भाग्य बल्लेबाज का साथ देता हुआ और 2 बहुमूल्य रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं और इन 2 रनों के साथ इक्वेशन इस वक्त साफ हो चुका है। और फील्डर जो कि ग्रीन लाइन से बैंकर के इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए अंपायर से, जहाँ तक सवाल है यहाँ पर रन से कितने जोड़े जाएंगे ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रन के लिए दौड़े थे, निशाना वहाँ पर नहीं टकराया, ओवर थ्रो हुआ। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन चुराने का और 2 रन यहाँ पर उनके खाते में जोड़े जाएंगे या नहीं, अंपायर और खिलाड़ियों के बीच इस वक्त बातचीत यहाँ पर जारी है। तो इस वक्त जहाँ तक सवाल है तीसरे अंपायर के लिए मांग सौंपी गई है। इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर नाउ। देखते हैं तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। तो इस वक्त देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, गेंद को इस वक्त डायरेक्ट हिट फेंकना चाहता, निशाना चूका और गेंद शायद यहाँ पर बल्लेबाज को टकराने के बाद इस वक्त निकल चुकी थी लंगोन क्षेत्र पर। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से गेंद को पिकअप किया था इस वक्त विकेट कीपर द्वारा और थ्रो इस वक्त करते हुए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए थ्रो इस वक्त पहुंचा, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज और गेंद को छोड़ चुके हैं और आखिरकार गेंद इस वक्त जाती हुई लंगोन की दिशा में और गेंद इस वक्त बल्लेबाज के पैर पर टकराई थी और बिना देखे हुए अपने पैर पर उनके पैर पर गेंद टकराए थे इस वक्त और अनएक्सपेक्टेडली जिसे कहते हैं इस वक्त अनिरीक्षित होकर और इस वक्त बातचीत इस वक्त जारी है। So 2 runs added to the total. Unexpectedly अनिरीक्षित होकर गेंद बल्लेबाज के पैर से टकराई थी और इस वक्त ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुका है। अब 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर। 5 overs completed, 36 on the board, 7 wickets lost. Now 4 runs to get from the last over. That means in 60 overs and just they got 3 wickets kept intact. विनीत और मितेश इस वक्त कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए गेंदबाजी देखते हैं कौन सा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं। निश्चित रूप से ग्रीन लाइन्स बेंगले को कमबैक करने के लिए इस अंतिम ओवर में 3 विकेटें उखाड़ने ही होंगे जबकि स्वस्तिक शक्तिनगर के बल्लेबाजों को चाहिए इस ओवर में 3 विकेटों की मदद से सिर्फ 4 रन। देखते हैं इस अंतिम ओवर में क्या होता है उनकी पारी में। फील्डिंग में जमावट चलती हुई इस वक्त लगभग सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार विनीत इस वक्त सामना करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद कट किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद को रोकने में सफल हो चुके हैं। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और गेंद को जब तक दोबारा रोक कर फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द बैक फुट बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त कट किया था बल्लेबाज विनीत ने और 2 रन यहाँ पर बटोरने में सफल। अब सिर्फ 2 रन चाहिए विजय के लिए, गेंदें बाकी है 5 और गेंदबाज अरशद अपनी ओर की अब अगली गेंद लेकर तैयार रहा। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही ग्रीन लाइन्स को इस मैच में वापस ला सकती है, लेकिन मौका जरूर है उन्हें। और इस बीच डॉट गेंद अब 4 गेंदें बाकी, 2 रन चाहिए। अगर 1-2 गेंद लगातार डॉट फेंकते तो शायद यहाँ पर ग्रीन लाइन बेंगले इस मैच में वापस आ सकता है, लेकिन इस गेंद को इस वक्त डॉट करने में सफल गेंदबाज अरशद और इस बीच विनीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का और गेंदबाज अरशद इस वक्त तैयार। दाईं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज विनीत के लिए ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को बोला शॉट फाइन लेग पर, एक बार फिर से रन नहीं मिलेगा। अगेन अ डॉट बॉल। नाउ 3 balls लेफ्ट, 2 runs रिक्वायर्ड। और अब तीसरे अंपायर के लिए मांग यहां पर सौंपी गई है, ये वाइड है या नहीं ये परखने के लिए।
तो लेग स्टंप पर आए थे गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहता चूके और गेंद इस वक्त शॉर्ट लेग फील्डर के हाथ में पहुंचे। एक बार फिर से तीसरे एम्पायर के लिए इस वक्त काम मान पड़ा है कि ये चेक करने के लिए कि वाइड है या नहीं। तो जहां तक देखते हैं यहाँ पर तीसरे एम्पायर इसकी जांच करने के बाद क्या निर्धार आखिरकार देते हैं। तो इस वक्त तीसरा एम्पायर जो कि इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। इट्स अ फेयर डिलीवरी नाउ 3 balls left and 2 runs required. What a match. 3 गेंदें बाकी, 2 रन चाहिए विजय के लिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद का, तो अर्शद इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए और विनीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिल रहा है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत वीवी ट्रॉफी 2026, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है श्री वीर वेंकटेश क्रिकेट शक्तिनगर मंगलोर ने। 2 balls left, 2 runs to get, 3 balls left. Here we go. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, अर्शद की गेंद इस बार आगे निकले, हो चुके शॉट फाइन लेग पर, डायरेक्ट हिट नहीं, निशाना चूक चुका है, निशाना चूक चुका है। इस वक्त 1 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं बाई के रूप में। बेहतर गेंदबाजी की इस वक्त अर्शद ने, लेकिन गेंद को ठीक तरह से विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए और 1 रन के साथ रनों की बराबर यहां पर हो चुकी है। स्कोर्स आर नाउ लेवल, नाउ 2 balls left, 1 run required. What a match, what a fantastic match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides players. विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। सामना इस वक्त करने के लिए तैयार मितेश, जबकि अर्शद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में और इस बीच अर्शद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद फुल टॉस, गेंद को उछाला, मौका हो सकता है, जी नहीं, गेंद वहां पर खाली क्षेत्र पर टिप्पा खा चुकी है। और इसी के साथ Swastik Shaktinagar registered a thrilling victory in the second last ball of the match against Green Lions Bengal with that 3 wickets thrilling victory with 1 ball to spare. They are through to the grand finale of this competition. So the mega final match is now going to play between AFC Katla versus Swastik Shaktinagar. एक बेहतरीन क्रिकेट ग्रीन लाइन्स बेंगलोर के खिलाड़ियों ने दिखाया, लेकिन दुर्भाग्यवशात इस मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बेहतरीन खेल उन्होंने दिखाया और इस बीच नाउ द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट वीवी ट्रॉफी 2026 इज नाउ गोइंग टू प्ले बिटवीन AFC Katla versus Swastik Shaktinagar. And I request the players to please report to the stage immediately for the signature procedure. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम मेरे काबिल दोस्त अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ अंग्रेजी में हम आपके सामने उपस्थित होंगे श्रीमान JP जयप्रकाश के साथ, जब फाइनल मैच, मेगा फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले मैच इस श्रृंखला का शुरू होगा। तो अब वक्त है एक ब्रेक, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।
I request the captains of AFC as well as Shakthinagara, please come in front of the stage for the toss procedure. I request Swastik captain to please occupy the field as soon as possible. It's very hard to play this final if the light goes darker. So please cooperate with the organizers. And I also request the openers from the side of AFC Katla to please walk out to the middle as soon as possible. The final which will be played of 5 overs. The grand final of VV Trophy 2026 which is being organized in the sweet memory of late Padmanabh Shanai and also the 23rd anniversary of Veera Venkatesh. So far the tournament has run on quite nicely and we also witnessed a wonderful semi-final match which was second semi-final match which was played between Green Line Bangare as well as Swastik Shakthinagara. Swastik Shakthinagara at one stage lost 5 wickets for just 8 runs and they had 40 runs target of 40 runs in front of them and a magnificent partnership which was built between Masood as well as Ritesh, and at the end Vinith and Mitesh taking the ship home and they are in the finals. So the finals are coming your way and the two openers are making their walk out to the middle from the side of Katla.
Shakil as well as Altaf. Shakil as well as Altaf. Altaf Basavalagudi. The two openers from the side of Katla. AFC Katla. The bowler to start the proceedings is Vinit. Pulling the first delivery this time. He has smashed that one right from the middle of the bat. What a starter to the finals. The first delivery was bowled onto the pads of this man, Shakil. He is not going to miss out the opportunity there. Just look at that one. The ball was bowled towards the pads and he has picked up right from the middle of the bat. The ball sailing onto the roofs of the PU College building. And a massive hit to start the proceedings. Starting the innings with a glorious shot towards the square leg region for a six. First massive six of the first delivery. This time once again tries to repeat the shot, not making any contact with the ball. The ball hitting the pads on the way. A dot ball resulting. Vinit. For the first time he was being smashed for a six of the very first delivery in this entire tournament. This time tries to go for the reverse shot, makes contact with the ball, one bounce into the fence. What a start this is, the dream start for Shakil. He goes for the reverse shot there and makes proper contact with the ball, making full use of that power play restrictions. 10 runs already of the first three deliveries. Vinit this time balls, good delivery, beautifully become a good delivery, but the umpire signals it as a wide. The ball deviating a little further away from the wide lines there. One more run added to the total in the form of extra. This time the score is on 11. They're having a dream start here. There's a chance of a run out. A chance of a run out. Direct hit what was required. The bowler, the keeper unable to collect the ball. Rimming the bails off with the hands. And just a single onto the board. So with that single, the score moving up to 12. And Altaf Basavanagudi is on strike. The two destructive batsmen from the side of AFC Katla are out there in the middle. Swastika Shakthinagara into the finals after beating the big team Green Lions Bengare. The winning the toss as well in the grand final. Opting to field first and putting the opponents into bat. Katla, the two openers Shakil as well as Altaf Basavanagudi giving a wonderful start. Shakil is on 11 of the first 4 deliveries he has faced, one extra in the form of wide. The score is on 12. Still 2 more deliveries to go in the dot ball there against Altaf Basavanagudi. Final delivery coming up of the over number 1. The 5-over side match. The first 2 overs will be of the power play. And they are making full use of those power play restrictions. This time the ball hitting the pads once again. I think we have to wait for the signal. Yes, it is a leg by signal by the umpire. One more run added to the total in the form of extra to finish off the over. Over number 1 comes to an end after the completion of the first over. The score is on 13 without loss after being asked to bat first by the captain of Swastik Shakthinagara. So Altaf Basavanagudi yet to open his account, whereas on the other hand Shakil is batting on 11 with the 6 boundary as well as a single of 4 deliveries. And the bowler who has been brought into the attack to bowl the second over is Mitesh. Becoming right arm over the wicket to the right-handed batsman Altaf.
two fielders outside the 30-yard circle, one in the long on and one deep mid-wicket region. This is the second over in progress. That is also of a power play this time. Wrapped on the pass, loud appeal once again from the bowler. But umpire says the ball was going on to miss the leg stump. One more run in the from the bat, says the umpire. So score moves up to 14. The Altaf is off the mark. So that brings Shakil once again to strike. Once again on strike. Facing Mitesh this time. A change in the field for this left-hander. It's a deep square leg as well as a water delivery. Beautifully ball, lightning fast delivery there from Mitesh. Also dot ball. Already hit a 6 and a boundary in the first over. This man looking very dangerous. Hard hitter of the ball. This time a reverse shot. A wonderful connection with the bat. One bounce into the fence for 4. So Vinit having the first over, went for 13, whereas Mitesh now in just 3 deliveries has given away 5 runs. And the man to all these damages is Shakil, and he's been dismissed this time. Cleaned him up. Middle stump has been uprooted. The good comeback from Mitesh. Pulls that one right on the target, and the middle stump of Shakil has gone for a walk. That ball was balled straight onto the stumps of Shakil, trying to go over the top of the square leg, trying to clear the ropes, playing across the line of that delivery, completely misjudging the line, the ball hitting the timbers, and that's the downfall of Shakil. And the first wicket falls at the score of 18 on the board, with still 2 more deliveries left in the first over. And Vaishak has come out to the middle this time. A good defensive shot in front of the wicket from Vaishak. The first delivery he has faced, and right on the money once again is Mitesh. What can one say about this man, as my co-commentator Mr. Gopi already informed that. Oh, he's cleaned him up, bowled him. And Vaishak is still waiting. It's gone. The ball taking the timbers on the way, and Vaishak's innings comes to an end. He's out for a duck in the finals. So referring towards the third umpire. And that's the umpire decision coming from the third is that he's gone. The ball hitting the timbers of Vaishak, and he has to make his walk back to the pavilion. So the second wicket falls for AFC Katla after a very good start, which was given by Shakil. So back-to-back wickets here. The score is on 18 for the loss of 2 wickets now. We have come to the end of the first 2 overs and also of the power play. Shakil as well as Vaishak are the 2 batsmen back in the pavilion. So the new batsman who is making his walk out to the middle is the jersey number 55. Saifullah. The score is on 18, and the bowler to continue the proceedings is Ritesh. To bowl the third over and the first of his quarter. He'll be bowling to the right-handed batsman Altaf Basavanagudi. 2 overs been bowled, 18 on the board for the loss of 2 wickets. Ritesh this time onto his bowling mark, coming right arm over the wicket. Balls to Altaf, tries to go for the sweep shot. Chance for a now, direct it is what required. Slow throw towards the keeper
from that man, Vinith. Not wanting to share the stumps with full power. Not wanting an overthrow. Good thinking, but the keeper was ready for the throw. Not sharing at the stumps. A lucky escape for Altaf Basavanagudi. The score is on 18 from the last 4 deliveries. No runs been scored. 2 wickets been lost by AFC Katla. Altaf to face the second delivery. This time tries to go reverse sweep attempted, not making any contact with the ball. Once again the ball is being gathered by the keeper behind the stumps. Shailesh doing a wonderful job behind the stumps there. Ritesh. Stamp balls. This obviously played out. That was a chance of a catch. Jumping in the air was Yogesh. Couldn't hold on to that one. The ball slipping out of his hands and the 1 run resulting. So with that single, the score now moving up to 19 on the board with the 3 more deliveries left in the 3rd over. The 5-over-side match. This grand final of VV Trophy 2026. A good delivery. Once again a dot delivery there. This time Saifullah trying to guide the ball towards the 3rd man region, not able to make any contact with the ball. The ball has been gathered by the keeper behind the stumps. No damage done. The score still remains on 19. Comes across the balls this time. A good delivery and equivalently well played by Saifullah. They are wanting the 2nd run, but the fielder there quick to latch onto that delivery for a single. Just a single more to the total. Saifullah is off the mark. The score moves up to 20 on the board. Final delivery coming up of the 3rd over. Just 2 runs so far in this over. And Altaf this time tries to go cut that one. It's too far away from the reach of the batsman. It's a wide call by the umpire. 1 more run added to the total in the form of extra. The score moves up to 21. Final delivery. Ritesh. What a delivery there. What a delivery. Leg cut. Slow delivery to finish off the over. And with that, the over number 3 comes to an end after the completion of 3 overs. The score on the board is just 21 after a flying start in that first over. 13 runs came off that first over, and after that they have managed to score just 8 runs in the next 2 overs. Meanwhile, they have lost 2 valuable wickets, that is of Shakil as well as Vaishak. So the bowler to continue the proceedings is Mitesh, who will be bowling the 2nd over of his quota. Coming right arm over the wicket to the left-handed batsman Saifullah. Coming right arm over the wicket to bowl that 4th over from here for his side, and the 2nd of his quota. This time goes for the big one. There is a fielder, but he can't get there. It was struck firmly from the bat of Saifullah. And a boundary to start the proceedings of the 4th over. Score quickly moving up to 25. Final 11 legal deliveries remaining in the innings. And Mitesh, what will be his reply? He had picked up that wicket of Shakil after he was smashed for a boundary. Can he pick up a wicket of Saifullah here? It will be a handy one. This time comes and balls. This time a good delivery. Beautiful comeback after being smashed for a boundary of the very first delivery. A dot ball to follow that one. Still 4 more deliveries to go in this over. Overall of 10 deliveries remaining in the innings for AFC Katla. Balls onto the pads and he's gone. The ball hitting the pads of Saifullah. It would have gone on to hit the middle and the leg, says the umpire. So wicket number 3 falls, and it's Saifullah who has been dismissed of the bowling of Mitesh this time.
So all the 3 wickets are backed by Mitesh. The score on the board is 25 and they have lost 3 important wickets. The last man to be dismissed was Saifullah. The new man is the jersey number 33, Isham. Firmly struck straight down the ground over the head of the bowler just for a single. That single, the score moves up to 26. Isham is off the mark. Couple of more deliveries left in this over. And overall of 8 legal deliveries remaining in the innings for Katla. This time balls to Altaf, trying to paddle sweep that one, not making any contact with the ball. Once again the ball hitting the pads of Altaf. 8 deliveries for just 2 runs for Altaf. Can he make up with the 6 of the final delivery of this over? Goes for the big one this time, but not getting the distance. Just one bounce into the hands of the long off fielder. Single to finish off the over. Over number 4 comes to an end after the completion of 4 overs. The score on the board is 27 for the loss of 3 wickets. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27. 3 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದಂಥ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಮಿತೇಶ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಮಿತೇಶ್ picking all the 3 wickets that has fallen. So the final over coming up, and the bowler to bowl that final over will be Manish. To bowl the final over. So the game has been reduced by 1 over in the finals, just for 5. I think Isham. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೇಟ್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. So Manish to bowl the final over. 6 legal deliveries remaining in the innings for AFC Katla. They have managed to score 27 runs of the first 4 overs in spite of that wonderful start which was given by Shakil. 13 runs in the first over. The rest 3 overs they have managed to score just 14. Oh, wonderful shot straight down the ground, right from the middle of the bat. This is Altaf Basavanagudi for you. He was waiting for the loose delivery that comes his way, and he has smashed that one with immense power straight over the fielder's head in the long on region, striking the compound walls and getting us maximum. 6 more to the total, 33 on the board. Manish to bowl the second delivery. Once again the balls to Altaf. A wonderful shot. Just look at that timing behind that one. Perfectly bisecting the 2 fielders inside the 30-yard circle. 4 more to the total, 10 runs already of the first 2 deliveries. 37 on the board with still 4 more deliveries remaining. Manish is under pressure now. The bowler directly under pressure after the first 2 deliveries are smashed for 6 and boundary. The footwork behind that shot which he had hit for a boundary was excellent to watch from Altaf Basavanagudi. Though he had played plenty of dotted deliveries, he has made up for that one. This time once again swings the bat. The ball running towards the deep mid-wicket region. Manjunath comes and collects the ball. They are back for the couple. 2 more runs are quite easily taken. 12 runs already of the first 3 deliveries from Manish. The score moving towards the 40-run mark. 39 on the board. Comes and balls this time to a fumble there by the keeper. There was a chance of a stamping there for Shailesh. Couldn't collect the ball on the first. That allows the batsman an extra bit of time to come back safely to his crease. 2 more deliveries left.
Comes in balls this time. Firmly struck. There is a fielder. A little bit of fumble. Will they come back for the second? Wanting the second run, but Isham has to sacrifice his wicket for the sake of his team. Just a single more to the total. 40 on the board for the loss of 4 wickets now. Isham is run out. Just wanting Altaf on to be on strike. Jersey number 6, the new batsman has made his walk. It's Shreyas. He'll be on the non-strikers, and the final delivery coming up of the first innings of this grand finals. Balls a leg cut delivery, but equivalently well played there from Altaf. They're wanting back, coming back for the second run. Good running between the wickets by these two batters. They have managed to score 42 runs in their stipulated 5 overs. 2 more runs to finish off the over and also the innings. Altaf Basavanagudi remaining not out on 18. A wonderful knock from him and also a wonderful contribution in the top of the order. The opener batsman Shakil scoring 15 runs. These two batters have really anchored the innings for AFC Katla. Altaf scoring 18 of 15 deliveries, whereas Shakil scoring 15 of just 7 deliveries. So they have managed to score 42 runs in their stipulated 5 overs. That means 30 deliveries, 42. And when Swastik Shakthinagara, they come out to bat, the target for them is 43 of 30 deliveries. 43 required in 30 deliveries for Swastik Shakthinagara. They want their top order batsmen to really get a firing start. The two openers, I think again it will be Shailesh as well as Manju. Swastik Shakthinagara leading 43 to win this grand final of VV Trophy 2026 organized by Veera Venkatesh cricketers Shaktinagar in memory of late Padmanabh Shenoy and also the 23rd anniversary of their club. So to take you towards the thrilling finals, 43 what is required for Swastik Shakthinagara for this match to take you up towards the final delivery of this particular finals. It would be Mr. Gopi, my co-commentator, as well as my close friend on the microphone for the last time in this tournament. Over to you, Gopi. Thank you. धन्यवाद मेरे काबिल दोस्त जेपी जयप्रकाश अपने खूबसूरत अल्फाजों के लिए अंग्रेजी में बेहतरीन नाखुदे का हाल आपने सुनाया। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस अंतिम सत्र का, तो वीवी क्रिकेटर्स द मेगा फाइनल, द second and a final session of the final match is now going to begin. First ball this time just fell short of a fielder और लक्ष्य इस वक्त स्वस्तिक शक्तिनगर के लिए 43 रनों का जो कि एएफसी कटला ने इस वक्त तय किया है। 1 रन बन चुके हैं लेग बाय के रूप में और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इशाम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शैलेश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके। मंजुनाथ सामना करने के लिए तैयार। एग्जैक्टली 8.60 रन्स पर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और गेंदबाज इस वक्त इशाम गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हैं मंजुनाथ के लिए। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग में जमावट करने का, तो इशाम फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार मंजुनाथ के लिए। तीन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार मंजुनाथ का स्ट्रोक और गेंद काफी ऊंची इस वक्त उछल चुकी है। मौका और ड्रॉप दैट वन, ही कंसीडर्ड अ बाउंड्री आल्सो। गेंद ना सिर्फ फील्डर के हाथों से चूकी बल्कि आफ्टर फर्स्ट बाउंड सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए।
तो रन से जैसे भी चाहिए, रन से इस वक्त चाहिए यहाँ पर स्वस्तिक शक्तिनगर के बल्लेबाजों को। और यहाँ पर क्या छूट कर चौका प्रदान कर चुके हैं फील्डर जो डीप मिड विकेट पर मौजूद थे, और ईशाम चौका प्रदान कर चुके हैं, मंजुनाथ चौका प्राप्त कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। 5 विदाउट लॉस। अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त। गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं भी लगा। और जहाँ तक 43 रनों के स्पर्धात्मक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की जरूरत स्वस्तिक शक्तिनगर के सलामी बल्लेबाजों को। और गेंदबाज ईशाम इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात, ओवर द विकेट तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद थी इस वक्त। गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके विकेट कीपर अपने दूसरे या तीसरे पैद में गेंद को फील्ड कर लिया, गेंद को कलेक्ट कर लिया। विकेटों के पीछे रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। पहला ओवर उनका प्रगति पर रहा। शाम के 6:20 इस वक्त बचते, इट्स ऑलरेडी 6:20 इन द इवनिंग। और मेगा फाइनल मैच जारी है, और कुछ ही देर में पता चलेगा कि वीवी ट्रॉफी 2026 का चैंपियन यहाँ पर कौन बनेगा। एक्स्ट्रा क्विकर ऑफ स्टंप से बाहर, बेहतरीन गेंदबाजी। गेंद कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रन पर। काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज ईशाम, और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त या 3 डॉट गेंदें फेंक चुके हैं चौका प्रदान करने के बाद। और ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, अगेन अ फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम ईशाम एंड अ फाइन ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम हिम। जस्ट 5 रन्स कंसीडर्ड by Isham, and after first over Swastik Shakthinagara after being losing the toss. In fact, Shakthinagara chasing the victory target of 43 in 5 overs. They made a slower start, in fact 5 without loss after completion of first over. 38 to get now in remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 9.5 runs per over. Fantastic cricket tournament, VV Trophy 2026, which is proudly organized by Veera Venkatesh, cricketer Shaktinagar, Mangalore. 16 local teams participated in this tournament, 23rd year anniversary, and they are organizing this fantastic tournament in the sweet memory of late Sri Padmanabha Shanai, and the former cricketer. And now the second over of their innings is now coming up. गेंदबाज प्रदेश इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ पहली गेंद इस बार बेहतर गेंद, कोई करवान एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी। विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया, रन के लिए तोड़ पड़े बल्लेबाज, 1 रन प्राप्त करने में सफल। काफ़ी तेज रफ्तार के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। मंजुनाथ स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। शाम के 6:22 इस वक्त बच चुके, 6:22 इन द इवनिंग। लगभग मैदान पर रोशनी कम होती हुई अंधेरा सा छाता हुआ इस वक्त, और गेंदबाज प्रदेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। मंजुनाथ के लिए ये गेंद बॉल्ड एंड जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ, नॉट सक्सीडेड। एक्स्ट्रा क्विकर फ्रॉम द बॉलर एंड ही जस्ट गेट रिड ऑफ द बैट्समैन। फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम प्रदेश, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा जहाँ तक सवाल है इस वक्त एक्स्ट्रा क्विकर गेंद का, तो काफ़ी तेज़ी के साथ गेंद इस वक्त आई। यहाँ पर देखिए रिप्ले पर देखा जाए, look at this in the replay. The ball came very sharply after beating the batsman's bat. It stuck to his off stump. First wicket depart, the important wicket for the ball for the important wicket for AFC Katla, and a big blow for Swastik Shaktinagar. Manjunath departs, the info batsman. His departs, and a 6 for 1 for Swastik Shaktinagar. नीतू पट्टे, the new batsman, number 3 batsman, is now comes out to the middle, और वो इस वक्त सामना करेंगे प्रीतेश की गेंदों का। प्रीतेश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर विकेट। ये गेंद है, कोई कर गेंद थी इस वक्त, गेंद को विकेट कीपर ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाया। बेहतर गेंदबाजी करते हुए, काफ़ी तेज रफ्तार के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, हालांकि छोटे से खिलाड़ी, छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन काफ़ी प्रतिभाशाली प्रीतेश, और अपने उम्र से ज़्यादा अनुभव के साथ इस वक्त वो गेंदबाजी करते हुए दाहिना ऊपर द विकेट। अगली गेंद, ये गेंद एक बार फिर से फैंटास्टिक डिलीवर, अगेन मिसेस एंड दिस टाइम इज गॉन। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम बैक इन। So number 4 batsman is now comes out to the middle, और इस वक्त तो
सामना करने के लिए तैयार प्रीतेश की गेंद का निश्चित रूप से चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है यहाँ पर स्वस्तिक शक्तिनगर के बल्लेबाजों को यहाँ पर कम बैक करने के लिए। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा एएफसी कटला के गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था ना तो ओवर द विकेट गेंदबाज प्रीतेश। ये गेंद क्विकर गेंद, विकेट कीपर टाइमिंग लगाते हुए गेंद को नहीं रोक पाए। बैकअप होता हुआ शॉट थर्ड मैन पर वाइड का इशारा अंपायर का, ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर 8 रनों पर, माफ कीजिए 2 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 43 द टारगेट फॉर देम इन 5 overs दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट वीवी ट्रॉफी 2026 के अंतर्गत खेला जाता है। वह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगभग जमीन के सहारे आए थे, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को खेलना चाहे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। 1 रन मिलेगा जरूर। शॉट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, बल्ले का बाहरी किनारा टकराया था और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और प्रदेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट शैलेश जो कि सामना करते हुए बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद जाती हुई फाइन लेग के दिशा में गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन मात्र बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 2 अंकों पर। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 overs has been came straight. I must say the 2 overs belongs to the bowlers of AFC Katla. Their 2 bowlers Isham and Pritesh bowled brilliantly in the first 2 overs, and because of that the batsmen of Swastik Shaktinagar just struggling for runs. Now equation 33 to get from remaining 18 deliveries, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 11 runs per over. AFC कटला जो कि अपने 9 खिलाड़ियों के साथ इस वक्त खेलती हुई, लेकिन अपने संपूर्ण सामर्थ्य का अनावरण उनके ये 9 खिलाड़ी इस मैच में करते हुए, और इस वक्त स्वस्तिक शक्तिनगर के लिए लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस वक्त चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ। तीसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। श्रेयस द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स, पहली गेंद लेकर तैयार रहा। मसूद जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट श्रेयस गेंदबाजी करते हुए ऑफ कटर गेंद ड्राइव किया, इस वक्त नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। शॉट कवर फील्डर के हाथों से गेंद छूटी, जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को बैकअप किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, बट ही गॉट अ कपल। और गेंद निकली थी इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर की दाईं ओर से। स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 12 नाउ, 31 टू गेट फ्रॉम 17 डिलीवरीज। और गेंदबाज श्रेयस गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त तैयार। ये गेंद पैरों पर टकराई, गेंद अंतिम क्षण में इस वक्त रन आउट का खतरा हो सकता है। ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हिट इस वक्त चूका था और 2 रन लेग बाय के रूप में बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल, और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो फॉर स्वस्तिक शक्तिनगर। एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है, जनाब इरफान बेद्रा इनके सारथी में। और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा इसे ढलते हुए शाम में भी ये प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए गेंद को उछाल दिया इस वक्त। नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, बट ही गॉट अ सिंगल, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 15 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। श्रेयस एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, this time gone for a big one, extra quicker, just missing outside the off stump. Fantastic delivery from Shreyas, again सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। शैलेश अपनी सही राह को बल्लेबाजी में बैटिंग में इस वक्त तराशते हुए वो, और श्रेयस की गेंदों का सामना करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा। शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंचे, और डॉट गेंद, 1 more डॉट डिलीवरी। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर स्वस्तिक शक्तिनगर के। अब 13 गेंदें बाकी उनकी पारी में, और 13 गेंदों में चाहिए 28 रन, 28 रन मोर। नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री रिमेनिंग जस्ट 13 डिलीवरीज। और श्रेयस दिस टाइम आउटसाइड द लेग स्टंप, और गेंद को फील्ड कर लिया गया इस वक्त शॉट फाइन लेग फील्डर द्वारा। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर समाप्त हो चुका है श्रेयस का। 3 गॉन आफ्टर 3 ओवर्स। स्टिल आई मस्ट से द बैट्समैन ऑफ स्वस्तिक शक्तिनगर searching for the right track. 13 for the loss of 2 wickets after completion of 3 overs.
15 in fact, 15 for the loss of 2 wickets. 28 to get now in remaining 12 deliveries. That means in remaining 2 overs, and the asking run rate in straight away gone up to exactly 14 runs per over. Isham, the bowler, starts the fresh proceedings. और इस वक्त तो गेंदबाजी शुरू करते हुए शाम के 6:30 यहाँ पर बच चुके. इट्स ऑलरेडी 6:30 इन द इवनिंग और धीरे धीरे मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ. और शाम जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था, अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार था. इन्हें हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार बेहतर लेग कटर, क्विक पीस ऑफ वर्क, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए. डॉट गेंद इस वक्त उनके खाते में जुड़ता हुआ. अब तीसरे अंपायर के लिए मांग इस वक्त सौंपी गई है. तो 15 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर. और यहाँ पर देखिए जब विकेट उखाड़े गए थे तब शायद बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे या नहीं, ये देखना पड़ेगा. Out is the call from the third umpire, and the batsman has to go. A fantastic work made by wicketkeeper behind the stumps. और आखिरकार तीसरे अंपायर उन्हें आउट घोषित करते हुए शायद ऑन द लाइन उनका क्रीज पर पैर था और आखिरी के मौके पर इस वक्त ये विकेट गिर चुका है. मसूद अमान dismissed. 15 for the loss of 3 wicket. Now 11 balls left and 28 runs required. They got 7 wickets in hand. और नंबर 5 बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ. Number 5 batsman is now comes out to the middle. और इस वक्त गेंदबाज इशाम गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ कर चुके हैं. नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद 09 नंबर की जर्सी पहने हुए और इस वक्त गेंदबाजी का सामना करेंगे इशाम की गेंदों का. और इशाम गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. चेतन नए बल्लेबाज सामना करते हुए. Again, better, fantastic one, outstanding delivery, just bowling that one with a superb length and line in this situation. And the dot ball bowled again. Now 10 balls left, 28 runs required. अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके और छक्के यहाँ पर स्वस्तिक शक्तिनगर को इस मैच में वापस ला सकते हैं. लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए दौड़ पड़े. डायरेक्ट हिट चुका और 1 रन बाई के रूप में बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर. 16 for the loss of 3 wicket. 27 to get now in remaining 9 deliveries. Gone for a mighty heave, not succeeded, collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Again a dot ball, fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of AFC Katla. और इस बीच गेंदबाज इशाम इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त. AFC कटला जैसे कि मैं पहले भी फरमा चुका अपने 9 खिलाड़ियों के साथ वो इस मैच में खेलते. दे आर प्लेइंग विद 9 प्लेयर्स इन दिस मैच. लेकिन उनके बल्लेबाज और गेंदबाज और फील्डर इस वक्त सर्वांगीण प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए. और lofted down to mid wicket into the gap as well and brilliantly saved by the fielder. बेहतर सेव इस वक्त. और इस बीच डिजास्टर एट द स्ट्राइकर एंड. 2 रन प्राप्त करने के बाद तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे और इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में थ्रो पहुंचा. विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद निशाना दागा और ये विकेट गिर चुका है. सिर्फ एकमात्र रन जुड़ेगा. दूसरा रन लेना चाहा था. बेहतर स्टॉप वहां पर डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा. ओवर की समाप्ति. 4 overs completed. Completion of 4 overs. It's 17 for the loss of 4 wickets. Good over came to an end from Isham. Also a good spell came to an end from him. 2 runs came from this over and last over remaining. So in remaining last over, Swastik Shakthinagara have to score 26 runs for victory. 6 balls, 26 runs. The equation stands for them at present circumstances. इस बीच पहली गेंद रन नहीं मिलेंगे. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಲಕರು ರತ್ನಾಸ್ ವಾಯಿನ್ ಗೇಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವರಿಗೆ ವಿವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್
ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯಾನಂದ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. संतोष जप्पू गेंदबाजी करते हुए लेग स्पिन गेंद थी इस वक्त, गेंद को उछालने के प्रयास में चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. So the last ball remaining, 18 on the board, 25 to get from last ball. Absolutely impossible task. Loved it. And a good taken by the fielder at deep back on a square leg. Fantastically held by the fielder at deep back on a square leg. That's it. And AFC Katla becomes the champion of VV Trophy 2026, which is proudly organized by Veera Venkatesh cricketer Shakthinagara, Mangalore, defeating Shakthinagara by a big margin of 25 runs. 25 runs comprehensive victory for AFC Katla. And with that victory, they become the champion of VV Trophy 2026, which is proudly organized by Veera Venkatesh cricketers Shakthinagara, Mangalore, in the celebration of their 23rd year anniversary in the sweet memory of late Sri Padmanabha Shanai, the former cricketer. And a fantastic start, fantastic progress, and fantastic finish to this fantastic cricket tournament, VV Trophy 2026, which is proudly organized by Veera Venkatesh cricketer Shakthinagara, Mangalore. So all the cricketing actions are over. Now we are just taking a short break and we'll back right after the short break, not with cricketing actions but in the presentation ceremony. That means in prize distribution ceremony. So spectators, don't go away. Stay with us and we'll be back right after the short break in the presentation ceremony. Thank you. Dhanyawad. हल चीक हल चीक हल हल चीक हल चीक हल चीक हल
ಹಲೋ, ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲೋ, ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ 23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಣೈ ಇವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮಾಲಕರು ರತ್ನಾಸ್ ವಂಗೇಟ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭು ಇವರು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸುಚಿತ್ರಾ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅತಿಥಿ ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಪರಿಸರದವರೇ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂರು ಅತಿಥಿ ಸದಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಪ್ರಭು ಇವರು ಬಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಣೈ ಇವರು ಬಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ಚೇತನ್ ಶೆಣೈ ಇವರು ಬಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಬಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈ ದಿವಂಗತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಣೈ ಅವರ ತಮ್ಮ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಬಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಷತಾ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅಂಪೈರ್ನವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ತಂಡದ 5 ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಇವರು ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ರವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಉರ್ವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರು ಅಂಪೈರ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಸದಾನಂದ್ ಪ್ರಭು ಇವರು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಪೈರ್ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರೇ, ಆಸುಪಾಸಿನವರೇ, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಇವರು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಗೋಪಿ, ಇವರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಇವರು ಗೋಪಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರಿಗೆ ದಯಾನಂದ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಶಾಲೆಯ PT ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಇವರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಇವರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್, ಸ್ಕೋರರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಈ 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದಂಥ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾಲೀಕರು ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣಿ ಇವರು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಬೇಕಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. 23ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವಂಗತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಣೈ ಇವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮಾಲಕರು ರತ್ನಾಸ್ ವೈಂಗೇಟ್, ಇವರು 2 ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ 23ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸದಸ್ಯರೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಟ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪಾಠವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಈ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ
ಇವುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು 16 ಟೀಮ್ಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಗೆಲುವು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಆಟದ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪಾಠ ಕಳಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೋತವರು ನಿಮಗೆ ಇದು ಸೋಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಒಂದು ಹಂತಗಳು. ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಕನ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್, ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು. ಇವರ ಬಳಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನದ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಓವರ್ ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಹ 2 ಟೀಮ್ನ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೈನಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಟೀಮ್ನ ಆಟಗಾರರು AFC ಕಟ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ. ಇದೀಗ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ. ವಿವಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಣೈ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದವು. ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶಕೀಲ್, AFC ಕಟ್ಲ ತಂಡದ ಶಕೀಲ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಕೀಲ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಶಕೀಲ್, AFC ಕಟ್ಲ ತಂಡದ ಶಕೀಲ್. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಕೀಲ್ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶಕೀಲ್ 7 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 15 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶಕೀಲ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಎನಿಗೆಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಫ್ AFC ಕಟ್ಲ. ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು AFC ಕಟ್ಲ ತಂಡದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕೀಲ್ ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತೇಶ್, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದ ಮಿತೇಶ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು
ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿತೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೋದ ವಾರ KPLನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಿತೇಶ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂಥ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 48 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂಥ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಇವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂಥ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು VV ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇದರ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ತಂಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ. ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಇದರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಆಟವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಡಲ್ ನೀಡುವ ಮುಖೇನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು VV ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ತಂಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ತಂಡ AFC ಕಟ್ಲಾ. ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 50,025 ಕ್ಯಾಶ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ AFC ಕಟ್ಲಾ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಇವರದಾಗಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 43 ಓಟಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಬಂದು ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯಕ್ ತಾವು ಬನ್ನಿ. ಸುಹಾನ್ ಅಂಚುನ್ ತಾವು ಬನ್ನಿ. ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೈವಿಕ್ ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ
ಮೊಮೆಂಟು ಕೊಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಪ್ರಭು, ಚೇತನ್ ಶನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಭು. ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶನಿ, ಆಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಒಮ್ಮೆ, ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ದೈವಿಕ್, ವಿವಿಸಿಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಶವಂತ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸೋಹನ್ ಆಕಾಶ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.